तो ऐसे बोल रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। सबूत है आपके पास? अनिकेत कहाँ रह गया? अनिकेत को हम लॉबी तक नहीं लाए, वो गेम के अंदर नहीं लाए। अनिकेत का रास्ते में पत्ता कटवा दिया हमने। ये क्या हुआ? आ गया ना? वैसे ही जैसे अबे नहीं आया अबे सच्ची में। तो फाइंडिंग प्लेयर आया तभी तो मैं बोला। कहाँ गया वो? हेलो अनिकेत, व्हाट हैज हैपेंड? ओए सेट मार दो। हाँ भाई अल्केमिस्ट चल भाई। अल्केमिस्ट को तो पकड़ के ले गया मैं मौत को। अबे हेलो हेलो भाई, ये गलत बंदे आ गए भाई, ये ना हो पाएगा। अपनी पिंग भी ज्यादा उनकी कम है, उनके भाई मैंने server बॉल कम में है। चाहिए, रुकी क्या? नहीं रुकी, दोबारा मारा। कौन सा सर्वर लगाया सागर तुमने साले? ये सागर पता नहीं अभी भी से लोग ले गए। सच में भाई मुंबई सर्वर है अभी। हाँ मुंबई सर्वर है। हाँ, मुंबई सर्वर है। भाई जापान लिख के आ रहा है मेरे को तो। तो वही तो मैं कह रहा हूँ साला। मैंने तो बोला ही नहीं मुंबई सर्वर है, तुम ही बोल रहे हो। अरे डेव्स बोल रहा है ना, मैंने सार्कास्टिकली बोला हाँ मुंबई सर्वर है। ओ अच्छा ब्रो, देख अमोक ने अरे बोला था साला ये ठोके जा मिडिल रहे हैं ईस्ट और एशिया ईस्ट करने को, मैंने लगा दिया तो अभी हो रहा है। भाई ठीक एशिया है ईस्ट भाई, मत क्या लगाओ कर रहा भाई, है ये? एशिया ईस्ट मत लगाओ, मैं तो मिडल ईस्ट ओनली। सेंटर सेंटर। अबे चीफ यार सॉरी। अबे दोबारा सेंटर आएगी। ओ यार ये कुत्ता ले गया। हाँ भाई फुल मिस बाज। अरे अबे ओ भाई निकाल दिया भाई ने। गेम में चला था वो। गेम हट। था तो। अरे मिस कैसे आकर मैं यहाँ पे रेडी बैठा हुआ था, एक्सप्लोजन तक दे दी मैंने, अभी आएगी सेंटर में मारता हूँ। भाई बूस्ट खत्म हो गया उसी टाइम पे। भाई इनका बंदा सारे बूस्ट लेके गया मेरे। नहीं ब्रो, नो प्लीज नो। अपना बॉट है, बंदा आया तो बॉट ही है। बहुत ही है ब्रो, आगे वो कर दिया मैंने। अरे बूस्ट ही आ जा भाई एक। आलू स्टिक्स तेरे को निपटाना पड़ेगा क्या? आज टीम ऑलवेज विद द ये क्या अटैकिंग हुआ? ये स्पिरिट। कैसे गई बॉल? भाई नहीं हो रही भाई, वो बॉल छोड़ गई दीवार यार। रुक रुक रुक, जा ही रही है वैसे तो। सेंटर सेंटर सेंटर। अबे पीछे हो गई। अरे यार बॉट मार भाई दे। उनके अपने Nice बंदे ने ball, वो बॉट ने nice मारा है। ball। ठीक है भाई, नाइस बॉट, भाई, इजी ये बॉट होते हैं भाई, bot। इजी बॉट, बॉट ये इज होते गॉड। हैं साला सीएस के बॉट, कमांड ही नहीं सुनते। हेलो स्ट्रिंग लाइव हुई क्या? अरे जापान है, मैं मेरी टाइम बोल हेलो रहा था। स्ट्रिंग तो नहीं है क्या? क्वेश्चन तो ये अरे है। हाँ सागर समझा। क्या? मेरी टाइम बोला था हम ने उसके नाम पे बिल मत फाड़, जापान वाला। से रॉकेट भाई बॉल उड़ गई, भाई बॉल उड़ गई, भाई बॉल उड़ गई। वो बॉच, अरे कोई आ गया गेम में। भाई साइनेट आ गया, साइनेट। गैंग गैंग। ओ भाई अच्छा खेल रहा है भाई ये बंदा। अभी तो कुछ चालू नहीं हुआ गेम। भाई उसने अभी 2-3 जंप मारे, उससे तो अच्छा दिख रहा था। वही काफी है। बंदा हवा में हाय बॉल मार कुत्ते, सकता है। व्हाई यू हिटिंग मी? नहीं दिखता भाई, हमें हमें बॉल ही दिखती अबे है भाई बस। ये ले गया वो क्या मार। नहीं यार, निकी वही निकी तो ले गए complaint भाई। है। अबे भाई साहब वो देख रहा है तू। ड्रैगन निकल के आ रहे हैं। निकी कंडक्टर है भाई ये, बस चलाती है। बंदा भाग गया वो जो तुम बहुत जम काटता है सबके। हेलो भाई मैं किसी से टकराया अभी। अरे अबे ले गई क्या वो? किया भाई इसने, देख मैं तो क्या शॉट दिया है भाई इसके ड्रैगन कितनी दूर तक निकल रहे हैं? भाई उसने इतनी तेज मारा है ना शॉट। भाई 90 की स्पीड से गया है भाई। ये हाथी अनलकी है मेरे को लग रहा है। यार मेरा डॉज चाहिए। वो डोज पावर ब्रो। भाई बॉल कहाँ जा रही है भाई? बॉल कहाँ जा रही है? डोज कॉइन ब्रो। डॉज कॉइन बढ़ रहा है बहुत तगड़ा, 600% लास्ट में। टीम बैलेंस एक्सेप्ट करते हैं।
अरे यार क्या चल रहा है, एक तो वो बंदा मेरे को एक बार धर के बैठा हुआ था उनका टीम का, उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ से ठुक रहा था मैं। मैंने आगे तो बना तेरे को। ए गो वही क्लियर है तो। ब्रो, मैंने बंदा क्लियर कर रखा है। तुम भैंस अरे में कूद के ले गया भाई। वॉक किया, भाई मेरे को बूस्ट खत्म पता हो भी गया, नहीं मैं क्या चला। करूँ बता। ठीक है भाई, कुछ तो ऐसे नॉर्मल दिखा थोड़ा। भाई वो देख क्या मारा उसने, सेव किया, वो देखा तुमने? आगे टाइम करने वाला है वो कॉइन सुनो। अच्छा वो क्या, आप कौन सा कॉइन? डॉज कॉइन। समझ गया, वो क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं करने वाले, रेगुलेट। बैन है ये, इंडिया में रेगुलेशन नहीं होता। क्या बोल हो बात गया। है, साला कौन, तुम किसने बहुत धक्का मारा था मेरे को? रेगुलेशन। रेगुलेट तो वो भी होने वाली है, ई कॉमर्स वाली साइट्स। गवर्नमेंट चूक गया ठीक है साला। भाई चीफ। क्या मैंने क्या किया? घुस गया आके मेरे में साला। अच्छा मेरे को लगा क्या मैंने ही तो कर बॉल रहा है टच अभी, भी नहीं अनिकेत की थी। भैया नहीं है, अनिकेत भैया। वही ये गेम ना अनिकेत के लेवल का है, बट हम नहीं आए अनिकेत के लेवल के। हाँ वही वही कह रहा हूँ। गेम ने हेलो सोचा ये बूस्ट। संभाल लेगा, संभालने वाला ही नहीं है गेम। उठा लिया गया रास्ते में से ही। तो देख उनका अलग ही चल रहा है उधर। तो प्लेयर भी नहीं आ रहा, बॉट ही है। ठीक है भाई, तुम ये कर लो, तुम दोनों यही कर लो। अच्छा नहीं, प्लेयर आ चुका है। ओके रोक दे भाई प्लीज। हेलो ये क्या। अबे यार। भाई ठीक है भाई। हवा में उड़ के भाई ने शॉर्ट सेट कर लिया भाई। या अनिकेत ही रोक पाता, हम में से तो कोई रोक नहीं पाता, देखो ऑनेस्टली सेइंग। तो हम सोच भी नहीं सकते रोकने की, तो दूर की बात। दिल से दुआ है जापानीज दोस्तों के लिए। वैसे वो है जापानीज ड्रैगन चाइनीज का तो। भाई ठीक है भाई। भाई अरे, क्यों हो गए मैंने तुमने? अरे इतनी दुकान से कि तो गया है। मैंने इतनी शिद्दत से गोल गया। ठीक है भाई, जाता रहे। मेरे नाम पे गोल गया है, ये चीटिंग हुई है भाई, मैं बॉल हटाने गया था। तू देख इस कुत्ते ने क्या किया। ठीक है भाई, सागर ने अंदर दे दिया। मेरे को ट्रेडर बनाना था इस बंदे को, बस कहता है ये साला रोक लेगा। हट। Damn। गोल हो गया वॉइस देखो। नहीं, मैंने हटा दिया, दोबारा हटा दिया। वो नहीं गया ना, मैं गया था उनके गोल में। अच्छा ब्रो, मेरे को भी उसने पहले गोल तक फेंक दिया ब्रो। ये जाका अबे अबे How यार, about ठीक है no? भाई। फिर आ गया क्या? मिसवाक टूथपेस्ट। हेलो भाई, डिप्स की गाड़ी ब्रो आके मेरी स्क्रीन पे खड़ी हुई है। ये चलो लॉबी। अरे इसमें तो एक एलजीबीटीक्यू माइनस का झंडा लगा रखा है। ही सपोर्ट्स। माइनस। ठीक है भाई डिप्स। अरे अनिकेत लिख दे भाई तू चैट में कौन से वो नहीं लगाने, वो कौन मिडल से ईस्ट लगा लगाने दे हैं। तू, और कुछ मत लगा, मैं कह क्या रहा हूँ लगाओ? मिडल ईस्ट लगा, बस मिडल कुछ ईस्ट। मत लगा। रीजन मिडल ईस्ट। बंद करते हैं गेम, खत्म कर इसे। ये भी सही है। ठीक है भाई डिप्स, ओके भाई, मैं मुझको बुलाता है। नो नो नो। क्या हो गया भाई, तू मुझको नहीं आने देना चाहता? ऐसा नहीं है, 5v5 मोड ले आओ, बुला लो हम आपको। ऐसे अनिकेत की साउंड 2020 में सुनाई दी थी किसी को? दी थी ब्रो स्टार्टिंग में। आई थिंक जनवरी में ही या फरवरी में ही सुनाई दी थी। एशिया सही है। मेनलैंड। मैंने अभी मैरीटाइम और वो रखा है, ये मिडल ईस्ट। मेरे को अमुक ने बोला था, अब मेरे को नहीं पता भाई, बहुत हो गया अब। यार मिडल ईस्ट ही सही रहता है।
सॉरी अमोग। मुंबई मुंबई है क्या? नहीं नहीं सॉरी नहीं हाँ आप। मुंबई। क्या भाई, मुंबई भाई में क्या ओपी बोलता है शानदार, भाई। क्या ये तुम शानदार वोटिंग है भाई, ये क्या तुम दोनों शानदार के वोटिंग। क्या हो गए हैं? संबंध खराब है क्या मुंबई के साथ भाई में? अनिकेत के कैसे मुंबई से संबंध खराब है? कोई मेरे को ये बताओ, मुंबई में रह के। हेलो ये अनिकेत, तो क्या कह चल रहा रहा हूँ है? मैं। मुंबई में रह के मुंबई से संबंध कैसे खराब कर लिया तुमने? बताओ मेरे को। क्या बता। भाई ये एम वाला बंदा अच्छा नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये गेम वॉश्ड आउट क्यों लग रही है मेरे को? नाइस। मैं अबे क्या? अबे ना अबे अबे ये सॉलिड डिव्स। मेरे को ये भाई क्या चोरी बताओ। किया है, तू अरे देख क्या हट चोरी हट किया साले है। हट। तू देख तू रहता हूँ साला अपना नंबर छिड़ा। लेट्स गो, लेट्स गो। सागर का असिस्ट चुराया, पहले सागर ने और इसने पास गोल किया, चुरा दिया। ठुका से मेरे से ठुका साल। लास्ट में इसके बकेट पे जाके टकरा गया साला। ये मारते मारते मारते। अरे यार आ ही रहा था मारने मैं में। इतनी अच्छी बॉल सेट करके देता हूँ तुम लोगों को, व्हाई यू नॉट डूइंग एनीथिंग? अरे अगर उसी वो ने पीछे धक्का दौड़ गया मार भाई, दिया, बोल बॉल ही फेंक बोल तक दी। दौड़ गया। सही क्या? नहीं नहीं ना, नो गई। गो अनिकेत, गो अनिकेत, गो 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 अनिकेत। अनिकेत तेरे को पास टकले करता पे है चल के मैं। अनिकेत गया। पास किया मैंने तेरे को। ले जा भाई, कोई तो ले जाओ। ओ किसी ने ट्राई किया, किसी ने हाँ बेशक ने अनिकेत, ट्राई किया। पता नहीं चल अनिकेत ही होगा, आई थिंक वही उड़ता है लौंडा एक। वही सोच सकता है, कर सकता है। नाइस, ले जा अनिकेत, गोल पे नाम डाल दे ले भाई। जा। रुक रुक हल्का। अनिकेत गो, अबे गो नाइस। अगेन, गो अगेन, गो अगेन। अरे यार बूस्ट जब होना चाहिए तो होता नहीं है। तो कौन बूस्ट लेके आएगा? फुल बूस्ट बाजी। अबे ठीक है भाई। नाइस सागर। भैंस क्या, किसने धक्का दे दिया बॉल पे मेरे को? क्या आंखों में रे ट्रेसिंग आ रही है वो? हेलो वो क्या है? वो चमक रहा है वहाँ मिरर थ्रू। भाई कैसे मिस कर रहे हैं हम सारे? भाई, भाई कोगर मार रहा है, कोगर। देख रहा हूँ ना। मेरा लग रहा है ना तो वैसे किसी का लग। पीछे कर दी मैंने। नाइस। देख अगर मैंने तेरा वो क्या क्या बोल अभी फक सब मिस कर। भाई लगा दोबारा किसी का मैंने चला गया। मिस नहीं करा था उस बंदे सागर ने की तो। कनेक्ट, सागर की कनेक्ट हो गए हैं, बाकी तो पूरी टीम पे नहीं करो। मिड मैंने बंदा रोक दिया भाई, मैंने भाई बंदा को तुम लॉक कर वो दिया। छोड़ो, तुम वो देखो अनिकेत के साथ बड़ा गंदा स्कैम हुआ है, बता रहा हूँ। वो देख तू। नॉइस भाई, मैंने बंदा ब्लॉक कर दिया। आई एम हैप्पी विद दैट। मैंने इतनी अच्छी बॉल बनाई थी, ऐसे चला गया। ओ जाएगा क्या? गोल। बे कर डिव्स कर। भाई उस अरे बंदे ने रोक दिया यार यार। भाई मैं दोनों बार गलत जगह पे गलत टाइम पे था। चलो मेरे को मारना बंद किया जाए प्लीज। बूस्ट नहीं है मेरे पास। भाई बॉल अबे ऊपर टिप्पा मार गई यार भाई। सेंटर आएगी बॉल वापस मारना किसी। अरे ले गया वो। वो सारी इनके वापस एक है किसी ने। फिर से मिड आएगी। अरे कुत्ते का बच्चा भाई, डिव्स के खिलाफ। हेलो डिव्स, क्या किया था तूने? अरे तेरे यार को ऊपर बंदे गई। कैसे ढूंढ रहे हैं? अबे कुछ भी। पीछे मार दी मैंने आगे। भाई डिव्स तू गोल कैसे नहीं चुरा पाया कुत्ते? भाई उसने मार दिया मेरे से पहले आके, मैं क्या कर रहा था, मेरा जस्ट उसके बाद वो आया। ना ओ अच्छा, ये तो अपोजिट साइड से हो रहा है। दोबारा सेंटर चाहिए यार, अपने प्लेयर आ रहे हैं ऐसा आसपास से। नॉइस भाई, मैंने 5-6 बारी बॉल सेंटर कर दी, मजा आ गया भाई। देखो बम कर वो कर रहा हूँ। देख रहे टिप्स, जब मैं अच्छे सेंटर देता हूँ ना तब शुभम देखता नहीं है।
उसके बाद जैसे ही मैं घटिया खेलने लगूँ ना, शुभम भी लाइक अब मैं स्ट्रीम देख रहा है ब्रो। गुड। नहीं है, रोक दिया कुत्ते ने, पता था मेरे को। मिड 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 मिड। अबे ये क्या सर्वर वो भाई आया? लैग हो रहा है अबे भाई, गंदा लैग वही हो रहा है भाई, वही सबका तो लैग हो रहा है। मेरा 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 गोल था वो, मेरा गोल था। मेरी स्क्रीन में तो मैंने कर भी दिया था। भाई मैंने रोकी एक बारी, दोबारा रुकी क्या? नाइस 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 नाइस। नो ही अनिकेत। क्या चल रहा है ये गेम में? हम तो नीचे में खड़े हुए थे, देख रहे थे सब एक दूसरे को। वा- भाई क्या वापस यार स्टीम पे आ रही है क्या ये गेम? हगने कैसे लगी? वापस से- सीएसके को सर्वर इन्वेंटरी सर्वर जैसे साल बनते हैं इसके। हेलो। नॉइस नाइस। दिस नॉइस। ये धीरे से मारा और फिर उसके बाद दोबारा टच का वो नहीं किया। सागर तू डिफेंड करने आ रहा था क्या कोई? नो नो। ऊपर से नीचे। विन। अरे मैं तेरे पीछे से आया, फिर मैंने उसके बाद वो जंप मार दी क्योंकि तूने टच कर दी थी, मैं हिलाना नहीं चाहता सही था। हुई क्या? ठीक है भाई, ट्रिकी भाई उड़ते ये हुए अपना आया कोई भाई बंदा अपना क्या ट्रक है? लेके। हेलो हेलो चीफ, तूने क्या? छूती मेरे से कर लिया यार, क्या स्कैमर आदमी है। क्या स्कैनर? अच्छा। ओ अबे तो तू मेरे को टच नहीं कर तू पाया टच नहीं कर सबसे पाया भाई, बड़ी गोल हो बात गया तो उससे एक तो पहले। वही तो मैं बोलूँ, मेरे पता नहीं क्या बोल रहा है। मेरे फर्स्ट वही टचेस तो बहुत मैं ज्यादा वही हैं तो गेम में। बोलूं। अबे अबे लो मैं भाई टेलीपोर्ट लो हूँ। बॉल नहीं छुई किसी ने। इसी देखो को, ओ भाई अबे ये भी यार। गोल, ये कैसे रुक जाता है भाई मेरा? मैंने क्या बिगाड़ा है इस गेम का? कोई मेरे को बता दो भाई। अगर यार की मैच करवा रहा है और कुछ नहीं वहाँ पे तो सब हो रहा है। कस्टम में भी लगता है हम खेल रहे थे तब भी हग रहे थे देख इसके गोल सर्वर में। हुआ, देख गोल हुआ। अबे ये तो स्पून फीडेड गोल था भाई, इसमें नहीं इसके लिए नहीं जाती। ये देखियो ऐसे इतने अच्छे से तो प्यार से बना के दिया जा रहा है। और जो मैंने बना के दिए तेरे को साले कुत्ते, हेलो कब कहाँ? असिस्ट लिखा आ रहा है मेरे नाम के साथ में, ठीक है चुपचाप बैठे रहे। सब छोड़ो, हम बेचारों की पिंक के हेलो मजे ले रहे हैं। सच बताऊं तो स्कोर देखो तुम। भाई हमारी भी ज्यादा ही आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले। सही बोलते हैं ब्रो, अपने अपने देश में रहो ना तब जीतते जाते हैं, समझ रहे हो तुम? अपना सर्वर है, कुछ भी इंक्ली कर सकते हैं। भाई अब इसी सर्वर में रहेंगे, बात खत्म भाई। ले आगे दबाते रहो। वो अच्छा ही वो फोर्टनाइट वाले सर्वर्स हैं, ओके। क्या ऐसा भी होता है? अरे पिक के है ना, हाँ तो क्या फोर्टनाइट भी थोड़ी ना चलेगी उससे पे? वही दोनों चलते हैं इस पर। मेरा और होगा तो सागर का सेम अमेजोन ही। स्कोर। क्लाउड इजी। एडब्ल्यूएस है ना ये। वही कह रहा हूँ, होगा तो अमेजोन ही। हम्म। अम्मा जान। एशिया मेनलैंड में समटाइम्स आई थिंक मेनलैंड में शायद वो आते हैं, बड़े बड़े सिंगापुर शिप वगैरह। आती होंगे। ओह भाई सब कहाँ गया boost ये? कर रहे ट्रिकी हैं। बावर ने मेरे को मारा था, मैं इसको मार के आऊंगा। ओ यार अनिकेत तू आजा सामने भागते हुए। हमारा मैं था बट ठीक है। ओ अच्छा तू मरा है। अनिकेत दिख रहा था मेरे को, तो मैंने अनिकेत को अवॉइड करने की सोची थी। अब मैंने मारा तो मेरे को। हाय हाय, रेलिंग पे ड्रिफ्ट मारने वाला की साउंड सेटिस्फैक्शन लग रही है मुझे। हेलो भाई, कुत्ते को कुछ एएसएमआर की आदतें पड़ गई हैं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ए वॉइस देखो, मैं हवा में उड़ रहा है जैसे। देखो तेरे को शिफ्ट दबाने की ओए जरूरत नहीं है यार। उसके लिए वैसे। भाई ठीक है भाई। मतलब वैसे आई सी। ठीक है भाई सागर, कभी मार पाओगे आप? कभी नहीं मार पाऊंगा ब्रो, बोल तू क्या कर लेगा? बस जितनी बार नहीं मार पाओगे उतनी बार पूछता रहूंगा उससे कब मार पाओगे। मार ले सागर, मार ले। नहीं मार रहा ब्रो। हवा में तो चलो हम एक पल के लिए उड़ भी लें, टर्न कैसे लेते हैं?
उफ, और वो भी सकड़ इतना है। परफेक्टली। लीव करा दूं इस बंदे को गेम? लीव कर दो। अच्छा ओके, लेट्स गो डॉगी। गेम तभी जल्दी आएगा। इस बंदे का जाना जरूरी है। हेलो, मेरे को क्यों मारा जा रहा है? देख नहीं रहा हूँ, मेरे को कहाँ है? ये रहा यहाँ पे सामने है। घूमे जा रहा है सदा, पीछे ही जा रहा है हर बार मेरे। अरे यार, मिस हो गया। अरे यार साला बॉल से टकरा गया बट उससे नहीं टकरा। भाई भाग रहे हो। अबे साफ साफ डॉगी करो। दोबारा मिल गई। ठीक है भाई, वो नहीं आया भाई हमारे अरे करते में यार, ये डॉगी। क्या गोल मारा। रुक रुक डोमजो रुक। क्या हो रहा है? डोमजो, डोमजो फिर मिस कर गया तू डोमजो। क्या है यार? किधर गया वो? ये पीछे रहा भाई, पीछे ये है। रहा। अबे यार, हेलो हेलो। भाई सर्वर लैग हुआ है भाई। ओए ओए। ब्रो गया ब्रो, भेजा मैंने एक बार कर नाइस। उसको। चेंज मिडल ईस्ट। तो चले लो अभी, फिर आ जाओ। चलो, ओनली मिडिल ईस्ट कर, मैं तो वही करता हूँ हर बार। मेरे को दूसरे कंट्रीज पे भरोसा नहीं। अपनी पे करके क्या मिल गया फ्रेंड? मैं लीव नहीं कर पा रहा। हेलो क्यों? एग्जिट करवा दे। भाई ठीक है, तुम्हारे जाते मिल गई मेरे को। ठीक है भाई। ये वाई टी ट्यूटोरियल वाले गाने क्यों चल रहे हैं? बॉस म्यूजिक ठीक है चालू भाई, हुआ तो है, चाहता ध्यान है से सुन। कॉपीराइट लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है भाई, जैसा तू कहेगा वैसा ही होगा। अमोल कौन भाई। कौन? कुछ नहीं, स्पॉटिफाई ऐड के साथ स्पॉटिफाई वाले गाने चलेंगे अब, कॉपीराइट वाले, फुल कॉपीराइट वाली। इससे अच्छा ऐड ही सुनना तो यूट्यूब के सुन ले भाई। यूट्यूब के उतने घटिया तो नहीं आते भाई। डिस तेरे को किक कर गया पार्टी से, आ नहीं पा रहा तू लीव करके। एक मिनट। सॉरी भैया। हाँ करना। लाइफ इसमें भी सीएस की तरह ट्रेड ऑफ्स होते हैं, मतलब कुछ नहीं बस। यार यूट्यूब पे 40 ब्लूप्रिंट प्लांट करके तू एंड में एक ब्लूप्रिंट ही निकालेगा। वही ब्रो, अब तो समझ गया है। मेरे को अनिकेत ने बताया था CSGO की केस की तरह, तो मैंने बोला ठीक है। मैंने क्राफ्ट किए थे ब्लूप्रिंट इसलिए। मैंने गेम इसलिए चालू की, मेरे को बंदे ने ट्रेड के लिए बुलाया एक ने, मैं चलो, वो साला अब खुद ऑफलाइन चला गया। आकाश पंडित आया है भाई सामने वाली टीम में। अंतर्जात करके आया हैसोन टूर्नामेंट विनर। क्या यार। अबे अनिकेत नाइस। नॉइस। भाई नाइस। मैं और अनिकेत वहाँ पे ऐसे ही मजे ले रहे थे एक दूसरे के। अनिकेत वाज लाइक नो, दिस इज अपॉर्चुनिटी। उसका बंदा अंदर था, वो निकाल सकता था बट एफ पे था वो भाई। इंडिया का है भाई, यही है क्या? आकाश पंडित थी शायद, झंडा लगा के। हेलो, तुम गोल के सामने की बॉल लाए जा रहे हो? मैंने तो बॉल को टच भी नहीं किया, अपने आप साले उछले जा रहे हैं लोग हवा में ही बॉल भी। कब से सागर मतलब भाई, सागर इसको ना अरे पीछे यार कलर ले गया। क्या पीछे कलर तूने ब्लू का रखा है, तो कर लगता है इंडियन टीम का बंदा। पता है मेरे को।
मैं सामने वालों को दिखाना चाहता ब्रो, मैं उनकी टीम में। ये सेंटर अरे नहीं हो पाया। यार ये कुत्ते हैं ना इतने सारे। सेंटर अपना सेंटर ना, रोक रोक रोक। रुक रुक रुक। गोल। वहाँ पे इतने सारे लोग, शायद तीन बंदे ठुके उसका गोल से, पता भी नहीं चला किसका क्या हो रहा है। तो हम देख वहाँ पे ही। ये डॉगी तो छुई नहीं तूने बॉल। हाँ, मैं अनिकेत से भिड़ा, अनिकेत तेरे से भिड़ा, हम सब भिड़े। ठीक है बड़े भाई, भिड़े क्या हुए की लोगो ब्रो। कौन है कीबोर्ड वॉरियर बन गया? डिजी है, यही ऐसे खेलता है। छोड़ मचा मचा के। हार्डकोर प्लेयर है, देख रहा हूँ। हार्डकोर मोड ऑन हुआ है तेरा। बच गए भाई, सीधी बॉल गोल में जाती है अगर थोड़ी सी भी राइट होती। यो नाइस, मिस कर दिया मैंने। अभी क्यों मिस कर मौका नहीं देते हो वाला फ्रेंड बार बार ये? अरे यार पीछे जा रही है, पीछे जा रही है, पीछे जा रही है, पीछे जा रही है। हेलो नो भाई अपन कैसे करते हैं डेट? ले जा अबे। बंदा था वहाँ पे सामने बॉल के एग्जैक्ट पीछे। मारा भी दे मेरे को नीचे से वो भाई ओ भाई साहब। अरे शायद मेरे मैंने किसी मैं मेरे रिवर्स करके ऊपर से नीचे आ गया। नहीं मैं मारा, मेरे किसी ने ठोका, उनकी टीम ने तो ठुक के सागर से ठुका एकदम टाइमिंग। भी बहुत दूर तक ऊपर से सागर। रोक ली गई ना। सॉकर तू टच कर देता ना। अरे बूस्ट नहीं था ना मेरे पास, कहाँ से टच कर दूं ऐसे? अरे 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 मेरे तो बॉल भी टच नहीं ले की शायद पीछे अब तक। थोड़ी सी रोकी मैंने वो। अरे यार लेके गए फिर से। नहीं हो पाई इतना काम। ओ नाइस। ओ यार अरे ऊपर बाउंस हो बहुत गया। ज्यादा बाउंस हुआ। ये वापस से बूस्ट खत्म हो गया है। यही होता है भाई, यही होता है भाई इस गेम में। दोबारा सेंटर। अरे मैं बहुत दूर आ गया। अरे वो उसने वैसे भी रोक लिया। मारियो डिप्स। भाई ठीक है अबे यार मेरे से कुत्ता आके भिड़ गया। भाई हो गया, कुत्ता हो बूस्ट मार के गया। जा। कहाँ जाऊँ? भाई यार तुमने बॉल क्यों नहीं हटाई, मेरे को समझ नहीं आया। मिस कर दी ना। हमारी दोनों सोच ने, से दो ऊपर बंदे थी नहीं ना। गए थे ऊपर। ये देख हमारी सोच से ऊपर थी बॉल। हमारी सोच। मैंने ठीक है भाई, नाइस वन भाई। चालू हो गया वो। सामने की टीम वाले के पास कीबोर्ड है। अच्छा ओ फुल पीसी मास्टर इस बाजी। अबे भाई हेलो। सागर एस्ट्रॉइड से ठुके जा रहा है तुम्हें। सब होता रहता भाई स्पेस में सब। भाई अभी बच गोल गई। करा देता जिसने भी बच- बॉल पीछे की तरफ मारी मेरे नाम क्या पे पीछे की तरफ और आगे चली जाती भाई, तू क्या मजाक कर। भाई मैंने बॉल हटा दिया दोबारा से। देखो, अरे यार ये ले गया कुत्ता। नॉइस। ज्यादा ही बोल हवा में रहती है। वाह भाई सिंपल मिस। अरे मेरा एक टायर नहीं घूम रहा। तेरा एक टायर नहीं घूम रहा। एक काम कर, गाड़ी लगा यहीं स्टेप नहीं निकाल, चेंज करके टायर। और इनके मेरे को धक्का दिया गया था। भाई क्या पकड़ा मैंने हवा। भाई पीछे कौन था? मैंने वो नहीं पकड़ा भाई, बॉल को मैंने नहीं टच। आता उड़ के तभी। नाइस इनके। भाई सब मिस हो गया। आ गया ओ ओ ओ उफ मारो। यार मैं आया था। 14 सेकंड पहले। वो अनिकेत ने रोकी थी बट वो हवा में थी बहुत ज्यादा। क्या बोलते हैं उसे, ओवर टाइम। इजी होटे।
ओपी साले छिछोरे, पता ही था मेरे को ये। वो जा सकती है। अरे फ्री यार गेम लिया ना इन सालों ने एपिक से, इसीलिए ओपी ओपी कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना तू डिप्स? अच्छा उनकी टीम में लिखा है। हेलो अनिकेत, नीचे गिर जान दे। क्या लिखा उन लोग ने? हाथ दिया क्या बे? हटा दिया भाई। इनकी हिंदी मेरे से भी मत। डॉगी लाइक ठीक है, मेरे को तो वैसे नहीं आती थी। दीज बॉयज। देखो मचा दिया, उसने आया था। नहीं यार नहीं। अरे क्या किया? अच्छा उसी ने ऊपर से गोल भी उसी ने किया है यार। उसने गोल नहीं किया है। लिखा है मतलब वो। अच्छा, वो हादिया ने। अब तो सारे गाने सुनेंगे, अब तो भैया कॉपीराइट इजी। अरे भाई साहब गाड़ियां देख रहे हो तुम? इसकी अलग ही ब्लैक माम्बा, ये क्या बनी पड़ी। ब्रो है तो ब्रो, इनके पास तो पैसा होगा ही ना, ये मोबाइल प्लेयर से समझना तू। पीसी पे न लगाया ना इन्होंने पैसा। नहीं ये मोबाइल प्ले नहीं है सागर, ये तो अरे यार एप्लीकेशन मैं है। मजे ले रहा हूँ यार, तेरे को समझ नहीं आया यार, क्या यार। नहीं नहीं। तो हमारी पिंग सही आ रही है। ये डिप्स को समझ नहीं आया मैं बोलने का, छोड़। कोई बात नहीं, मैच करके फेलो। भाग गए ब्रो। ये भी सही है, हार जाओ अगर नया फिर वापस से जी रीमैच करो फिर उड़ाते रहो। जीत के डर गए ब्रो हमसे। नहीं ये तो ई पुलिंग है भाई, ये तो ही। Miss this straight no cloud. पाब्लो एफ बार। डिप्स अरे तेरे को भाई पता है क्या, साहब मेरे चैनल पे नया फीचर आया है, सुन तो। क्या फीचर आया? चैट चलनी बंद हो जाती है। क्या बात है, हमारे पास भी था। क्या 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 हो जाती है? चैट चलनी बंद हो जाती है। अरे वो तो एकदम स्पेशल वाला है। मैं हमारे देख पास रहा भी हूँ था। सब मिस करे जा रहे, करे जा रहे, मतलब जा ही गया तो डाल ही देते जीवन हैं। सैवेज का अभी सुनते हैं, अभी सुनते हैं। बिल्कुल सुनते हैं। और उससे पहले मैं अरे सुनूंगा यार अलॉट। मैं कहाँ पे पहुंच गया, तुम देखो उस बंदे ने धोखा तो मेरे को सीधा कोने में। हेलो, गोल कर दो। ठीक है हाँ आ भाई, ही सही रहा बात। था। मैं तो बंदे पुलिस हो मार गया। रहा था वहां पे घूम के, इसी वो उसको डराने गया था। देख मैं तो जा रहा था गोल मारने में, बूम बूम कर दिया मेरे को, बूम बूम ब्रो मैं तो बंदे मारने के लिए खेल रहा। ओके ये देखो अनिकेत रोस्टिंग हार्ड। क्या कीबोर्ड है उनके पास? अनिकेत बोल रहा हूँ, अनिकेत अनिकेत, नहीं मेरे को क्या पता कीबोर्ड है कि नहीं है, नहीं है। मतलब मेरे को लगा रोस्टिंग मतलब सामने वाले की तरफ से ही कुछ हुआ होगा, मेरे को लगा। लेट्स गो। नहीं भाई, मेरे दोस्त खाली मेरे को रोस्ट करते हैं। देख रहा है मैंने पास किया, कोई तो बीच में गाड़ी लेके आ गया अपने, मैं देख रहा हूँ। फ्यूचर पॉप ऑफ। भाई सही है। भाई ड्रेक का गाना फ्यूचर ने अपना गाना बना दिया, तब तगड़ा वर्स है, इसमें मजा आ जाता है। ये हेलो क्या भाई, हुआ? अच्छा बंदा क्या बदल गया लिखा? भाई, बंदा बदल गया। वही वही। अरे क्या यार किया कुत्ते तूने? देखो, हेलो अनिकेत। अरे मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा था, अरे राइट हो गई। मैं बिना बूस्ट के चल रहा हूँ, तब भी अनिकेत मेरे में आके भिड़ गया है। ये क्या किया मैंने अभी? तो मैंने किसी को तो पूछ दिया, कौन था पता नहीं। तो अगर बूस्ट ले गया तो ए इट्स इलीगल, भाई नो फ्लाई। It's illegal. साला वो क्या उछल के आया। ये अच्छा था। It's illegal. वो No. जाने दे, अरे यार Oh, sorry अनिकेत। उसने हवा बहुत में तगड़ी रोका, गोली। मैंने भी हवा में रोका था। अरे भाई उसने डिपेंड क्या किया। भाई ले मैं गया, भाई गोल की तरफ ले गया आपने। अंडर एंगल से देखा। अरे मैं क्यों टेंशन ले रहे हो आप? ले भाई। उफ, 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 उफ। सागर क्या यही मार रहा था? नहीं नहीं, मैं लेफ्ट साइड को मारा है ब्रो। वापस अंधा ले है क्या गए। तू? मेरे को पता है तू अंधा है, बट इतना अंधा है। लेवल 69 ब्लाइंड भैया, हेलो। क्यों ब्रो? वर्किंग हार्ड फॉर लेवल 420 ब्लाइंड। सेंटर बॉल, सेंटर बॉल। ये भी सही है। इजी डोज बॉल।
देख रहे हो तुम? देख रहा है हवा में उछल के मारी बट बॉल तो नीचे ही गई। किस्मत देखो वही तुम। ब्रो, वही सब समझ रहा हूँ मैं। सुपर पावर लगाई है डॉगी ने। एड स्किप करना है। गोल। वैसे सागर नाइस शॉट। मेरा नहीं एड हुआ ब्लॉक में नई फीचर आ गई। क्या? फीचर आ गई। तेरी आवाज कट रही है, ज्यादा फीचर आगे लगता है। वही मेरे को भी लग रहा। सामने एक प्लेयर अपनी डिस्प्ले बॉल हटवा दी ब्रो। ले जा ले जा ले जा ले जा। अबे यार हम अपने जा रहे साली हैं। रुकती भी ऐसी जगह पे है ना, फिर ब्रेक तो आगे भाई चली सबको जाती है सबको गाड़ी। उड़ा दिया, सबको उड़ा दिया, किसी को बॉल नहीं छूने दी। अरे यार भाई हर तुम बारी सेम डिसाइड चीज करो बॉल करेंगे ना। यहाँ पे रखनी है वहां पे रखनी है। अबे यार कितना धक्का देते हैं भाई, कितना धक्का देते हैं। ये जीएस आया या नहीं? नहीं आयो भाई। जो वैसा नहीं ब्रो, कहती आया है लेट्स जो गो। भी हो। भाई से ब्रो गोल की तरफ जा रही है ब्रो, लेके जाओ। मेरे को ही ठोक देते हैं, ठीक है। ब्रो गोल की तरफ जा रही है, ले जाओ प्लीज। ले अरे गया, यार साले ने रोक लिया। हट। आ गई, फिर आ गई। अरे दूर दूर। नाइस अबे ब्लॉक वो बाय काला अनिकेत। धुआं छोड़ के जा रहा है भाई वो बंदा। अरे यार अरे हेलो, रुको 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 रुको। नाइस। पीछे गई। नाइस सागर। अबे अपनी साइड जितनी देर रहती है ना, अपने को इशू करती है। ठीक है भाई सागर। नाइस। नाइस शॉट। बाहर जा रही थी, रोक लिया हमने, बोला नो प्लीज गो इनसाइड, प्लीज बीको फाइव। हाय शेफ। उफ, साला डेविस ठीक है भाई। अनिकेत आजा तू भी ठोक ले। आते जाते। अरे ओहो भाई क्या कहाँ से मारा मैंने। हेलो, मेरा सीधा शॉट था। ये क्या था? क्या वापस से टायर खराब हो गया पीछे? क्या है ये? टायर खराब हो रहा है भाई इसके गेम में। हवा डलवा ले भाई, डॉगी सही हो जाएंगे। मेरे को भी लग रहा है तभी साला गोश्त नहीं हो रहा है, समझ रहा हूँ। ओ भाई उसके सिर पे चढ़ गया भाई मैं तो। हो जाएगा नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। बूम सेंटर आएगी। अनिकेत अनिकेत ना हवा में उछालती बॉल, अरे नहीं तो शायद लग भी जाता मेरा। अरे चल ठीक है। हेलो, एकदम स्टारशिप की तरह सीधा सीधा उड़ गया सागर भी हमें गेम एंड में। ऐसे वो तो नहीं उड़ पा रहा ना, उसे तो एफए ने क्लियरेंस नहीं दी ना। एफए की कह तो रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ एफए की बिल्डिंग गिरा देगा। जीएस क्या खेल रहा है? लोन मिला फोड़ना तो है ये। चलो अब डेविस तुम्हें अपनी रैंक वो दिखाएगा, रैंक दिखाएगा। मैं जा रहा है बैटलफील्ड खेलने। क्या तुम लोग बैटलफील्ड जा रहे हो? चैलेंज कंप्लीट करना है मेरे पास। तो फिर हमारे पास कौन था? अमुज। अमुज आ जाओ, अमुज। यस गेम बंद करेगा लॉबी लीव हो जाएगी ना। आई थिंक सो। नहीं बना लेना। जीएम से असला है। कौन आया वैसे? अमोग क्या देख रहे हैं नीचे वाले?
ओ अच्छा, हमारे को तो लॉबी जाना पड़ेगा भाई। यानी ये बाहर चलना है यार, तू यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है? यानी ये ऐसे क्यों करता है तू? डिस तू भी उसी के साथ का ही है ब्रो। आ गया Yeah, भैया, it is. कैसी बात कर रहे हो? Electronic arts. सर्चिंग फॉर केओस इन मिडिल ईस्ट। ठीक है भाई। मिडिल ईस्ट। Oh damn bro. ओके, ठीक है भाई। गेम ने बोला है ब्रो, अब तक तो मिल जाना चाहिए था। है ना भाई? गेम भी अपने उसके, ऐसे गेम भी करते पक्की साला। है अपने उसके। मेरी टाइम कर रहे मिडिल ईस्ट में, पिंग गंदा आएगा आधे लोगों को। क्यों ऐसे क्यों बोल रहा है? अभी तो तूने बोला था। अब देख रहे हो तुम्हारे सामने पलट रहा है ये। मिडिल देख ईस्ट में मिडिल आधे ईस्ट लोगों को में गंदा आता है, आधे लोगों को राउटिंग का इश्यू है। मेरे को वो नहीं पता, राउटिंग ये का इशू तुम्हारे है ना। सामने पलट रहा है, मैं ये बोलना चाहूंगा फ्रेंड। बस वैसे मेरी टाइम ही VPN है। लगा के अच्छा तुम तो राउटिंग सही कर सकते मैरी हो। टाइम रखना है ना ऑन। यस, बट वो VPN वाली ट्रिक बस मेरे लिए काम कर रही थी, मेरे को नहीं पता अब तो VPN भी सही नहीं चलता जो मैं यूज करता हूँ। भाई कॉलेज के ग्रुप में वो चल रहा है, क्या कहते हैं, SBI कार्ड बनवा लो और फिर मैं उससे कार्डिंग करूँगा। वैसे क्या सागर ही बता, नशे मेरे चल को रहे एक वो ऐसी एक साइट मिली तेरे काम की। हेलो, कौन से कोई तो टाइप? कोई तो वेबसाइट है ऐसे ट्विच की, उसमें ऐसे एक्चुअल व्यूअर्स कितने हैं वो सब भाई दिखाता है उसमें। KDV कच्चा धोती बनियान। क्या हेलो वो सब अनिकेत दिखाता रह है। गया भाई, अनिकेत रह गया भाई। देखो मैंने पहले ही बोला था, तुम ही कह रहे थे उड़ ना। गया। और और कर लो ब्रो, अब मेरी गलती थोड़ी है ये। एग्जिट लीव मैच कर लेंगे चालू होते ही। अरे भाई मैं तो लीव कर गया ब्रो, बाकी लोग अपना देख लें। मतलब जीतने देते हैं उनको। बाहर आना। तो इस डिफेंडिंग ये थोड़ी देर शांति रखो, चिल्लाओ मत। ब्रो अनिकेत बोल नहीं सकता तो मैं उसके लिए भी बोल रहा है ना। हेलो भाई, ये कौन भाई? अनिकेत है क्या? ठीक है भाई। ठीक है भाई, फ्लेक्स कर गया ये 2.5 सेकंड के अंदर अंदर हम पे। हाँ बहुत गंदा वाला भाई। ठीक है भाई। ठीक है, साला पॉश भी है इसके पास। ठीक है, उफ, पॉश है। ये मेरे को नहीं लगता हम ये जीतेंगे। जीतना तो है नहीं, मैं तो मिशन कर रहा हूँ। 619। मैं यही चलाता तेरा हूँ, तो सस्ती मैक्लारेन चला लेता हूँ मैं। ठीक है भाई, बैक टू द फ्यूचर। बैट फोर्टनाइट, बैटमोबाइल। क्या हो गया मेरे साथ? मैं सस्ती मैक्लारेन से ही खुश है भाई, कोई नहीं। भाई फेनेक भी है भाई। फेनेक क्या की थी इसने? क्रेड से दी थी या ट्रेड? बड़े घर में शिफ्ट होके सुनाऊंगा। ओ ओके, अनिकेत अनिकेत दोबारा माइक चालू करेगा। कब शिफ्ट हो रहा है अनिकेत से? ऐतिहासिक मोमेंट मैं कह रहा हूँ 2021 बड़ा अच्छा जाने वाला है, 1 देख to रहे हो 2 तुम पहले months से ही। बॉयज, लेट्स गो। सही बताओ। नाइस अनिकेत। आकाश तेरा ये गारंटी नहीं दे सागर, सकते। तेरी कार की बोनेट पे आगे क्या रखे हैं? 3 रेड बुल हैं क्या? ब्रो वो है ना, क्या कहते हैं, भाई यार पुल मारे जा रहा है, ये तो स्लो पिच पे पुल कैसे पड़ती है आखिरी दिन? फॉगलाइट है क्या वो? क्या गाड़ी के ऊपर? अबे वो सुपर चार्जर। सुपर चार्जर है। वही मैं बोलूं, पता नहीं क्या बोल रहा। मेरे को येलो दिखा। हेलो, हम ऑरेंज कलर की टीम है। वापस आने के रूट रहा है क्या? सागर स्कैम कर हेलो अनिकेत, प्लीज सेंड मैसेज अगेन इफ इट हैज बीन ट्रू। नहीं है, फाइंडिंग प्लेयर बता रहा नजदीक आए हो कोई? फाइंडिंग प्लेयर आ रहा है ना, लीव कर देना। यप एरिया में है। यार मेरी टाइम लगा ना सागर। अरे ये क्या लोग हैं? भाई, मैंने मेरी टाइम डाला हुआ है, बट तुमको यही सर्वर मिल रहा है, मेरी गलती थोड़ी है। लीव क्यों नहीं कर रहे हो ब्रो तुम लोग? क्या तुम्हें सही सर्वर नहीं मिला? नहीं Middle East हटा ही ब्रो, दे, मिडिल हटा ही ईस्ट दे पे Middle स्कैम हो गया ब्रो कुछ लोग। इस बाहर आ पाएगा आज की तारीख में? एक सेकंड, गाना चेंज कर रहा था। वो तो लॉबी में आके भी कर सकता है ना, क्यों ऐसे कर रहा है तू? फुल गानेबाजी।
भाई ये 34 ब्लूप्रिंट पड़े हैं, ये बेच नहीं सकता मैं। ट्रेड अप कर सकता है पर ट्रेड उससे इन का मिलेगा भी ऑप्शन है कुछ, ब्लूप्रिंट। बट तब भी ब्लूप्रिंट ही मिलेगा। यस। ये क्या प्लेयर्स स्कैम है के साथ भाई। ट्रेड ऑफ कर। फुल स्कैम बाजी। अरे वो ट्रेड ऑफ नहीं कह रहा वो, शायद एक्चुअल ट्रेड कह रहा है अपना सीएस की तरह, मतलब वो पेयर भी टू होता पेयर। है पर वो भी होता पता है। नहीं उसका, रॉकेट लीग का मेरे को ज़्यादा पता नहीं है तो। हमने रिसर्च की ना, हमें डॉगी चाहिए था। मेरे को आज एक बंदे ने ऑफर भी दी, मेरे को बुलाया भी ट्रेड के लिए, और खुद नहीं आया साला। कहाँ पे, रेडिट पे ढूंढ रहा था क्या? ना ना, एक साइट है स्पेसिफिक ट्रेड के लिए, वहाँ पे तू अपनी ऑफर डाल, तेरे को बंदे कांटेक्ट करते हैं फिर। तो फिर क्या बेच रहा था तू? ब्लूप्रिंट। मेरे पास एक थोड़ा सा रेयर ब्लूप्रिंट है जो मैं पानी के भाव में बेच रहा हूँ। बस उसके कौन सा बदले है? में मेरे पास भी हैं तो 2-3 ये। मेरे पास तो ऐसे 195 ब्लूप्रिंट्स है, तो 50 के वो क्या हिसाब से मैं बोलते हैं बैटल उसे, पास खरीद लूंगा। कोई तो फैनाटिक कुछ कार आती है ना उसका कोई। फेनेक फेनेक। हाँ वही, हाँ भाई वो उसका कोई महंगा ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट है। है भाई, सस्ते में मत बेचना। वो ये मेरी फनाटिक गाड़ी है ना, ऑटो पे। हम्म। मेरी और ये नूबजिला की वो वाली गाड़ी का ब्लूप्रिंट है वो, उसका उसको भी कोई महंगे में। रेयर वाला हुआ है, कलर है जो भी होता है वो। हाँ तो 500 में तो गाड़ी बिकती है, ब्लूप्रिंट का पता नहीं पर उसके आसपास ही रहेगी, अनिकेत को मैंने पता देखा होगा। था ब्लूप्रिंट की प्राइस कुछ 120 क्रेडिट्स है। ज़्यादा भी हो सकती है। बट उसके बदले में मैं ऐसे, मेरे को जो चाहिए वही मांग रहा हूँ मैं बस। एक हॉट व्हील्स वाले टायर, और डॉगी वाला अबे हॉट व्हील्स के तो टॉपर। टायर फ्री में हैं। क्या कह रहा फ्री है? वालों को नहीं मिलते। वो अच्छा, ओके। हॉट व्हील्स बट वाला ये टायर डिस्क को तो मिल मतलब गया सब सामान। क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ डिस्क को तो मिल गया सामान। मतलब क्या? तेरे को मिला है ना फ्री वाला सामान? हाँ हाँ हाँ, मिला मिला। किसी फ्री ने तो वाला अंडर सामान डाला। मतलब वो मिशन कंप्लीट करके तो मिलता नहीं, भाई। अब एक दिन मैंने गेम खेला, अपने आप ही दे दिया उसने। हाँ तो वो तो मेरे पास है वो सब तो। अनिकेत ने बंदे को ही मार दिया, कहता तू रोकेगा साले। ये 4 साल तेरी बिगड़ जाएगा यार। टैंक बाजी। भाई ठीक है भाई, गोल पे मार दिया। ओ नाइस शॉट। क्या बे। सॉरी सॉरी सागर, सॉरी। बंदा भी हटाया मैंने जो गोल रोकने आ रहा था। हेलो, दोबारा गोल की तरफ जा रही है बॉल। प्लीज नो। भाई गया। भाई क्या ही है इसका ये गोल वाला वो। क्या कर वो रही सबसे थी? घटिया लगता है ये वाला। मैं भी आ रही ठीक है भाई, न्यू। हैव यू सीन न्यू एक्सप्लोजन? लोग ना अपने से अनिकेत लगा के है ना, तू भी अच्छी अच्छी चीजें जलाना सामने वालों को, तू क्यों नहीं करता ये सब? नाइस सागर, नाइस। बहुत ही चढ़ाती। ए जाओ 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 भाई। जाओ जाओ। इससे अच्छी बॉल तो मैं सेट ही नहीं कर सकता था ब्रो। कोई बात नहीं सागर, बोल। साले उनके सेक्टर में नाइन फोड़ा। मजा आ गया। रिट्रीट ना बोल रहे अपने मध्य खुले साड़ की तरह उनके सेक्टर में घुस। सारा एक्सपोज है हम लोग। मैं पहुंच भी सकता हूँ अपने सेक्टर तक, बहुत दूर हूँ तुम लोग से। भाई बंदा बॉल ले गया मेरे से। गोल आ रहा है। बंदे देख रहे होंगे ये टकला कहाँ घूम रहा है। अरे कल भी आया था वो ये वाला भाई, ये पक्का प्लान है भाई ये। कितने सारे बंदे मिल चुके हैं हम अब इसके। यार मेरे को डब्ल्यू की आदत छुड़वा दो कोई। कंट्रोलर ले ले। 15% गेम, 15%। आई डेड बॉय। ब्रो फुल रखा है अभी तो। अगर तू पहले आता तो कस्टम चालू कर लेते, बट तू आया नहीं था। What the hell? मेरे को बूस्ट कैसे मिला ये इतना? मार दो भाई प्लीज डिव्स। लेट्स गो।
नाइस पास। Run after plan. ओ अमोक वापस आया था भागते हुए। भाई ये लौंडा उड़ रहा है भाई, इसका दूसरा लौंडा भी उड़ रहा है। हमें 4 उड़ रहे हैं। रुक रुक रुक, रेडी लोड। शूट के लोंडे भाई बना के साले ने मेरा निकल तोड़ दिया पर नहीं है नोइस। ए बचा साले ने पीछे डाल दी। नहीं अरे मारता बेंजा हूँ आज बंदे काम को कर रहा है क्या? किसी को पता है क्या बेंजा का क्या सीन है आज का? क्या हुआ? बेंजा का सीन पता है क्या किसी का आज का? क्या सीन है आज? काम कर रहा है, क्या कर रहा है? रुकी नहीं, रुकी भैंस का नहीं रुकी, अगर पीछे जा रहे हैं रुकी भाई, फिर लेके भाई रोक दो भाई। नाइस टिप्स। हेलो सॉरी मोच भाई, क्या ही चल रहा है भाई? ये मेहनत का गेम हो गया ऐसा लग रहा है। सॉरी निकेत, कुछ भी रोका निकेत ने, देख रहा हूँ मैं। वापस वापस वापस। बॉल दीवार छूट गई है अंटिल नाइस शॉट, नाइस शॉट। नो भाई, रुक गया भाई। नहीं नहीं, 2 जन है वहाँ पे। मिड आएगी? नहीं आएगी। हटा हो गया बंदा, नहीं हटा हो गया बंदा, लेक हटा दिया। हेलो गो निकेत, गो निकेत, गो निकेत। पता मैंने इसीलिए बॉल नहीं हटाई, मैंने बोला कि मैं खराब ही करेगा अभी। मेरे साइड में गिरी बॉल, मैं बोला नहीं रुक। मैं सोचा ऊपर से और एक टच दे दूं, नहीं जमा। कोई नहीं ब्रो। हाय ओमकार ब्रो। दूसरे पे है ब्रो भाई। ठीक है भाई, निकेत ये कर ले तू। ठीक है भाई। हेलो आ गई, मिड आ गई, मिड आ गई। ठीक है भाई। भाई अच्छा मोग ने मारा, मैं कहूँ उसके बंदे ने अबे, खुद उठा मार लो, दिया क्या? जेस उठा ले यार। उठा रहा भाई, सामने बंदा है रेड के आसपास। चढ़ जाएंगे अपने को भी, पीछे हो जा थोड़ा। यहाँ पे क्लोज है राइट में। अरे राइट में बहुत है, मैं राइट में बहुत हूँ। भाई जाओ भूल जाओ। ओ इसने हटा दिया बे। भाई गोल, अपने गोल जा रही है। मैंने अनिकेत को रोक दिया भाई, स्कैम हो गया। अनिकेत भिड़ गया मेरे से आके, पता ये हुआ एक्चुअली। हाँ मर गया ना वो वाला। एक और गोल नहीं खाना 40 सेकंड में। हाँ भाई रोक दिया भाई अनिकेत ने। No! नहीं 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 नहीं। अनिकेत ने लाइन अप करके दे दिया। गलत टच लगाओ, मेरा भी होता है, पीछे लग जाता है। क्या निष्पड़ इंसान है। हम लोग ने बीवी कैप्चर। जा जा जा, कोई नहीं, बस अब रोक लो। हेलो भाई, सही से मारता अनिकेत हो जाता भाई कुछ। उई जा रहा भाई, कुत्ते ने दोबारा रोक लिया। भागो 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 अपने गोल पे। हेलो भाई, ये क्या उड़ रही है? बॉल प्लीज कम डाउन। बस मैं वेट कर रहा था, मैंने इसीलिए छुई नहीं बॉल। आप क्या भर गया ना सर, अब मजा आ गया। यो जो लग रहा है शायद इसका। ए जाओ 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 जाओ। नहीं वो टच कर देगा। चला रहा है गोलियां, चला हमारा भाई बैठा इधर।
अरे यार नाइस वन। अनिकेत ने मारा भी ऐसा शर्ट था, डिनाई नहीं होना था। अबे गोलियां बरसाओ, तुम्हारा भाई रिप्लाई करेगा। कौन गिरा रे? मैं उठाएगा। चल ठीक है तू उठा, माफ कर दे जरा। मारो रे। ब्रो बॉल पीछे आ रही है, रोक दो प्लीज। नाइस। अरे थोड़ा सा ही मिस हो गया। व्हाट द हेल? यार ये केई हेलो भाई, ठीक है भाई। पीछे पीछे पीछे। उठाओ रे कोई तो। भाई मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, स्कोप ही नहीं हो रही गन, बता। मैंने अपग्रेड नहीं की होगी इसलिए क्विक स्कोप एनेबल है। नाइस डेट। मैं गलती से जो ठोका हूँ ना नूज़िला को बूस्ट कर रहा था। कई घंटे बजा रहा बंदा लौटा। अमुक क्या में किया तूने? मेरे को लगा राइट में लेफ्ट में बॉल आएगा, गलत रीड। अरे भाई ओपन हो गया तो छप्पर ही उड़ गया अपना, मर जाएगा। भाग भाग। सामने से टैंक भी आ रहा है। अरे कितना मिस करेंगे सब लोग। सागर सागर वो लोग 2 लोग स्टैक कर रहे गोल कीपिंग पे, याद है क्या करना है? यार बंदा जंप कर गया भाई। हेलो रोक दो भाई। क्या बे 25 गोलियों में इतनी बड़ी स्कोप है और 25 गन में रिलोड। कौन सी गन है वैसे? क्या मजा आता है 25। ZHO यूज कर रहा है ना तो ऑटो वाली। अरे डिप्स अरे मार दिया मैंने। क्या मौज, you can do this। क्यों मर रहे? बच गया। पीछे गई, थोड़ा सा सेंटर्ड होगी। ले गया भाई हवा में। ओए कूल कूल कूल। सॉरी 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 सॉरी। पीछे गई क्या? मुझे भी एक और आ गया था, मैंने बिल्कुल साफ कर दिया था आसपास से गोल के। नाइस डिप, नाइस स्टोरी ब्रो। लेट्स गो। ऐसे और कोई था भी नहीं आई थिंक। उसे बाउंस नहीं दिया खुद पे। फुल स्पीड। नहीं नहीं, उसने हल्का सा राइट साइड को बाउंस कराया ताकि अंदर ना जाए वो। उसने एक्चुअली सही चीज की थी, बट उसे जंप करना चाहिए था तो ज्यादा अच्छा है। वही जंप करना चाहिए था, थोड़ा दूर तो जाता है। हेलो भाई क्या हो गया भाई? रो दिया भाई। दो उनका एक लौंडे, बंदा उठ गया। 2 बंदे नहीं उठ गए? 2 बंदे उठ गए। हाँ 2 उड़ गए। हेलो सीधी भाव। ओए नाइस। हेलो मोगो, मेरे को निकलने दो दे भाई ओ सॉकेट नाइस शॉट। जाने दो, जाने दो।
इसके साथ इतना गंदा स्कैम हुआ है ना, वो बॉल जंप होने वाला। अबे ये बंदा जीएस बगल में आ गया मेरे, पता ही नहीं मेरे क्या बात है। को। लेट के हाँ आएगा, पता कैसे चलेगा? पता नहीं। कुत्ता साला। ठीक नो, है भाई। भाई उनके साथ अबे बॉट स्कैम कर रहा है। चीफ है, चीफ बी पे करा, एक ए पे कर, ये बंदे घुस रहे हैं। कोई नहीं घुसा कुछ भी अभी। बोल हो गया, मजा आ गया भाई। करता हूँ भाई, मैं भाई करता हूँ, कुछ ये भी था टेंशन मत भाई, लो। ये तो फ्री का मिल गया कुछ भाई भी टिप्स। बोल हो गया भाई। वो बॉट था ना। अमोग असिस्ट के कितने पॉइंट्स हैं? 50। शायद पता नहीं। हाँ 50 है। 25 है क्या? यू कैन ट्रेड ब्लूप्रिंट्स फॉर 50 50 है। क्रेडिट, अनिकेत ने लिखा था। मेरे को बहुत बार मिला है, मेरे से पूछ। अनिकेत क्या ट्रेड इन जो ऑप्शन है वो वाला कह रहा तू? नहीं वीव्स आ गए वो फ्रेंड, वीव्स आ गए। एक्सटर्नल साइट पे करना पड़ेगा कोई। वीव आ गए ब्रो। भाई ये स्टीम वाले अच्छा खेलेंगे भाई। अब कर रहा हूँ मैं। ऐसे तो वहाँ पे 3 की दिखा रहे हैं, और सेक्टर है क्या इसके बाद? अरे मेरे भाई को तुमने हटाने क्या दे। किया समझ नहीं आया मेरे को। यार मैंने रोक लिया था ये, मेरे से गलत दीदा हो गया। हेलो, एक तो दिखाई नहीं रहा कैम। साला मेरे को मारा भी तभी जब मैंने स्कोप इन किया, पता नहीं कहाँ गया अल्टर। टैंक मारा कोई तो, पता नहीं कैसा हूँ। हवा में ले गया ब्रो, हवा में ले गया वो। जंगल बना दिया फ्रेंड बोल का। ओके अलग दूसरे लेवल के प्लेयर्स। Bro, this was calculated. That's all I would like to say. ओ अमोग ने अच्छा खासा शॉट हटा दिया। आया रुक जस। मैंने बॉल रोकी अभी के बाद। आईडी थ्रो। किसी ने अल्टरनेटिव कर रखी है ऑलरेडी। भाई बहुत तेज मारा, मैंने भी रिएक्ट कर पाया गाड़ी में। मेरे को भी नहीं था ब्रो। सुपरसोनिक एक्रोबैटिक रॉकेट पावर्ड बैटल कार्स खेल रहे हैं हम। भाई बर्ड भी नहीं बड़ा करते लंबा क्या नहीं लग भाई रहा। सागर कैसे याद किया इतना बड़ा, कितने में प्रैक्टिस करी? ब्रो। गाने का नाम है इनके थीम सॉन्ग का। भाई मैंने ना पता है बंदे के सामने गाड़ी रोकी, मेरे को पता चला मैं ही जुक हो रहा हूँ। ठीक है भाई तू देख अभी क्या हुआ है। तू देख भाई जुक देख तू, भाई देख तू जुक देख। देख रहा है तू? भैया देखो, मैं क्लैन का नाम पढ़ के समझ जाता है तो बहुत बेकार होंगे, वरना ये अच्छे से फोड़ेंगे। हम लीव करके चलते हैं, मैं बोल रहा हूँ। बंद बंद करते हैं कि मैच के लिए। ऐसे करेगा साले, इतने जल्दी बंद करो इसको। स्ट्रीम थोड़ी बोला, गेम बोला। इतने जल्दी भाई अरे जीत दे सकते दे हैं यार। हम लोग। जीत तो हम सकते हैं। मेडिक जो बगल में खड़े होने हील दे क्या ही भाई यार पाउच भी नहीं दे रहे भाई मेरे को तो ये लोग। मेडिक बनूं क्या मैं? अभी रैंक पे नाइस डे। जैसे क्या हुआ? ये देख क्या रहा हूँ, हुआ क्या? किसने मारा ये? मेरे को हील चाहिए। अनिकेत ने मारा, कौन ओके। सी गेम चली गई है? कोई नहीं, my bad। कोई नहीं अनिकेत, नाइस वन ब्रो, वी अप्रिशिएट इट। मुझे ड्यूस को देख के मजा आया। भाई गोल हो गया क्या? ना बॉल उसके लेफ्ट में आ रहा है। भाई वापस आ गए बॉल। यहीं पे जीएसटी है ना। हाँ। सामने टनल से अरे आएगा। नहीं यार, ये किसी ने मेरे को 4 बार मारा। बता अरे यार हाँ। अबे बंदा 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 कैंसिल कैसे होता है?
मेरे का सेम बटन से कैंसिल होता है। उनको यहीं गोल गोल ठोकते रहो खत्म कर दो। मेडिक बनेगा मेडिक, कावड़ मजा आएगा। अरे बट मेरे को वो सपोर्ट वाला है, मिशन कंप्लीट करना है। थोड़ी मीडियम रेंज फाइटर मत कर, एसएमजी नहीं चलेगी। ठीक है भाई, इतनी जोर जोर से मार रहे हैं शॉट। भाई सेट हो गए भाई उसके। अरे वो यार। अच्छा हुआ मोग ने रोक दे, मैं तो रोने आया था नहीं तो। चलो स्नाइपर है सामने है, संभल के इस तरफ। कोई नहीं यहाँ तक बॉल लेके आता है, वो एक शॉट का फिर वापस भेज देता है। स्मोक बना दे, गोल। टेंशन मत ले। सागर भैया रुक, रुक। ओपी यार। सामने बंदा आ रहा है मेरे। एक मारा। बस एक ही चाहिए। रुक रुक रुक, नहीं दूसरा भी है, हाँ, उठा लिया उसने, उठा लिया। फेंक देता हूँ ना वहाँ पे टीएमटी। थैला ले लो रे तुम लोग, थैला ले लो। बंदे हैं यहाँ पे, संभल के। गोल और व्हाट ओ भाई, थोड़ा सा और सही से धक्का मारता ना तो मेरे पास स्पीड होती। जा 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 जा। स्पीड No कुछ नहीं boost. है, जब जरूरत बंदा है। सामने। गो अमक टेक बूस्ट। कुत्ते का बच्चा। नाइस गोल। क्या कह मैं यार। स्वान हो गया जीएसएस जगह। क्या किया डेफ ने, मेरे को समझ में नहीं आया। ठोक लेता। नॉइस, उसके बंदे ने डाला है बट नॉइस। अरे अपने बंदे की झुंड में जा रहे हैं मरने के लिए। क्या बात भाई, 12 बंदे मारने हैं बस, जीत सकते हैं। कॉल बैक करो, कॉल बैक करो। लो यार 68 पॉइंट है, सागर 69 कैसे कर सकता हूँ मैं? ऑप्शन नहीं है ब्रो आई थिंक गेम में। आ रहे हैं जीएस लेफ्ट से। 420 कर ले। सामने उसका है। यहाँ पे। घुस जा अंदर, प्लीज घुस जा। घुसा दे ब्रो, चिंता मत कर तू। यार अगर मैं वो गोल नहीं पड़वाता तो शायद हम बराबर कर सकते हैं, अभी भी कर सकते सामने नाइस। भाई क्या जीते हम। Sorry Aniket, I thought you was not there. I हैं। didn't अरे see. कम बैक फ्रेंड्स, कम बैक है, कम बैक है। मेरा तो मिशन वही I think Akash. अरे कर लेंगे बता रहा हूँ। होगा क्यों नहीं होगा, अगर मैं पीछे नहीं जाने। अब बॉल पीछे कैसे आ रही है? बॉल को पीछे मत आने, भैंस क्यों बॉल टच कर दे खुद से, टेढ़े एंगल पे बॉल पीछे जा रही है। बहुत ज़्यादा तेज जा रही है। भैंस क्यों बंदे ने उड़ा दिया मेरे को। ये कहाँ से मैं जंप करके लेफ्ट मारने वाला था, बंदे ने उड़ा ही दिया मेरे को। तो भाई गाड़ी फूटती है, अंधे हो जाते हैं। तू देखना बंदे ने क्या किया। बंदा कहता है ऐसी कम तैसी ब्लास्ट। भाई तुम जीत नहीं रहे अच्छे से, तुम्हारे को अभी भी और गोल करने हैं। मैंने अपनी काली जुबान से कम बैक बोल दिया था ना, तो एक गोल तो पड़ना था। नाइस डेज। भाई 3 महीने हो गए कोशिश कर रहे भाई। ये बन गया जाने का। भाई ये लोग अब ट्राई नहीं कर रहे, कह रहे अब हो गया। एक लौंडे ने बोल दिया अब हो गया। मैं तो इसका वो भी कंप्लीट कर Sorry लिया। Moj, जोनाथन I didn't see you coming. असाइनमेंट लगा था। भाई कैसे भाई, क्या स्कैम था ये। कम ऑन 3 गोल मारना है, 6 सेकंड मार सकते हैं।
भाई यार अमुक ये मत करना भाई, बॉल हवा में रख मुझे लेता मैं बॉल हवा में रख के लेके जाने वाला था अपनी गाड़ी पे। तो हम हार गए हैं एक और गेम सुपरसोनिक एक्रोबैटिक रॉकेट पावर्ड कार्ड में। भाई इनके साथ खेलना है वापस। नहीं बहुत रिमैच ज्यादा नहीं मारेंगे करेंगे अब ब्रो, रिमैच नहीं करेंगे ब्रो। ज्यादा मारेंगे अब की बार, पर इनके साथ ही मिल सकता है दोबारा। मिलेगा इनके साथ, ये चीटिंग हो रही है भाई हमारे साथ। मेरे को ये नहीं समझ में आता रेडी और रीमैच में, फिर रीमैच दबा के अरे मतलब अरे क्या है? नशेड़ी को अन अकेडमी के एड्स आ रहे हैं वैसे, सुन रहे हो तुम? किसकी? नशेड़ी को, वेल नोन नशेड़ी जिसके गलत एड्स आते हैं। हेलो कुछ भी। मैंने उसको हेल्प किया काइंड ऑफ। अरे फिर भी यार इतनी जल्दी। ठीक है भाई। कोई नहीं अमोक, कोई नहीं, होता है ब्रो, सामने वालों की तरफ से तू खेल पाता है। ये भाई कुछ लिख गया भाई, इडली 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 वड़ा इडली। नहीं देख उसने लिखा ही वही है, मैं मजाक नहीं कर रहा। वही गोल कर दो यार हो जाता है ये नहीं होता। पीछे डाल दिया मैंने वो, गो नहीं गए। Sorry Niket, I didn't know you needed boost. Sorry Niket, तू गलत जगह गिरा। ओए गोल हो रहा है भाई अमोक। नहीं समझ। ये चलेगा क्या पूरे गेम? मैं बाहर कैसे आया गेम के? व्हाट? हेलो, why have you left us? मेरे कहाँ को गया, कनेक्शन टू द गेम टाइम आउट आया। कहाँ गया? इतना अच्छा कल सेव कर दिया, कल गेम नहीं बाहर निकाल दिया। कल Nice. इनवाइट टू गेम, इनवाइट टू प्ले, जल्दी दबा, तेरा स्लॉट नहीं तो चला जाएगा किसी को। तेरे को आया ना इनवाइट? जॉइनिंग फ्रेंड। हाँ लेट्स गो। स्ट्रीम के फायदे ब्रो, एपिक पे कहाँ मिलता है ये सब? वही तो ब्रो। एपिक पे पैसे भी तो नहीं देने पड़ते गेम के। कोई मार दिया गया है। भाई मिस हो गई। वो यार मेरे से मिस हो गए। गोल बुला दिया। रोक दी भाई लोगों ने। थोड़ा सा एंगल खराब हो गया, शॉट तो अच्छा लिया था मैंने। भाई कुत्ता भाई, अच्छा बताओ तुम। भाई वो गोली के अंदर बैठा रहता है भाई वहाँ पे छुप के। He like see me coming out now. ये साले रॉकेट लीग को कोई डिच का मैच बना देते हैं, हवाबाजी चल रही है। यार क्विडिच भाई नया वाला वो आएगा ना PS5 पे, भाई इसमें क्विडिच खेलने को मिलेगा ओपी। भाई मैंने पता आज ही ऐड देखा भाई, मैंने पता जल गया भाई, डिव्स एक्चुअली में जल गया। भाई PS5 में खरीदूंगा बस वो गेम खेलने के लिए, मतलब ऐसा वाला सीन है। नहीं नहीं तू नहीं खरीदता है। मैं खरीदूंगा ना, तो देखिए कौन सी गेम? कब खरीद रहा है? ना बहन दिलाएगी। मैं दिखाऊंगा बहन दिलाएगी PS5। ओ नाइस ओ ब्रो सागर यहाँ देखो पे उड़ाने आ रहा है। हाँ हम साथ में खेल रहे हैं ब्रो, कोई नहीं होता है। गोल नहीं है भाई, वो चला गया। नाइस कह रहा हूँ गोल है। भाई, वो कोकोनट खड़ा था ना, मेरे को लगा कि भाई कुछ कर देगा वो, अमोक ने बाद में जाके उठा दिया। अमोक भी लाइक एंड ऑफ वीक। The weep that wants to end weep. हाँ अमोक। यस ओके, मैं कुछ पता नहीं, मेरे को असिस्ट मिल गया, मैं बूस्ट लेने जा रहा था। अमोक भी लग, मैं तो बूस्ट लेने गया था। बूस्ट पे असिस्ट फ्री। यार एक तो अनिकेत और अमोक फिर मूड में आ जाते हैं तो लोगों के स्पोर्ट्स स्ट्रीम कर देते हैं। हवा में रहते हैं भाई ये लोग तो भाई, फिर
क्या ही बोलूं ये मैं। देख फिर फाड़ दी उनकी बेचारों की। संध्या का है ना? अबू दोबारा आएगी, प्लीज खेल लो। फोड़ दिया। क्या है डॉक्टर स्ट्रेंज? ले डॉक्टर स्ट्रेंज, मेरे दोस्त को मारेगा तू है कुत्ते। ओए यार भाई मैंने उड़ के ये गोल हो जाता तो बॉल मजा आ पीछे गई। जाता यार। मेरे दोस्त को मारेगा तू कुत्ते, देख लूंगा मैं तेरे जैसे को। ये सेंटर कर दी मैंने गलत। हाँ चलो। गलत सेंटर सही कह रहा है। ब्रो मैंने करी सेंटर ही थी, अगर कोई पकड़ लेता ना तो वो सेंटर ही काउंट होता भाई। ओ नो। अरे गोल। ओह नो। चलो और एक प्री असिस्ट। भाई अनिकेत कह रहे बहुत बकर कर रहे थे पिछले गेम। अनिकेत भैया ऐसे ही मारते हैं भाई मैच में। पहले अपोनेंट से हार जाओ, फिर उसका वीक पॉइंट पता लगा लो। ये अनिकेत देखो से भाई, खेल ये देखा हमने, फुल स्ट्रेटेजी बाजी। मिड मिड आई मिड आई। मिड नहीं थी, मिड आई। भाई कुछ ओ मेरे को बंदे ने बॉल पे धक्का दे दिया। हट। सागर तेरा। थोड़ा पहले कॉल कर देते भाई। बॉल कैम नहीं रखता ना, पता नहीं कहाँ ये रहता है। ब्रो मेरे को ना मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से मैं बॉल कैम नहीं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं भी भाई मैं भी लेवल 69 ब्लाइंड हूँ, मैं तो करता हूँ। वो भैया भाई कम बैक हो रहा है। यार नहीं। भाई उन्हें पता है इस एरिया में मत रहने दो, जब वो इस एरिया में आ जाते हैं ना तो पता है सीन हो जाता है। बॉल उधर ही रखो। जाओ 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 मैं डिफेंड कर रहा हूँ। भाई थैंक यू भाई। दोबारा क्या? Nice, उसने nice, हटा दी। हट गया उसने। भाई फिर जा रही है यार, क्या गंदा सीन है। सेव हो गई सेव हो गई सेव हो गई फ्री बंटी। लेट्स ब्रो लेट्स गो लेट्स गो। अगू रुक जैसा है, बंदे है मेरे। मारा मैंने। बस भाई ये स्पोर्ट्स टीम टूट गए हैं इनके, बिल्कुल बिखर गए हैं। मेरे सामने मेरे सामने चूर चूर कर दिए हैं किसी ने। ई से नहीं होता जी वापस। पता नहीं किससे होता है कैंसिल, पता नहीं। इसके होगा मेरे हिसाब से। स्किप नहीं होगा मेरे को। भाई टिप्स बॉल खड़ी मत कर इन लोगों के सामने भाई, सीन कर देंगे। मैं अगर फ्यूचर कोई दूसरा प्लेयर बनूंगा इनको बहुत मारूंगा। गोल की तरफ जा रही है। जैसे कि आपने करी सागर। नहीं नहीं, मैंने उसको चलते हुए बॉल दे ब्रो, देख तू एक बार। आई नो कि तू क्या बोल रहा है, बट मैंने उन्हें चला के बॉल दिया ब्रो। खड़ी बॉल नहीं देता मैं किसी को भी। अबे यार मुझे हटा दो। आइए स्ट्रेंज को ना एक बार और मारना पड़ेगा, इसका ना हो नहीं रहा है। हेलो भाई, इसके बंदे ने अपोजिट साइड बॉल टच कर। नाइस ऑन ड्यूस। चल चाहिए मिस कर दिया उसने। यहाँ पे गोल और व्हाट?
आगे बोल। नाइस। मेरे को क्यों मार रहा है? मैं बॉल को मार। अनिकेत का गोल है, अनिकेत का गोल है। ये क्या इसे है भाई? इससे बैड लक बोलते हैं। बराबर इजी ट्रेड, इजी ट्रेडर है अनिकेत। भाई क्या गंदी किस्मत है भाई। Just exchange. कुकलेटेड ब्रो। Oof, nice भाई यार, ठीक है, nice मेरे को touch. धक्का दे दिया भाई बंदे ने। ही वाज लाइक नो। वो तो क्या सागर भैया ऐसी इज्जत तो कोई देता नहीं है। धक्का ही देते हैं। किसी गान में या पूरा नाम ये जाओ 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 जाओ। नाइस सागर। गो अमोक, डू इट। नाइस, लेट्स गो। चल अपने मेड एक नंबर की चीज है ये क्या। उनके बंदे ने बहुत लेट रिएक्ट किया, वो ब्लू वाले। अपना टैंक एक तो आ ही गया था वो। आ गया था पर बहुत लेट आया वो। उसके पास टाइम था अच्छा खासा। पैसेंजर असिस्ट। नाइस। कोई उठाएगा? भाई मैंने तो बंदा जानबूझ बंदा के बंदा मारा बंदा ब्रो। मी भी लाइक चल बंदा है जैसे साले। यहाँ पे। वो कहाँ गया बंदा? वो मर गया शायद। भाई ठीक है भाई। ये नहीं होएगा भाई। थोड़ी देर है। ओए मैं हटाया नाइस था। ट्राई अमोक। भाई नहीं गलत नहीं, झंडा बॉल हटाया पे पता बैंग हो है गया। तेरे को? ये देख, भाई पता ही है, अगर मेरे को ऐसे What भाई the ठीक hell? है What the भाई। hell? What the ये hell? बंदे से गोल मारा है भाई। ठीक है भाई। भाई सॉरी अनिकेत भैया। भाई क्या ही चल रहा है भाई, क्या ही। नाइस। नाइस अमोक। थैंक्स। ओपी गोल। ओ पबजी मोबाइल प्लेयर पार्ट 2 आई सी। क्या पबजी में पे आ रहा है क्या? तेरी बात कर रहा हूँ साले, ओपी ओपी। अबे यार, ओपन। घुसा दो। भाई कर दी। नहीं, क्या करते हैं? मैंने बहुत हल्के से मारी थी ताकि मार पाया के। ई से साले बंदा लेके जा रहा था, देख तू साले, तेरे को समझ नहीं आया मैंने क्या किया। देख वो लेके जाता नहीं तो। सीधे व्यू पॉइंट रखने के भी फायदे होते हैं कभी कभी डेव्स। सामने से आते वाला दिख जाता है। कि मल्टीपल लोग हैं वहाँ पे। अबे हेलो, ये क्या था? क्या क्या घटिया टच किया तेरे डेव्स? भाई मैंने देखा ही दो नहीं। तीन जगह हो। रास्ता करा दूंगा पूरा। ठीक है भाई डेव्स, नाइस वन। भाई मजा ही आ गया भाई देख के। भाई देख। यार, ये कीज दब जाती है ना, देख फिर फालतू की कीज दब जाती है ना, ये क्या हो जाता है। मार दो भाई, रुक गया इस कुत्ते ने। भाई फिर रुक उसने भाई क्या डिफेंस किया भाई। थैंक्स। सॉरी अमोक। इट्स ओके, इट्स ओके। मिड बहुत अच्छी मिड। भाई बाउंस खा गए मेरे मुंह पे। अरे वापस पीछे। भाई गया क्या? यस। गया। कितना मुश्किल है। स्किप कर दो प्लीज। क्यों ऐसा क्या था मुंह उसमें? बहुत गंदा मिस किया मैंने बीच में। भाई टच कैसे Nice नहीं one. हुई? हुई? नहीं दूसरे की हुई।
भाई साहब रेलिंग के बीच से बंदा मारा। नाइस भाई। ओह भाई बॉल छीन गया कुत्ता। यहाँ पे हवा में मत रहने दो ब्रो, बॉल नीचे ले आओ। गोडीज नाइस। ओ सॉरी। हेलो मोक, मेरे को क्यों मारता तू हवा में भी मैं आके? बॉल के लिए मार रहा था। भाई सेंटर Nice हो गई one. क्या? उए यार ये कैसे ले गया भाई? अरे यार लक खराब था अपना ये मैच से। भाई यार रुक जाता। भाई वो गोल जा रहा था नहीं जा रहा था कि डिस्ने नहीं मारा है? जा गोल जा रहा जा था, जा रहा था, जा रहा था। अच्छा जा रहा था तभी तो नहीं हुआ। ऑपोजिट तो मेरे पापा के, ओपी तो मेरे पापा का नाम था ओम प्रकाश। ठीक है भाई, बंद कर रहा है मैं रॉकेट लीग। जा रहा है। मैं यहाँ पे खाना खा रहा है, तब तक आई थिंक कुछ वो प्लेन चलाएगा मैं। चलो मैं भी जा रहा है। अरे जीएस एटीएस खेलना है क्या? कोई और गेम देखते हैं बाद खेलते हैं में। थोड़ी देर। कितनी देर बाद में? बंदों सिटी पे स्काईलाइन मेरे पे खेलूं क्या क्या? भाई, मैं तो सब कुछ खेल लेता हूँ। अरे मेरे बीकन किसने तोड़ा? साला छत के ऊपर भी बीकन तोड़ जाते हैं लोग। सैड भाई डोजो, कैसे हो जाता है तेरे साथ ये सब? किस्मत बहुत अच्छी है, क्या ही बोलूं। भाई साहब छाती उड़ा दी। fuck। इसी गन चोरी करी मेरे। मजा आएगा। मैंने एक गोली क्या चलाई उस तरफ, सालों ने छाती उड़ा दी पूरी। ये विले खत्म कर दे। ये साला चालू चालू टैंक ऐसे छोड़ देते हैं, पड़ी नहीं है किसी अरे को वो टैंक। सर्वर में तो मूवी चल रही होगी शायद। सागर मेरी स्ट्रीम देखना। प्लेइंग एनी मोर गेम। यार बगल में बंदे आ गए हैं बट इनको पड़ी नहीं है वहां पे। क्या कर रहा है दिव्स? लेट्स सी दिव्स क्या कर रहा है। हील कर दो, हील कर दो। मी प्लेइंग सर्वर। क्या घटिया गन है ये, कैसे? क्या घटिया गेम है ये? उफ ठीक है भाई। ये सिटी वो है, सिटी बिल्डर टाइप। सिटी स्काईलाइंस फ्री मिला था बिग बेस से, अच्छा वो खेल रहे हैं, घटिया गेम खेल रहे हैं। बिल्डर सिटी स्काईलाइन से ज्यादा अच्छे रिव्यूज हैं इस गेम के। कौन सही सी? बात है, क्योंकि Civilization भी सिटी था। स्काईलाइंस के तो रिव्यू बॉम्ब हुए थे ना। ज्यादा सिटी स्काईलाइन चला देता हूँ, इतना भी रो रहा है। मैं आता जरा 2 मिनट में आ रहा हूँ। यहाँ पे सब स्नाइपिंग कर रहा है ना, वहाँ पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। Let's go. क्या घटिया स्नाइपर उठा है मैंने, एक शॉट कनेक्ट नहीं हो रहा।
लग रहा है उसे। ये हुई ना बात, एटलीस्ट कार 98 तो चलती है भाई। कौन सी घटिया सी स्नाइपर मिली थी मेरे को। साला बढ़िया खत्म हो गया, साला केडी भी अच्छा रहा। फर्स्ट मिशन भी हो गया। इसका नाम रिपेयर, टैंक रिपेयर करने तो आया नहीं। Put egg in the right place. Achieve 1 multi kill using explosive. अरे यार कौन सा हेलो, बात कर रहे तू? कौन कौन है डिस्कॉर्ड में और कौन कौन भाग गए? क्या बोल मैं रहा है कह चीफ? रहा कौन सा पाथ कर रहा है तू, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट? कौन सा पैक? पाथ पाथ टाइडा फोर्स पाथ पाथ। वो तो सभी कर रहा हूँ मैं। अभी मेरा पहले वाले तीनों हो गए, अभी डैमेज करना है 3000, उससे आधा हो गया। मेले वेपन किल करना है और एक मल्टी किल करना है। चलो इवो जीमा आ गया ब्रेक। इसमें मल्टी किल तो नहीं होगा, बट इसमें अपना कर सकते हैं हम। ये मल्टी किल तो नहीं होगा, दूसरा वाला कर सकते हैं इसमें। मेरे को कोई बता दो ये गेम क्यों नहीं कैप्चर होता है इस पे आसानी से? इस गेम को मैं अगर अलग से स्पेसिफिकली कैप्चर करेगा तो क्या होगा? ये गेम कैप्चर, क्रिएट न्यू, MSFS, कैप्चर स्पेसिफिक विंडो। वो अब कैप्चर हो रहा है ये। डिस्प्ले कैप्चर अभी के लिए ऑफ करो, MSFS ऑन करो। इट्स वर्किंग फॉर नाउ। कोई है क्या ऑनलाइन? उफ, ये हाउ टू लाइक जॉइन दीज गाइज एग्जैक्टली? जॉइन ग्रुप का ऑप्शन आना चाहिए, कुछ आना चाहिए। और रुको रुको रुको, इन्होंने तो वो पब्लिश किया होगा ना आज का फ्लाइट इवेंट टेक्स्ट। गिव मी अ मिनट। ओके, आज इनकी फ्लाइट चालू नहीं हुई है, उससे पहले आ गया मैं। कौन से प्लेन्स लेके खड़े हैं वो? Ivan and Mario have all turned up. So this is why we have to wait a few minutes. It's like, people, there's a lot of people who turn up a few minutes late. Like me. I think what happens is people start the game at past. I'll be right back. Yeah. कौन सा प्लेन उड़ रहा है? लग तो ये वही रहा है। इसी टेक्स का अब दो आंगा टर्बो प्रॉप। इज इट दिस वन? प्लेन का नाम नहीं आएगा ना? चल मैं स्पॉन होके देखता है।
You know, showing up a few minutes wouldn't be late. It wouldn't be so bad if you could actually set your spawn as somebody mid-flight and it not erase the rest of the flight plan. Hey, Footy. Yeah, he stepped away again. He's got involved in that bath. Yep. Sounded like he's summoning demons in the house. I mean, it's a casual Saturday. What else do you have to do? Except summoning demons. Exactly. You can use flight events to warp to somebody. You can. Wait. After you still have the flight plan loaded? Yeah, if you just load the normal flight plan and start wherever we start, and then go to flight events and just warp to that person. That's true. Oh, I had no idea that was a thing. Yeah. You got to go to the flight events website, click on the person you want to jump to, copy their location, then click on teleport aircraft, and then you paste that little code in. And I have another little tip for you, Nice. Footy. If you go to your profile and to the bottom, so you right-click on foot and mouth, and the pop-up, go to the bottom, and there's a pop-out there that you can just click on to go to the Twitch stream. भाई बच्चे I don't चिल्ला रहे see हैं it, but maybe लॉन्डो that's के because it's me. It might be because it's you, but I'm getting it, and I'm sure everybody else that tries it will get it. And that's what you can say when people want to ask questions about what's your heading, what's your altitude, whatnot. That's true. One answer for all those questions. That only works for people with multiple displays, of course. Or people that know how to switch windows. I like it because it's sassy. Indeed. And we've got some nice weather today. We've got some clear weather and some patchy clouds. Yep, little wind. Yeah, it looks Okay, nice. let me turn this around. It's that aircraft. There's a twin engine just a few planes behind you, but it's twin engine, and it's like a tail dragger. It's called the Goose, G21. Ah, the Goose, lovely. Hello, Shame we hello. can't see it. I must try and get a copy so we can see it. Taxing at like 80 knots. What the hell? I have that plane. It's pretty cool. Yeah. Good evening. I like the L-19 Bird Dog. You get floats. Yeah. Oh, Paula is back. Welcome. Hello. Airline If I use FSA. steam gauges, is that okay? If you don't use steam gauge, I'm that's joking. okay too. Look at all these Cessnas. And then the big old goose in the middle. Okay, so I'm pre-calibrating my autopilot. I'm going to climb to 8,000 feet on this first leg, as it is 50 miles. And I'm going to do it at a flight level change of 95 knots. And I'm pretty much ready to go. So, if we're all ready, can we all spool up, please? Airliners, go. I can see an airliner fly past in a second. There they go. Here he goes. And everyone else in 5, 4, 3, 2, 1. Go, 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 go. Right rudder. I'll decide. I've changed my in-game name.
More Flight Simulator appropriate. Excellent. Was I keying up when I attacked that one? Yep. Yes. Cool. Must have just covered it at some other point then. Oh, this is a beautiful turn, everyone. Yeah, 180 again. Oh, okay. It's almost like, oh, the days are coming. Oh, the days are coming. अभी रुको, अभी थर्ड पर्सन ही चलेगा. And I'm going to be very short and engaging autopilot. Get a little bit more speed. And here we go. So it's bringing me back to the nav line, climbing up at a flight level change of 95 knots, destination altitude 8,000 feet, and Pirates of the Caribbean leg 16 is underway. Yeah, Time for a glass of wine. we have 2 relatively long stretches, and we have 4 or 5 quick touchdowns, and then we have another long stretch to end the day. So we should have some opportunity for low flying and high flying and different directions with the weather as well. So that should be good. Plenty of fuel along the way too. Yeah. Cool. I'm just gonna have to drop my son into his bed, and then I will be right back. Totally. We'll be here. I just Easy autopilot. That was well planned then, you know. align the long autopilot Big old segment with the need to put the kid to bed. I should remember that. but I'll leave it for you. It's an old streamer trick. Yeah. Is he an old streamer? If I use the TV, do you care? I don't know how old he is actually. Oh, the tail. All I know too, is I he's. just realized. All I know is he's probably not as old as me. People want to flex their age. You're talking about Footy's age? I think you mentioned once mid-30. Ah, he's a young, strapping fella. What? We're following a child. I expected him much older. Was this on his first kill? Yeah, I would have guessed 30s. Gonna restart the game for whatever reason. My performance just went down the gutter. Oh no. Well, if it had to happen, now was the time. Close the VFR map. Close the VFR map and take it off the options on the top bar, and it should come back. Well, that's an interesting idea. I've had that happen to me a few times, and that always works. What you doing? What happened? If you notice your performance drops down into like the single digits FPS, turn off your VFR map. I wasn't using it. Is it enabled in the options? Yeah, it is. But I'll try that the next time it happens. Alright. Right, I am back. Sorry about the delay. Guess who's back? Back again. Oh my word. Footy's back. Tell a friend. And Poe's back as well. I was worried about I was worried about Poe. Control Freak, you both disappeared for like 2 weeks. Created a monster, but no one wants monster. They want Diet Coke.
It's hard to fly without a controller, but I can't do the keyboard thing. Fair enough. Well, ठीक है भाई, ठीक है भाई। इसकी कोक खत्म That हो गया। sounded like Red Bull. I'm loving it. भाई की I'm कोक ना खत्म होती है। speed. Okay, let me check I'm DM को climbing DM कर रहा है, मैं खाना खा रहा था। I'll pull myself back down to 95% so we can catch up. Okay. That's why I'm in the goose. I'm climbing at 95 knots for anybody who's struggling to keep up. If you want to know how to set up your autopilot, as long as you've got the navline information in, make sure the compass in the middle of your main display shows GPS with a nice bright purple line. If it doesn't, click the CDI button underneath it to change it till it does. Then you can click the nav button on the left-hand side of the monitor to turn on nav mode, and then you dial the altitude up to 8,000 feet, which will show above your altimeter at the top of your main display. And then what you do is you click on FLC, which is just above the altitude knob on the left-hand side, and that will begin setting up the airspeed that you want to be climbing at. You then dial in 95 knots by clicking nose up and nose down button. Where's the The autopilot target right speed now? will be above your speedometer on the main display, again in blue writing. And then once all that's calibrated, you hit the autopilot button and pray you don't get killed by the autopilot gods. And if you don't know, now you know. It's a hideous. The more you know. I actually didn't know any of that. I've tried to not touch autopilot for the first bit in this game, just to get used to it all. Fair enough. Well, if you do have any questions or you need any help, feel free to screen share, and I'm sure we can help you out. It's much appreciated. You guys are all too nice. If you're flying with Footy, the autopilot is not the one that's gonna kill you. Especially if you try and follow them. It's funny because it's true. They said if they fly with me, it's not going to be the autopilot that kills them, it's going to be me. Why? Well, sometimes I do some silly flying and everybody seems to die behind me. It's like when you get in a taxi and you say, oh, you know, have you had many accidents? And you're like, no, I've seen loads in my rearview mirror. That's basically me. That's a good analogy. I thought that I thought you were mentioning that I'll be trying to make them get everybody happy. No. Don't have my phone, it's just suddenly the baby screaming. It's like, eee, that's Oh, watching. I did that while he was screaming in the bath earlier. And that's like 2 rooms away, and they can still hear him clear as day. Yeah, we're all used to him by now. I'm seeing cold temperatures up here, so make sure you have your pitot heat on, guys, which is the green switch underneath your main display on the left-hand side of your yoke. That'll make sure that your speedometer doesn't get iced up, because we are down to 4 degrees. If we do start icing, we will have to find some warmer air, because these planes do not handle ice very well. Right, so this is the penultimate flight of Pirates of the Caribbean. So the Okay, is final it flight will auto-trimming be now? next Saturday, Yep, it's auto-trimming. 17, where we'll all end up on Palm Beach, lined up, having a great flyby and a bunch of screenshots. I just need to find hide mode and we'll be now. flying up a little bit Hide. of the Florida coast just to kind of wrap it up. But yeah, so this is the last one where we're purely in the Caribbean for the entire route. Are you A bottle of rum. Are you planning anything special for the UK World Update coming up in a couple of weeks? Well, that happens just coming Tuesday, I think, doesn't it? Nope, 7th to 9th. Right. Yeah, they pushed it back. Yeah, they pushed it. So that's interesting, because that would actually work really well for the follow-up to Pirates of the Caribbean. Obviously, I know quite a lot about the UK, so I could do like an in-depth UK tour, and then then we could go off and do something else. But I want to I try thought you Madagascar. might say that. Yeah, I was going to do Madagascar, but I think
maybe this is a good interlude. UK first. I like it. Yeah. Gotta be careful Sounds how good. you say that. Yeah, you do. Yeah, especially after this weekend. What's up with the UK first? Well, not in this channel. I don't understand. Talk to me about it later in my own private Discord. I'll invite you all. Okay. This server has rules, mine doesn't. ठीक है भाई. An airplane with an emergency Brexit. What? Anyway, so you'll notice in the event text, you obviously have all the waypoints and server information and stuff, which is super useful. Underneath that, you'll notice a Twitch stream. I am not in any way looking to monetize Twitch. It is simply there as an additional resource to assist in these flights. What I've done is I've put my main flight display on so you can see what I can see. But I've also put my PFD, my MFD, and my VFR map. So you can see where we are, how fast we're flying, what we're climbing to. You can see all the autopilot configuration. So if you have any questions, that is a really good way of getting access to the information if you have the ability to see the Twitch stream. If not, that's fine. You can just ask in here or the event text channel. That's fine too. I am also streaming into Discord, but that is only my main display, so it's not going to have all the details. Oh, did you Twitch? Sorry? You just disappeared. I think you just flew past me. There you are. So I had to unplug my yoke and plug it back in, and my game froze. Is there a way to make it continue? From my experience, no. Awesome! Though we will be at the next airport in about 13 minutes, so... Wait, hold on, I think we're in luck. It just started back up. Oh, fantastic. It's a miracle. I've had some of those long pauses before. Oh, and I see a Boeing nosediving at the moment, so yeah, I'm back. Balloonies are running the asylum. You said we wouldn't be political. That's barely, come on. Right. I might have to go for a minute here. Oh, I was thinking about pointing my plane on autopilot in the general direction and see where I'm at when I come back. Probably not a bad idea. I'd probably slow yourself down to about 100 knots and just Yeah. point yourself in the direction. And we'll touch down and take off, and we'll obviously do different speeds, but... I wonder how it'll work out. It'll be interesting. If anyone's not running auto mixture, they may want to think about leaning a bit. Yeah, I'm already down to 53%. But good shout. I'm just so glad that this plane you don't need to manually balance tanks, because that... Can you imagine doing all these flights like in the A40 where you have to manually keep turning on that pump? By the way, your altimeter is not set correctly. Oh, right on. Thank you very much. 30.19 inches. And interestingly, as we've climbed above the clouds, it's actually warmed up a bit. Oh yeah. Yeah, that's that's weird. I guess the shadow effect of the clouds, or passing through the clouds where there's lots of vapor, has more of a cooling effect than what the altitude has by having less dense air. Well, the live weather is also a bit weird sometimes. I had 15 degrees in the snow. 15 degrees in the snow, that's a bit weird. I was about to say also, especially over the oceans with cloud layer above it, after the light that gets through the clouds, it bounces off of the ocean and then just kind of bounces back and forth between the clouds and the ocean. So
tends to be a little warmer, which is why tropic regions are a little toastier. Easy भाई ने पूरा explanation दे दी. But Earth is also weird sometimes, so who knows? ठीक है भाई. So is Microsoft Flight Simulator. So I'm setting destination altitude to 7,500 and I'm backing off 80%. And I'm going to allow people to catch up because I don't think they're going to have time to get to 8,000. Given that we are only 23 miles from destination out of a 50-mile leg. Where are you setting destination height to? Just about to 8,000. Only about 400 feet. 7. Actually, I thought I was setting it, but it didn't seem to kick in. Okay, there we go. 7,500 feet. Target में मैंने भी 7,500 रखा है. Will it climb though? Let people catch up. Fly high is lost the plot. It's not going So up. what is our wind direction up here? 7 knots from 2-9er. So, assuming it's the same at ground level, let's try runway 28. Full stop landing. Copy, full stop. So, on a 172, does anybody know on a glide path how many feet do you drop on the average mile? I thought it was 300, but I might be wrong. I did not. It all study for this depends on quiz. your ground speed. I think it's like half your ground speed. So if you're doing 100 knots, it's going to be 500 feet per minute on a 3-degree glide path. ये stall मारेगा. Okay. Sorry, are we talking per minute or per nautical mile though? Per mile. Right, that'll be a fixed value that I should know and don't, so I'll get back to you. Kiddo. I'm just thinking because we're coming up to 20 nautical miles out, I thought it'd be a... Yeah, more than A good way to do descents like that, if you do say 1,000 feet per minute, you've got 8,000 feet to drop, so start it sort of 9 minutes out. But then, of course, you increase your speed, don't you, when you descend that rapidly, so that'll actually decrease the amount of time. If you throttle back. True, yeah, you do need to keep the speed consistent, but yeah, maybe don't descend at like 160 knots or something. I'm just reading a paper from the FAA, and it says for the 172, it's 1,000 feet per 1.5 nautical miles. Okay, so that's 650 feet per mile. So 10 miles, 6,500 feet. Hey, how do you turn autopilot off? I'm wondering if mine automatically kicked in because my trim keeps just going to max. Zulu. Yeah, so if you click on the AP button on the left-hand side of your display, to know if it's turned on as well, if it, in the top part of the PFD, you'll see an AP in green or red usually. If it's in green, it's on. Okay, let's... All right, it's in yellow now. Thank you. Awesome. I'm going to dial in 1,000 feet. And You can avoid this behavior when you're not having alt active while you're engaging AP. I don't even know if What are it we was the descending AP at? because what in the world? How am I in front of these guys? Did you spawn in on someone? I did not. I did unplug and plug my yoke back in just because it was giving me this issue earlier. So Yeah, that's not the yoke. That's strange behavior of the autopilot. Very strange it's behavior. blinking red right now. It's green. that's I'm going to off. disengage. so red or yellow means it's not on. So I'm descending flight level change at 100 feet, and I've throttled back, and I'm just gliding down to 1,000 feet now. I used to notice when I spawned in on someone,
the autopilot was sort of off, but not completely off, and you'd have to hit the autopilot off button to sort of get proper sense out of the aircraft. There is also the flight assistance stuff. So if you hit escape and go to the flight assistance menu under, I think it's piloting or navigation, there's things like auto trim and things like that that can really make it awkward to fly. Best glide speed for the 172 is 65 knots. Okay. Well, I'm descending at 100 knots, and it's working out to be about 1,300 feet per minute. Yeah, you don't need to worry about best glide speed for descent too much. That's mainly for if your engine stops working and it's working out how far you can go. Yeah. बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं लॉन्टे. And I hope that nobody's engine fails. But if it does, we'll have a good laugh, eh? Depends who it is. How the hell It's that is airline, my or it'd be a- engine at 0% and I'm still gaining speed and just passed by foot? How? I haven't... Are you in a 172, yeah? I'm in a 172, like right in front of you. What is your VS? 1,500 right now. So you're descending too quick. So I'm keeping my airspeed to 100 knots, and I've stopped my engine, and I'm just letting it keep me at 100 knots by increasing my rate of descent. हमें भी यही करना है. Where did skydive go? So you could probably fall back a bit if you set your flight level change to 95 knots, but now it can fly faster. Are we dropping any fast? Oh भाई vertically नाम देख लो लोगों के. Which runway are we going? 24? 28. 28. Oh yeah. Though saying that, the wind has changed direction since we've descended, so let's have a look if we have a better runway. 10 would be better. Yep, runway 10. Switching to For the runway wind, 1. yeah. जाओ bro, dive में जाओ तुम. So we're going to fly past the airport and then come back to myself. Oh, is it normalizing now? It's not even diving, it's just normalizing. Right or left, Padan? Left. I'm going to change my heading to 310 in 5, 4, 3, 2, 1. Changing heading. Heading क्या है? Actually, quite nice descending at a set speed. Heading. I don't usually do this because ये CDI क्या होता है यार? मैं I CDI think I का usually keep on too much throttle, and you end up descending or climbing and descending or climbing. Never really descend. Hello, क्या कर दिया मैंने? $310 degrees है ना? 310 कर दिया मैंने अब, and let me increase some vertical speed more. क्या भाई? तो 1500 फीट तक पहुंच गए लोग तो. आओ. Okay, I'm increasing my throttle now. Anybody seen Sky recently? Which sky? Skydive. Oh, he was here when we took off. I'm sure of it. Oh, he was here until about a few minutes ago, and he was, you know, exactly on your wing as normal. And then I lost complete track of him. Well, just
Everyone, I'm just going to have a moment of silence to remember skydive. ठीक है भाई. He obviously was unable to maintain his position on my wing. His parachute failed to open. So this airport services this island we're just flying past, right? And you'll notice there's a nice couple of beaches and quite a large town on this sort of second island, right? And all over to the left-hand side you can see quite a few buildings. And it seems like the airport is built on this random, really long, thin island, which is like just a glorified sandbank. So I don't exactly know how they're going to have a runway 10 unless... Hold on, are there two different runways on two different islands? Struggling to work this one out. No, they're crossing. They have two runways. Yeah, there's two big crisscross airliner. runways. Oh, that one going like 60 degrees through to 220 or whatever is absolute garbage. Yeah, it's unmarked and rough. Yeah. In fact, it looks like there's big metal bollards on it halfway down. Yeah, it's like buildings or something. Wow. Well, I'm glad we're coming in on runway 10. Tell there's bollards on it from this distance. I'm looking on Google Maps. Ah. Yeah. And the place we're landing is the Walker Cave. It's a bit like Peter Cave, different. Crisps. Hey guys, is there a way to display your trim on your display? No, but if you go into external view, it shows it on the bottom right corner. Right, yeah, I wish I could put it in the cockpit. I think Some if you have- aircraft do. Don't think this one does. But there is an indicator next to the trim wheel. Yeah. Yes. Online. On 0280, okay. You're heading 280. Plane overturned? Feels like it. Okay, I'm gonna go 290. I'm not happy with 280. Yeah, we got 280 away. Runway 10, 100 degrees, plus 180, 280 should add the power to it. Add the power to it. Yeah, there is no skydiving. The only explanation is obviously his demise. Lost his internet or lost his computer? I mean, it's basically the same as death, right? Yes. Let's be fair here. We're all into computer games. We're all here on a Saturday night playing computer games with each other, so... There's a triangle of requirements, right? It's sort of like food and water, shelter, social interaction, or underneath food and water is Wi-Fi. Yes. Saturday afternoon over here. Fair enough, fair enough. You have an excuse. It's too early to drink. No. Whoa, I didn't say that. But we can't talk about drinking anything other than water in this channel. Or Coca-Cola. Did I ever Of say course. Orange juice, very good. Orange juice. Water And filtered no to the finest of Scottish peat. Beginning a turn. Doesn't let Glenn go rangy.
I'm just casually texting on water now. Do we have a true heading on the runway? Yeah, probably about 105. Roger. Undercarriage down. First stage flat. I mean, if it was up, yeah, I'm probably. the only one that has to worry about undercarriage around here. Stage flat. I'm still texting on the water towards the airport. Ouch. Oh, the sorry, my God. For fly high. Oh no, the Boeing. It's unfortunate, but he took it for the team. Little Not Nap enough Nap. speed kills. Little Nap Nap has 104 and 264. Or is it 8? 284, sorry. I think I'm flying too slow for everyone. I find it really cool they've modeled buildings here that are on stilts. Really? Wow. Yes, I can see them in my view. Pretty cool, I must admit. Buildings on stilts. Okay, backing off on the throttle. Vertical speed. 6 feet per second. Applying brakes. Nice landing. That was pretty good, I think. I don't think we need fuel here. I'm only down to 40%, so I think we should ठीक है भाई 6 feet per second. turn around, get back on runway 10. All right. And get ready for the next leg. Well, I'm not too far off the plan, but I think we're a little ahead of the game. We've just touched down at Mike Yankee Alpha Whiskey. Oh, the first one. Yep. Yes, sir. Are you Maybe close I'll to just. the second? Yeah, I'm actually closer to the third one. But, Golf I Mike? mean, yes, sir. Well, you can take a shortcut back towards us from there, can't you? So. Yeah, I might actually just circle around in the middle of the nav line there between the two. We're going to be doing this next leg at 4,000. क्या है इसको घूम जा प्लेन घूम जा Apparently now Timothy's decided to only change 5 derivatives of 1,000. Are you sure why? Monster, are you okay? Yeah, what is going on with this thing? That was odd. I'm floating in the water, okay. Yeah, look out for the right-hand side of the runway if you're coming down towards where... Yeah, I just said look out for the right side of the runway if you're coming down, taxiing down. अरे ठीक है भाई A320 उड़ा लो यहाँ पे Yeah, it looks dangerous. Looks like I'm building a wall. है तो ये सिस्टम जो ये plane उड़ाएगा उसको almost 6 We haven't taken off yet. Not yet. They're I'm just getting stuck in on. the mud here. I can't do forward motion. Oh, you might need to slew up and hit Yankee. My plane somehow keeps accelerating. My engine was. Okay, we are
pretty much here. Let's explore the paradigms. I think we should say airliners go. I just want to watch fly high crash into water. Oh, that's unrealistic. That's complete modding, that is. Right, okay, and everyone else, 5, 4, 3, 2, 1, go, go, go. Oh, don't be like me and make sure your flaps are up. Good. And mixture full. Trim and take off position. That was a bit of a sharp corner, wasn't it? Yeah, thanks for that. Oh, it's lovely at the harbour just what you can do over. Is this all coral here? Oh yeah, I guess you guys are just still a ways away. What are we climbing to? 4,000. Angels 4. Flight level 40. But not flight level. Because we're using the barometer rather than standard flight thingy, the Jiggy 2993, right? 92. 92. Ah, close. Close enough not to matter. Or in Britain we use QNH, which would be 1013. What's that saying? Close only counts in horseshoes and hand grenades? We're in Britain. Take it away. The nuclear bombs. Yeah, I'm going to be climbing at 90% bottom. So you all can do your thing and fall back, not fall behind. Okay, bye. Current destination is Mikey Yankee X-Ray Zulu. Estimated time of... What does ETE stand for? Estimated time en route. Entry? Oh. En route की En route, I think. En route. On route, yeah. I could be wrong. Either way, it's the gist of it. It's estimated time en route. ETE is the American time remaining on that leg for the entire flight. Control freak. Nice name. Yeah, Terrell. Freak. Commonly referred to as ETE, the estimated time en route. Yeah, you're right. That's French. I think ETA is a sort of specific time, like 3:05 or something, and E is 20 minutes. The A is arrival, estimated time of arrival. It's great having 50 co-pilots. But isn't Q and H isn't a unit, is it? Correct, yeah. QNH doesn't specify unit, it just means question nautical height. The actual unit depends on where in the world you are. Are we just doing America is inches of mercury, basically everywhere else these days is the hectopascal. Which is, of course, superior. Yeah. Hey, we use metric in America for the most important things. Hey, we know. We know. For Bullets. guns, ammunition. Bullets. Well, I mean, it's going to be hard if everyone else in the world uses metric or using imperial, and then you try to shoot with bullets that are calibrated for imperial. You're never going to hit them because they're in metrics. Yeah, it's always a miss. That's why all our bullets are calibrated in imperial. Okay. ठीक है भाई. Bullets से I mean, all the scientists and everything use metric and then convert it to imperial. Short magazine, 8mm.
divisible by 10 is way too easy for us Americans. Listen up. I mean, NASA use it. When you have the average IQ of 100. Said we wouldn't get political. Where did he go? You just vanished again. IQ is a self-calibrating scale, so the average IQ is always 100. Ah, nice. Yeah, okay. You go. Now, where have you gone? I think I'm inside you. Oof. Oof. No, I think he flew into the back We're of inclusive here. We're inclusive here. Don't you know? Only the interpretation was. If you didn't know, you better ask someone. It was his tone of. We were talking psychologically, of course. Of course. Of course. We can all have a mind. There's quite a lot of weather around here today, actually. There's lots of buckets. It's almost realistic. What is this madness? They're going to get it right sooner or later. You mean just with luck? Right, a broken clock is right twice a day. You've been waiting to use that all day. It's one of my faves. Hey, there's Control Freak. Control Freak was out for the group flight yesterday with Twitch. MSFS, yeah. I was in that briefly, but there was I still so find many it very doubtful because there's no interaction between the flight and the flight leaders. I agree. They're on their own thing and they don't give a rat's butt about anything that's going on with the people that's following them. What event is that? The official event. The official event. Yeah, I think that happens when I'm working. Yeah, you can only. You didn't miss a whole lot. It was a pretty flight, but you can go do it yourself. They're basically the victims of their own success. There's so many people in those. Oh, those are the guided tours, right? Not guided, just follow. Not guided. Just Okay, follow. yeah, I think I flew in one of those. I went on one around Rome, and they were like telling people about the history of every last brick. It was just too much. So about halfway through, when they were landing in the lakes with icons, I just flew off into the distance, crashed into the ground, and was like, "Sorry, I died," and left. I think I was in that event as well. I think I crashed landing at the Coliseum. Nice. I never rejoined. I like the interaction with people, and you know, I think just listening to people and then flying around, especially when you can't see the leaders as well. Like, if you could all see the leaders, it would be a little bit different, I think. But yeah, it is what it is. You know, a lot of people really love it. It is what it is. I was on one flight in Africa to what's the mountain in Africa, the big one? Kilimanjaro? Yeah, Kilimanjaro, and that was a great experience. CDL was the leader, and he was there on a tour and climbed the Mount Kilimanjaro, and he talked a lot about different things they saw on the climb, and it was great fun. I lost CDL after the second touch and go. They really need that fix that Footy is promoting with his post on the forum. Definitely. Could somebody link that into event text, actually, for anybody who hasn't gone and voted for it? Yeah. Good idea. I would, but I don't want to back anymore. No, you're not bragging, man. We really need that. We need No, not brag, lagging. Oh, okay. Yeah, I haven't seen it. If someone could link it, that'd be great. Yeah. But the basic idea behind it is give us a way that we can always see someone instead of just 50 random planes.
and that means when the events get bigger, you'll still be able to see the flight leaders, and you'll be able to coordinate stuff better. Like a Twitter follow, but within game, you know. So this island here, on the left-hand side of it, I'm going to give you a guided tour now, has got something called the Gradic Line, which passes through it. It also passes through a bunch of other islands, and it's famous for some reason I haven't really fully understood. So there you go. I linked the dimension thread in the event text channel. Oh, thank you very much. Thanks. So that'll be gone by tomorrow. Vote early, vote often. Indeed. Got a nice formation up here. Yeah, we have. Sometimes it gets really tight, and we'll have like 3 layers of 20 planes all in very super tight formation. It's insane. I'm gonna Just land like this. I'm gonna throttle back to 80%. We actually did a ridiculous landing on one of the world tours, I think it was. We all came in. No, it might have been the last. Japan. Was it Japan? It was the last one in Japan. I know. We all kind of came in together, and it was like everybody was touching down within seconds of each other. It's awesome. So yeah, on the left-hand side of this island, there is a line. It's not a physical line; it's a map line, but apparently intersects lots of other Caribbean islands. It's called the Gradic Line. Oh, Gradic Line. Sorry, not Gradic. Sounds like Star Trek BS to me. ठीक है भाई. If you see this sticky out bit on the island towards the right-hand side, the really long thin one, on Google Maps, if you go on satellite view, it's cut in half because there's a cloud sitting over half of it. And I'm not kidding. This is why we have Bing Maps, not Google Maps. Oof. Just one island. Oh, he's gone again. It's a bit worse today than usual, isn't it? Yes. What can I do How to do you fix? overcompensate when that happens? Yeah, well, it's difficult to know whether he's done it on purpose and put his foot on the brake, in which case we have to slow down, or he's done something on Twitch, in which case we just have to grin and bear it, and he'll come back in a minute. Oh, I don't even know if anyone's talking on Twitch. I don't have any Twitch windows up. I've hit the preview and everything because I can't be focusing on too many things. I'm focusing on you guys. That's good. Glad you added it, though. It's really useful. You finding it useful, yeah? Absolutely, yeah. Fantastic. I'll go on the left-hand side then. Everyone wants to go on the right. Oh, I did slow down to 80%, which might be why you're having issues. Hopefully not. I'm doing 104 knots ground speed. Can I make it hold altitude now? That's the question. Oh, well, that's interesting. The plane on my left, there's a pair of legs hanging out the bottom. Yeah, I got that on the plane on my. I've had that for about half of you. Yeah, there's a few of them with that. It You happens. don't have the livery. Would you say it's like legs 11? That's probably more of a British joke. We are 25 miles out. We're going to come in on runway 14, and it's going to be full stop. Oh, the water down here looks absolutely stunning. Oh. Yeah, check out our shadows. A little arrow. You know, I've just recently gone down to medium settings because I got a new ultra wide, and the graphics are still just as good as on high. What GPU and CPU you got?
So I have a gaming laptop with a 1660 Ti. CPU is 9700. i7 9700, I think. Okay. I would have thought you could have handled. Well, I upgraded to a 1440p ultra wide, so going from the 1080 to 1440 is really what killed it. Fair enough. Out of interest, as far as things to stream on Twitch, is there any of the 4 displays that I stream that are not useful or you're not referring to? I thought your selection was pretty excellent. You have a tight and a wide head, heads down. You got the main panel from the plane showing altitude, speed, course, everything. And then you have the visual. I don't know how you could improve on it. Okay. I was asking because if I can reduce the number of pop-out windows, then it reduces lag. If anything could go, I guess it would be the visual one, the big one. Okay, so maybe go for a larger VFR map. But that won't allow me to reduce the number of windows because I need to have my flight view. Well, why not just have that event site up on your screen? It's one less pop-out window. Oh, you mean instead of like the VFR map? Yeah. That could be an option. I'll play around with it during the week and see what I get. I'm planning on trying to overclock my RAM on Tuesday. Put an extra 200 megahertz in there, just to see if I can release some CPU load. But I'm going to run it then. I'm going to do probably a 22-hour flight just to check its stability. Hey, Frank. After you looked at my setup, if you remember it all, would there be any sense in going to 32 gigabytes? I mean, the game will. I've heard that 32 gigabytes from 16 smooths things out. From what I've looked into it, I thought this game was more CPU bottlenecked than anything. Yeah, but if it has to go to the page, it might cause a little micro stutter. So I went from 32 to 16 to 32, and it has made a difference on my rig. So I've heard a lot of people say that. Going to 32 gigabytes with my computer, I can go from this 224 speed memory up to 3200 speed memory. I mean, if you're going to increase the memory speed as well as RAM, then absolutely. Yeah, and going from single rank to dual rank would also be a massive improvement. Massive improvement. But the most I've ever, my game at the moment is using about 6 gig. But if you have high resolution textures being rendered, then it'll use more. The most my game's ever used is 21 gig. I've heard of people having more, but that's because they're running like ultra everything. Yeah, that was that was more of a memory leak. I was at 26 sometime, and yeah, that crashed my game. So, yeah. If anybody is interested on Tuesday, probably in the morning, I'm going to be doing a flight from London Heathrow to what's it called? Is it Queenstown in New Zealand? My God, what? That's a long flight. Queenstown. That's how you get the hours. I'm in. I'll be in that one. I can join. I need the landing time to be on Wednesday morning, before I start work. So I'll back calibrate when the takeoff time is going to be. Is this going to be a round trip or? No. It's 19 hours there, isn't it? Come on. It's
It's 18 hours 45 to Sydney, so I'm expecting more like 21, 22 maybe. Well, I've got a good co-pilot. Live weather, lifetime? Live weather, lifetime. No autopilot, right? No, of course not. Yeah, manual, upside down the whole flight. I'm going to be taking off. 172? No, 787. We're I'm going going to fly the Icon A5. Yeah, great idea. Taxi in the water. Well, if I'm not doing anything on Tuesday, I might. Roger. Where's Foot gone now? I slowed down. Yeah, it's gone. So was that a deliberate one, Footy? Yeah. Yeah, I just slowed down on purpose. I also started descending. I'm just going to wave to you guys to stay way up there. Oh wow, there's loads of you up there. This isn't a super cool view. This is what you guys get to see. Wow. So direct in on 1-4. Yeah, direct in on 1-4, full stop landing. It's pretty straight in. Yeah. And there's fuel there. So, given that the descent on the previous 8,000 down to 1,000 was pretty much at 1,350 feet, I just set my vertical speed to my neg 1,300, and it's sitting me at 102 knots descent with my engines on full off, well, to spool back. So I guess it's I mean, it always seems easier to set vertical speed mode to me. So if you're only going to be descending like a set distance that you're used to, maybe you would just dial in the vertical speed mode rather than the FLC. Yeah. Vertical speed for descent and FLC for ascent. That's the way it is in the King Air. I know that much from FSX and Flight 1 King Air. Sometimes I use the pitch hold and pull back the throttle too. I haven't used the pitch holds yet. Well, you ever sign out of Xbox? No, never. Oh man, what a pain. You just click the center button twice, over left once, A twice. Or you're talking about signing off Xbox in this game. Yeah, and then it brought me back to the screen. It would load the game, and then the Xbox thing would come up, and I couldn't click on it. Oh yeah, because you're not in the sandbox. You have to reload your Windows profile. Yeah, I did. It just took a minute. Oh, the shadows are pretty cool. The lighting in this game is really what takes a game that is okay and makes it astonishing. And it's not doing it with shaders, so it doesn't play the same heavy-handed changes throughout the whole day. Yeah. It's actually doing lighting calculations. I only have one problem with the graphics, because I think mornings or basically sunrises and sunsets are often too reddish when in real life they're not. It depends on where in the country you are, to me.
where I am now, I never see red sunsets and sunrises like this. But where I grew up, yes. And that was probably because of industrial pollution that made the sunsets so beautiful. Yeah, but I get like very red conditions even though it's overcast. Well, that's particularly when you get the red conditions in real life. Yeah, I think it is. Yeah, I get red and purple skies here all the time in Charleston on overcast days. Yeah, but I use lifetime live weather where I live, and it's absolutely gray outside. But then the game, it's absolutely red. Footy I caution think speed. the bias is because the developers probably are in a major French city with major French pollution, and so they look outside and they see it like that. This is all over the entire world applied for, what sunset looks like. To be fair, I think maybe a little bit of artistic license was involved. And Absolutely. They kind of went. There's another effect, which is, like you auto white balance on a camera. There's something about if you walk into a tungsten lit room, all the whites, you still know that they are white. It's just lit with an orange light, and your brain sorts it out. But if you see a photograph of that, it just looks orange. So for some reason, your brain can fix it in reality, but not in a 2D rendering, and maybe it's something like that. Footy speed, you're close to stall. I'm fine. I struggle with painting miniatures, and since we moved to these new lights here in Germany, it's horrible. These LED lights are just horrible to paint under. With a W. True. The cars, when you're driving the new headlights too, you can't see anything anymore. Everyone's blinding each other. Oh yeah, I'm blending everyone. BMW? No. To be fair, BMW drivers just sit there with main beam on anyway. No, they use the auto high beam, and I think it works just fine when it doesn't. Yeah, what I it have is, that too in my Volkswagen. It's LED matrix whatever, and it's you can essentially always drive on high beam, and it will automatically change when there's a car in front. And, Just don't do it on the highway. Truck drivers hate these. yeah, I know. I don't do it. I think with BMW drivers, they save the power that they don't use on the indicators, and they can put it on the headlights. Nice. Actually, BMW drivers have actually become a bit more fond of their indicators since they have these little animations going on. They have animations. Cool. I heard BMW came out with a car that just runs off hot air. Oh, that's what all cars run off, technically speaking. It is actually. Hot air pumps. It is. It's the heat expansion is most of the power. It's not the explosion, I guess they're kind of one and the If you ever same. feel useless, just think of the guy who installs the indicators on BMWs. Well, it's a nice habitat for spiders to build their webs, right? Yeah, that's it. Keeping mechanics employed. As a former Mercedes driver, I just follow the star in front of me. Like a target. Target, yes. It's a sight. Right now I'm driving a Jeep Wrangler. My brother gave it to me for free. I think we're being a little bit unfair to BMW drivers, but it also applies to Audi. Perfectly fine. I had a 7 Series some years ago. That thing could drive. I had a 3 Series once. It was a total pile. My Mercedes almost sent me to jail, so I got rid of it. I bought a Volvo. What did you have? I had SL55 AMG. Oh dear. Wow. Damn, that's some money too. Yeah. I picked up a couple of tickets in that, and I had a 180E from '92. Oof, no. The thing was the most reliable thing I've had for years.
was already quite old. It was given to me by my wife's best friend's father, because he was a test driver for Mercedes. Nice. Yeah. Our company car policy is Volkswagen or Audi, and Audi is just get too expensive. Isn't VW Australian? What? No. What? German? I thought VW was Australian. Oh, hold It on. came from Hitler himself. Yeah. German car. People's wagon. What's the Australian car brand? Does Holden? Holden. Holden, yeah. Anyone here good with elevation data problems? Press B. What do you mean? I'd like to know how to fix bugs, because I mean, if you look at my stream, I have some minor issues. What with the landscape? Yeah, with the landscape. Maybe you should reset your rolling cache. I already Clear reset it, and clear deleted. your cache. Yeah, I've already done that. Give me a second. We can take a look at. Yeah, we'll take a look at What the happened? event. It said I'd hit the water when I landed. It was landing just perfectly. Interesting. Weird. Oh, finally, मेरा Were कुछ you in the पता airliner? No, I was in the Goose. So Somebody with a low mic. Somebody with a low mic had a question. Your mic's low. Hmm? Somebody was talking, but it was real low. I just made him out. Are you still approach? Quiet now. Well, I'm not hearing any mics. I'm just wondering if anyone knows how to fix the problems with the landscape. Yeah, we can take a look with you after the event, but we're just flying the. Oh yeah, you're doing an event now. Okay, yeah. Yeah, that's why there's 50 people in the channel. Yeah, of course. Yeah, okay. Yeah, just join the channel just to find some people that might have a chance of helping me. All right, thank you. There is actually a mod. Where are we at? We're just touching down 0 feet per second at Micah Yankee X-Ray Zulu. They look pretty smooth. Are you using flight share to know your landing speed? No, it's Flight Events Client. F3 reverses the throttle. I want to pick up some fuel from here, so I believe that's at the start of the runway, right? Yeah, on the left. Yes, it's down. Yeah, the way you came in, it's on the left, midfield. Midfield? Okay, not in the parking area at the start of the runway. Correct. Yeah, in the parking area. But that's not. No, that's not at the start on the. You mean at the start on the right side? Yeah. It's midfield. Yeah, it's on the left side if you're It's on the coming left down. side if you land. Left side of the runway, midfield. Okay. The way coming you up- landed. Just look for that big blue bus that's just driving around in circles. Why do I not find that? Wouldn't it be really funny? Okay, found it. The day that we finish the Caribbean tour, if they announced a Caribbean graphics update. Yes. I think they talked about a French update, a France update. Sorry. Yeah, Well, it would France, make sense. Belgium, Did Luxembourg, you and the Netherlands. see the Concorde in that one picture? Have they announced that? Yo, I got Next, fuel. not the next one, but the one after that. There's a So- Concorde coming too. So which countries? What the hell, Concord? Belgium, Luxembourg, and Oof, France. achievement unlocked. Nice. So Benelux plus France. France is huge, though, isn't it? Yeah. I wonder if they're going to model Mach 1 turbulence. Doubt it. Is my mic getting louder now? Yep. Oh yes. Yep. Alright, better. Question for you. Switching my GPS unit to the next waypoint, it's not, it's sticking on the first set.
So on your MFD, if you click on your FPL button, and then you use your spinner dial to go down and select the next destination that you want it to point you towards, and then at the bottom of your MFD there will be a button which is called Act Plan or something like that, which will activate the plan. Or Act a leg, I think. Activate leg. What is the next airport after this? My flight plan broke a bit. It is Micah Yankee Golf Micah. Alright, then I put it incorrectly. Good. Defiant Plastic 9. Nice name, bro. So far, What altitude are we going to fly out this time? Right, I am lined up on the runway and good to go. What airport are y'all departing? Micah Yankee X-Ray Zulu. Okay. Next And we're going to be leaving on runway 14. Runway 14. I just realised that this is obviously runway 14, but also I managed to taxi all the way down the runway, chuck a 180, end up right slap bang in the middle of the runway on exactly 140 degrees. Nice. I may accidentally be getting good at this game. Trying to get myself good enough so when I try a real simulator, I'll actually be able to fly. Oof. Anybody in here? Anybody in here use touchscreen panels with like the Air Manager program? Not yet. I think Legion might. I know he's not in this channel, but he's on the server quite a lot. But yeah, he's got like multiple cockpits that he's built at home, and I think he's going towards all the touchscreen and stuff at the moment. Okay, thanks. I'll hit him up sometime. Cool. If anyone's having problems talking, it is a push-to-talk channel, which means you just need to find a key, which you press down to be able to talk. So it takes about 20 seconds. And make sure it's not your autopilot button, or else it'll make your airplane fly everywhere, because that's what my problem was, apparently. Nice one. I was toggling back and forth and didn't even realize. Nice. In DCS, it turned out that my push-to-talk fired a missile, and I nearly shot my instructor down. Fox 3, Fox 3. Yes. Oops. Sorry, didn't really cut it. And don't pair it to the ignition. and I just discovered that Discord interprets my button 1 on my throttle and my joystick as the same button. Yes, they're considered a gamepad and therefore the same gamepad. Yep, gamepad 0. Yep. I have that problem as well. It's kind of annoying. Yeah, I realized I was keying up my mic every time I hit the brakes. And I realized that auto hotkey can detect your control surfaces. So Cool. now my throttle is my volume, which is really nice. Okay, I'm going to get rolling from here. I don't see any airliners anymore. Have we still got an airliner with us? Perfect. What server are you guys on? North Europe. All the flight information is in the event text channel. Yeah, jets are actually on Western Europe. Yes, yeah. Jets and airliners fly Western Europe. Same plan, different server. Okay, if everyone can spool up, that would be awesome. And we're going to be rolling in 5, 4, 3, 2, 1. Go, go, go.
Yep. Yeah. You're working. 5x5 is good. I lost my launcher. Boosted by enemies. Isn't it 55 5x5? Not entirely sure why, but It's Oh. 5 by signal, 5 by volume. भाई कितने बंदे हो गए हैं? I thought it was 5 was loud. In other words, your modulation, and the second 5 was clear. In other words, your carrier is strong enough. What are we Right. climbing to? Loud and clear. What are we climbing to? I was actually just going to fly this one. If you want to climb to something, climb to 2000. But I'm just going to wing this one. I'm in the mood for holding my joystick. I agree. It's a shorter leg here. 20 No, it's a long leg. What? 24? So what was 24? The leg. 24 nautical miles. Oh, yeah. I mean, it's a short physical leg. I think they're pointing out that it's a long leg because now I'm flying us somewhere and they don't know where. Shortcut. Yeah, I think nobody sees you. Are they all just flying on the... What's your heading? What y'all doing? Currently heading up towards the coast. I'm just In an flying island. Brilliant. the south coast, sort of just slightly north of the nav line. ठीक है भाई. There you are. Ooh, I'm going a bit quick. Throttling back a bit. Bit of a Jurassic Park shot here, isn't it? Flying off into through the sunshine. Yeah. I went to, no, that was Anaconda. I started to say I went to the Dominican Republic where they filmed some of that, but it was actually in the Dominican Republic where they filmed part of Anaconda, Amazon. Yeah, Jurassic Park was in one of the islands in Hawaii, wasn't it? Oh man, am I having some technicals today? What's up? Having a lot of technical difficulties here today. Your joystick not working. Yeah, well. Just need I- more I joy. did a rolling cache and a bunch of... If you are having like crashing and glitches and all the rest of it, I always suggest stripping out all mods and Yeah, just going to the base game. I deleted every A320 livery in there and it made a huge difference. Yeah, I mean there's like 500 of those, so it would. Yeah. And every time you see one of those aircraft in the game, it has to load that up into memory so you can then send it to the graphics card to render it. So it's just more stuff being sitting in RAM rather than the default aircraft. It's amazing that much code, hey, just meshing. Sketchy. I can only imagine what Waves on Ultra would look like right now. Look at them, he's I was able to get चलते हैं भाई. waves ठीक है by भाई. cranking the wind speed the other day. Oh, you vanished. Yeah, I lost him too. There he is. There he goes. I think I had a little tiny bit of stutter.
Actually, you didn't disappear on my screen. No, me neither. Maybe It it felt depends like, how far away we are or something. yeah, it felt like the game stuttered for me a little bit. It was a couple of micro pauses. Yeah, I was right on your tail. He went straight to the back of me. It's like a micro burst, but going backwards. Well, There we we go, didn't go right back at back. you. You just vanished. Has anyone ever restarted their game, like from a previous day, and you get back in the same plane and there's a flight plan already loaded in there? Nope. Nope. Or I'm back in the Cessna, and I've got a pink line on the navigator, which indicates a route in there, right? Right. Did you set any type of departure and landing site? No, I just set the departure that you guys left out of. Strange. Yeah, I always reboot my computer about half an hour before I do an event. It's the only way I can actually get performance and stability. Because my computer is garbage. No, I didn't mean that computer. I meant you're amazing and lovely and looked after me well for 5 years. That was close. It has, It wasn't garbage. it has character. Well, 5 years ago, it was 32 gig of RAM. It had dual GTX 980s in SLI, two 4K monitors and two 1080s, and it ran everything. These days, it can barely run this sim in medium. To be fair, most computers can barely run this sim. That is fair. Right. Need a 10th gen chip. 11th come out in a couple of weeks, didn't they? The what? 11th gen come out in a couple of weeks. Oh yeah. And they're meant to be like 30% better on IPC. I don't know what that means. I'm pretty new to it. It means that they're going to take the single thread title back from AMD. Oh yeah. I don't know who it is because I don't have names above planes, but somebody has their flaps still engaged. Just a heads up. Don't tell them that. They might be able to slow down before I do my rapid descent. Yeah, I do have one notch so that I can ram the throttles shut and stand a chance of still being on his tail after he's put the brakes on. At this altitude, that's 300 feet. Clever. Yeah, in the world tour flights, I'm known for being a little bit more insane in the sort of flying I do. Yeah, I'm wondering when you're going to start doing some low flying. Is this not low? No. This is beginner low, right? That's newbie noob. Low. You don't want to alienate everybody. That's better. Keep going, keep going. And that's beginner low. Down you come. That's it, you can do it. Better. Hey, radio check, can you guys hear me? Yes. You're working. High five. Oh, that was mean. This is my first time using Discord. It took forever to set up. Oh, well, thanks for getting in, dude. I think being in Discord for the events makes it much more enjoyable, I think. Yeah, definitely. Did you guys link the push to talk to your joystick, or are you using a keyboard key? Joystick. Stick? Okay. I was on my joystick, but again, make sure it's not your autopilot button. Yikes, yeah. Or something equally troublesome. Yeah, that'd be bad. I cheat, I use voice activation. Oh, I didn't know you could do that. Huh. Oh, he's got the power, I'm sure. Yeah. He's the only one. Yes, you can. Oh, the 787's back. Oh, good.
I wonder why guess- it's yellow on my screen, but not on the stream. It's blue on the stream. Because you probably don't have Premium Deluxe and have downloaded the 787, so it just puts a generic aircraft in. Ah, I didn't realize that one was premium. Yeah, it's one of the premiums. If anybody does decide to upgrade, just be aware that Premium and Deluxe both cost about $80–90 each, but the Premium Deluxe costs about $80–90, and it includes both of them. So don't buy the wrong thing, because you're just wasting money. Yeah, it's kind of messed up. They still have the other one on the marketplace. Like, it's got twice as much for, I think, $10 less. Well, I think when I last looked, I think Deluxe was 80, Premium was 90, and the Premium Deluxe combination was 85. Right. So, yeah, don't get caught out by that, because I know a few people have, and it's just really frustrating, you know? Say again, what? So there's 3 expansions for the standard game: Premium, Deluxe, and Premium Deluxe. The Premium Deluxe includes all the things from Premium and all the things from Deluxe, and costs the same as one of them. Well, basically between the two. Okay. No, there's Deluxe and Premium Deluxe. To my knowledge, there's only 2. There's 2 different packages. There's Deluxe and Premium, and then a bundle that allows you to buy them both together. The bundle that allows you to buy them both together is essentially the same price as either one or the other. So there's a Premium Deluxe standalone without the Deluxe? Yeah, there's a Premium standalone, a Deluxe standalone, and then a Premium Deluxe combo. Okay, that is just plain stupid. I know. It made a little more sense. Sounded a little more sense before August, and we were buying fresh, but now people are trying to upgrade. It makes no sense. Yeah. Trying to catch people out. That's what it is. Feels that way. Yeah, it's like, do you want to spend $85 on the Premium Deluxe, or do you want to spend $170 on the Premium and the Deluxe, which gives you nothing more? I would never buy a Premium or Deluxe. The standard version and then some third-party planes is, I think, far more superior. Exactly. You're probably right, but the reason I bought it is, 1, I do love the 787, and 2, it came with London Heathrow, and I would have spent money on both the 787 and Heathrow were they available. Yeah. So, and then I kind of looked at, the average airport price is like 20 quid, the average plane price is like 20 quid, so that's 40 quid. And I was like, well, I get an extra 9 airports and an extra 9 planes for a little bit more. So that is actually true. I don't even know why I bought the Premium Deluxe, because the planes that, like the Boeings that come with it, is just really boring and there's no really sense in flying them. It makes it less fun to fly them when half the other people you fly with can't see what you're flying. Yeah, that's true. Yeah. Agreed. What I don't understand is it's a standard Microsoft product, so just because I don't have the Dreamliner, I should still be able to see a Dreamliner. Yeah, I think the basic models with a very basic skin should be, if it's in the official marketplace, everybody should be able to see them. I understand that you can't see community stuff. That makes perfect sense to me, but Especially considering if somebody uses the 787, they're being displayed in a low poly version of it anyway, so why not include that in the standard edition? Yeah. I mean, 5 years from now, we are all flying in some third-party planes because they are much better than the standard planes, and nobody will ever see you when they don't integrate it. Yeah, it's kind of stupid. I'm flying in a Seminole at the moment, and I'm sure only 3 or 5 persons are seeing me in the plane because they bought it as well. And that's a shame. Yeah, it is. I mean, and from what I hear, and I'm new to flight sims, but they're most of the time built around the third party and community, just in general. That's the idea. Absolutely. And I think Microsoft realizes this too, so it is extra weird that they wouldn't
just let you see it. I mean, I guess you have to download the models. They gotta make sure everyone has it, so that's probably the biggest reason. Yeah, so I can understand the community sort of community mods, but if it's payware in the game, I think you should be able to see it. Plus, it's a good selling tool if people can see it. But I think it will come. I mean, I do feel that the game was released as a minimum viable product. Yeah, you know, absolutely. they are continuing to develop it, as you can see, and the rate of development is actually quite fast. So Yeah. oh, this is a touch and go, by the way. Good to know. Thank you. I didn't even realize until like 5 seconds ago. Yeah. And you tell me that after I made a first circuit around it? Nice. The thing is that even today there are certain bugs in P3D or explain, so I don't know, like, it's just, I think the game how it is right now is really, really good. I enjoy it a lot. Oh, don't get me wrong. I love this game. I love it. Yeah. I never played so much hours in one game. Same. I quit all games. I'm just playing this. I quit Yeah, all I'm getting games. bored before 100 hours, and I have at least 300 in this. I'm already at 900. Yeah, okay. I'm pushing Wow. 8. I bought a switched from, desktop just for this game. I switched from an Xbox controller to a Honeycomb Alpha this week, and I've already logged 40 hours with it. Yeah, Nice. That's believe reasonable. that. Yeah, the honeycomb is amazing. Such a nice yoke. I would buy it again. What is there? What I type think- of pedals do you guys run with? It's called Honeycomb Alpha. That's their yoke. The Bravo is their throttle, and the Honeycomb Charlie will be their rudder pedals released late this year. What do you guys have now, though? Logitech. Same here. Logitech G940. Honeycomb. Master joystick. What is a G940? Did you guys land at that airport? I did a touch and go, and now I'm tracking a road at the moment. I don't know where everybody else has gone. Yeah, I'm on you. Just follow the airliner. I'm not in an airplane. There's a horse and cart going down that road. That was brilliant. That's that horse and cart. Maybe they Go on the road. maybe they still use them on these islands. I don't think we can do a touch and go on that road because of the trees. Are you guys flying on real time? No, we're real time plus 1 hour. Plus 1 hour, okay. Yeah, plus 1 hour. It should be 22:17 UTC currently. Though my PFD is showing 17:16 local, so I'm 1 minute off. But I'll correct that when I'm not about to hit a tree. No, This priority looks is all that. beautiful. It's amazing that all this was generated by AI. Easy for AI. Give it a few more years and you won't even know if you're living in reality or not. Full on Matrix. That's true. Nice. Nice. That's nice. Sponsored by Gates. Maybe it's going to be free, like the vaccine. I fully have plans on being a decker. I think as soon as they have the ability to control people in mass with digital devices being shoved into their heads, I think that'll be free, given out by the state or highly subsidized. But I gotta be honest, guys, I think you don't even need to go into the brain directly. You need to Google smart dust. It's like microchips smaller than salt. Extremely interesting. Yeah, they can't do much. I just can't wait to fly an all-electric airliner.
Yeah, that's on its way. Yeah, who was it this week announced the release of it's like a trainer plane that's all electric? Elon Musk. No. They've had all electric things not for a that while. Yeah, he was trying. That was the idea from Elon Musk to build an airplane. All electric airplane. I don't. You know, guys, Yeah. am I the only one who sometimes asks himself why Elon Musk has a specific way to talk that it's like really stuttery? It's like I see myself in it sometimes when I'm at school and I try to explain a project or something. I don't know. Many people say he's really smart, but sometimes it just sounds really strange, like improvised and. His CPU's just short circuiting a little. He needs to upgrade. Oh, okay. Yeah, makes sense. You can afford it, huh? Called fake it till you make it. Autopilot is not working. It's called fake it till you make it in the corporate world. Right. A lot of smart engineers just aren't good in front of people. Like that's just that's a common thing. You mean engineers don't have social skills and charisma? The lucky ones can, but yeah, I mean, you usually get one or the other. You really need to watch the interview between him and the richest Chinese guy. That's really funny. Oh yeah, that one is good. I can tell you something. I'm damn poor at my job as far as my technical ability. The fact that I understand the tech side and I can talk to the bosses, that's my value. That's my only value. Worth its weight in gold. Yeah, I hire people, and that's the best skill set combination. Just the communication and some knowledge of the technical aspects. Yeah, but you could have enough people who can do the technical stuff. Yeah, I'm a technical project manager, so. Sooner or later, someone has to do the technical. Yeah, I do executive support, so I can talk to people. I'm a bartender. Oh, you Yes. have to be able to talk to people. Exactly. You're essentially a psychiatrist. Yeah, you get everybody back to work the next day without slipping or it. Hey, Daver, can you hear me? Can we slow down for you since we're bringing up the rear? I'm playing this in VR right now, and it's unbelievable. It feels so immersive. I wish my computer could run my headset. It just can't handle it. Yeah, it's very demanding on resources. I tried using my headset. The frame rate. चिल मारने का चुपचाप बैठने का. I heard somebody talking about और ये फुट एंड माउस VR earlier, and they stuck their head out the side of their 747 to look back to look for me. They said it made them feel sick and gave them like altitude, like when you look off a steep cliff and you like feel Yeah. Vertigo. Vertigo. There you go. Yeah. It really does. I can do the same thing. I can stick my head out of the plane, and I genuinely feel like a little sick. Intriguing. Oh my god, I know what this is. What headset is it? Oh, it's the Rift S. If you look below us, right? This is water connected to the ocean, so it's salt water, so it's not for irrigation or anything. This is for people who have a lot of money who want to buy a house and be able to sell their boat straight into their house. Oh, that's really cool. Hey, what airport you got that? Like a sky park. That बता रिसर्च तो सही करके आता है भाई ये लौंडा. I think they do this in Florida a lot, actually. Just I assume they do this in a lot of coastal areas, but I know for a fact in Florida they do. Do what? What we see below, where they have the canals actually going up to the houses, so you can just walk onto your back porch, walk onto your dock, and take your boat. Seen that on Hawaii as well. Also, what airport are you guys at? Never mind, found you. Here in Canada, so they're building a new ski resort in Vernon in the Rockies, and it's gonna have an air park. So you'll be able to land your plane, go into your timeshare condo, whatever it is, and then you'll be able to snowboard down to the lift from landing your plane at your condo. That's so cool.
That is pretty cool. This is how I want my life to end up. Don't we all? Exactly that. Is this a question mark island out to the right? Who knows? Also, Yeah, it hello is. everyone. Hello. The guy who asked for the airport, it's we're about to land on Mike Yankee Golf Foxtrot. Thank you. Thank you very much. अबे देखियो इसकी अप्रोच देखियो डेव्स कितनी तमीज से उतारेगा Is it gonna be touch and go उसमें or बस full पेपर stop? बोर्ड चल सकती है It's gonna be अबे full साले stop. वो तो गेम Also, what planes are you all flying? 172. चल जाएगा ना Okay. I'm going to try and glide in from here. I've set my Right. engine to off. देख ले भाई I am bringing देख रहे हो? the देख रहे हो? Coronado. नो इंजन अप्रोच हो रही है भाई की The 182 Coronado? No, the biplane. मैं हवा में इसको लटकाएगा Oh. और मैं घटिया Yes, stall that one. कराएगा इसे Grant, are you in the goose? फिर मैं उसके जितना स्लो हो जाएगा और फिर मैं नीचे जाएगा एकदम Oh damn it! I wish I knew that. I would have switched. I would have flown the goose with you. Just in case he touches the water by accident. I'm gonna freeze it. I did catch your eyes up at 200 miles an hour, though. I'm going to be in the rear, very back of this flight because this plane is not fast. Correction. I'm gonna be in the very back. I can't keep up. देख डेव्स अब देख Really? easy stall Yeah, but you guys was already, I don't know, a couple miles out before I launched. Oh, well, we're going to do a full stop here, so you should be able to catch us up now. Y'all got time to get a burger and a drink? Awesome. Wait on me. We're not going to hang around that long. It's going to be a turnaround and देख get ले ready to मैंने go. प्लेन स्टॉल कर लिया सब कर लिया ये अभी भी अप्रोच पे ही है There is a 747 out और मैं here. भी Nice. इससे तेज जाके लैंड कर सकता हूँ It's $100 burger right here. What is that? Yeah. I'd gladly pay you Tuesday for a burger today. Yo, radar. What plane are you in? You guys got a 11 knot tailwind when you're landing? Yeah. मेरा तो Hammer प्लेन down. गिर ही जाएगा भाई अगर मैंने Ah, that may be why I'm behind. I am on live time right now. And I may be getting a headwind. My engine turned off. Yeah, if you, they need fuel. डेव्स भैया छोड़ दे यहाँ पे महंगी बातें होती हैं वीआर हेडसेटों की बातें हो रही हैं यहाँ पे $1200 की Looks like they fixed the cloud textures. I don't have those broccoli clouds anymore. They look really nice, don't they? Yeah. There was a config edit for that too. Oh, is that the sharpening change? Yeah, the grain, film grain. Oh yeah, I did that. It helped a bunch. Mm-hmm. Okay, taxiing back out to the end of the runway. Same one. ओ भाई अच्छे ये लोग वापस हो ले भाई यहीं से Graphics card, it really heated up with that going on. रुको हम भी With घुमा what लेते thing? हैं The, हेलो फ्रेंड पावर जनरेट कर लो Oh yeah. कर ले साले पावर जनरेट इतनी कि घूम जाए What तू card? Did you just say that? 5600 XT. So I don't even know how to compare that. I only really know the NVIDIA It's number. a 270 Supra. The car? A 270 Super, that's pretty old. Yeah, it was made in '94. You mean the 2070 Super It's analogous with the NVIDIA 270 Supra. You mean 2070? Yeah, he means 2070 Sorry, 2070, sorry. That's why I Also, was I'm assuming joking you about mean it. the Super and not the Supra. Isn't it Supra? I thought it was Supra. No, No, it's Supra is Toyota. a Toyota car. I'm too Supra. निकला जाएगा इस देश से भैया देखो हमारे Sky's को back. तो ऑफर भी आ गया Oh, nice. Look, thanks, guy. हम वेट करेंगे कि वो आ Hold on a जाए। second. We're going to have to reverse that funeral we had for him. Did you guys have a funeral? How does one reverse a funeral? We had a funeral at sea. Yeah, just Oh. We even had a moment of silence, yeah.
We all saluted, moment of silence, and then we flew off without sending out a search party. We flew off the missing man, in fact. Incredible. Also, Grant, I'm in a goose with you. Oh, thanks. Training wheels. I'm surprised it doesn't have the training wheels for the water landings, actually. What, the little आप floater जाओ फिर things? मेरे को ऑफर देना Yeah. He has it. भैया What वही is तो it? बात है ना घर वाले ना मान Look रहे up. ऐसा ही नहीं है इतना हमारे पास जाने Yeah, में you can bring him down the switches that are above you. Oh, no way. Devs यार just to be able to it's cool. afford ना I've 3 seen months, those ठीक है, 3 operating in months real तक life approx water चाहिए, bombs. क्योंकि उतना टाइम तो उसमें रहेगा. You've probably seen Catalina's do What that. is that called? Maybe. P से नाम क्या होता है उसका? अरे यार जो टेस्ट पीरियड होता है. What happened, Sky? Did you lose your टेस्ट computer? पीरियड में तो बस स्टाइपेंड मिलता है ना, which is like very basic. Before we start again, I want to go get that coke that was Probation. Oh. So, I I guess don't know. probation the निकालने next runway I was going to do में touch and go, and then we're going to लगभग cruise वो for long लग legs. So जाएंगे, क्या कहते if हैं? you all want to take 2 or 3 minutes, we'll take off at 21:33 my time, which is about 2.5 minutes. What did Gonna you be refuel? like that, is it? So I run. didn't. So I'm at 41% fuel, and that should be enough. लगभग 3.5 से 4 लग जाएगा डेव 4 महीने रहने के लिए. You guys look Oh, amazing gosh. right now, by the way. Oh, Plus you know. 60 की flight. We've delayed Christmas till September this year, because it's probably when we're going to get to see my parents again. This one was mainly delayed because we had to wait for stuff to get posted from UK to Sweden. Ironically, it turns out the gift arrived back in December. They just assumed it was. तो डेव्स भैया लगभग 4.5 चाहिए टोटल. That sunset's lovely. Clouds are beautiful. तो आपको क्या लगता है नहीं हो पाएगा ना बात खत्म. Yes. Yeah. That's what I'm going to miss about the Caribbean when we're flying in the UK. डेव्स I was flying in the UK early this afternoon. डिग्री Oh, चाहिए jeez, it होती was है grim. वहाँ पे काम करने के लिए. It's going to be sparkly and shiny after the update. Have confidence. It's no good if I can't see it through the अभी तेरी आई cloud. नहीं है मेरी वाली को 1.5 साल लगेगा. Oh yeah, this time of year. और It'll be अगर delightfully ये जो grim. अभी कोरोना की वजह से Mind एग्जाम you, में middle वो of भी February लेंगे can तो 2 clear साल up. You लगेगा. get some clear skies in February. No, that's when the snow comes. So you got to think about Like, that. February is snow time every year, right? Yeah. Do you know why the snow comes in February and not December on the shortest day? No. Because the temperature in the UK is roughly 6 weeks behind the length of the day, and that's because it takes time to cool down the water, and the water mass artificially keeps our island warmer, and also keeps it cooler in the summer. So this is why the longest day of the year is like in end of June, but we don't actually feel the heat until kind of like end of July, early August. July, August. That's भाई right. ठीक है भाई. Same thing 6 with weeks. इनका well, हवा kind रहती of है same thing भाई. with Florida. So ये भाई easy extended वो summers and winters. Right, we are at the time of takeoff, so if everyone can spool up, please. I need to refuel. And what percentage are you at? 17. You can stop at the next one if you want. 5, 4, 3, 2, 1. Go, go, go. It's a little bit closer, skydive man. You're gonna flip over and crash all over the runway. भाई स्काई डाइव ने तो ऐसी प्लेन उठा ओ भाई ये उल्टा It's like चलाएगा that भाई. already. Wheels up. We भाई are उल्टा rotating. चलाएगा भाई. ठीक है भाई. Flaps up, gear up. उल्टा चला रहा है वो. Me not flying at full power because I Hopefully got follow bigger the plane than these guys. My gear's not coming up, Captain. That's it's a technique issue. So in the 172, to get the gear to come up, what you need to do is fly low over a tree, not too low. Easy trip. No, go lower. The Also, I drawback got is you my can't land. floating gear down. No, that's when you have to relower the gear.
So what happens when you hit the tree, it अरे bends भाई the Dave, struts back up into परसों the यहाँ पे plane, फ्लाइट चल and रही you है, have to kind of 3 बंदे manually भाई prise them back कांस्टेंट down. उल्टा उड़ा So you रहे need to take a थे hammer. Yep. और भाई सुबह ना 7 बजे तक And the बैठे थे wrecking फुट bars, और I में think they're बातें कर called. रहे थे ग्रांड यहाँ पे सर्वर में And then engage नाम autopilot, सुनेगा बंदे climb का है, बंदे का outside. नाम है ग्रांड जिलेट, ठीक है, और उसके साथ ना सब लोग ये मजे लेते हैं द बेस्ट मैन कहेंगे भाई he said I'm so tired of this. Yeah, that's the first time I've heard it for sure. Yes. Yeah, yes. But just quickly, if you need fuel at the next runway, I suggest that you go toga on the way there, get down and get your fuel, because we're going to touch and go there. Yeah, oh अच्छा अभी तो ऐसे ट्रोल रोड में Oh, look at this beautiful little harbour here. I'm going to go take a closer look. ठीक है भाई इजी ट्रोल यहाँ पे नीचे जाएगा अब दोबारा रुक जाओ अभी मेरे यार मैं बड़ा प्लेन लेके घूम रहा है ना इतनी स्लो स्पीड पे नहीं चल सकता सही से आ जा भाई फ्लैप्स बाहर आओ शक्ल दिखाओ फ्लैप्स I don't know why, but did the performance change with more players around? Yes. Absolutely. I dropped to about half what I was running earlier when you guys loaded in. Yeah, I have the same problem. So I was just thinking if it was my mods, but if you have the same problem, I think there's no sense in deleting mods and figuring out what it might cost. What I'd recommend is if you run like Ultra, drop it to high end when you're doing a large event, and it'll make a big difference. I mean, the more libraries you have installed, the more different models it's got to load. Yeah. Oh, okay. पता है ये That फुट really का makes पीसी sense, ये yeah. फुट वैसे सबको इतना आइडिया देता रहता है इसका पीसी इतना गंदा हग रहा था ना इसका था 980 SLI with 6700K और 40 GB DDR4 और वो ये चला रहा था 3000 पे तो मैंने ना इसे बोला कि This looks like a land reclamation project. एक मिनट रुक to just and he cannot overclock because as soon as you overclock na on Intel this game crashes. Game be like no respect for Intel as usual. So as soon as you see on Intel this game crashes. This game goes full no respect mode on Intel. तो अरे यार मैं इससे आगे जा रहा हूँ रुको लेट मी किल थ्रॉटल बैक एंड तो भाई ने क्या किया भाई चला रहा है 980 SLI मैंने पहले इसका SLI हटवाया फिर मैंने इसको बोला भाई स्काई डाइव देखो इजी स्काई डाइव पहले तो मैंने इसका SLI हटवाया फिर मैंने इसको बोला डू वन थिंग अपनी रैम भी निकालो एंड नाउ यूज ओनली ये कितनी रैम थी इसके पास क्या कहते हैं यूज ओनली 32 बट 16x2 की स्टिक्स में ये चला रहे थे 16x2 प्लस 4x2 Produce a lot of sea salt for the market from desalination for their civil water. Drinking water, yeah. Johannesburg does too. In fact, I think all of Johannesburg's water is now supplied from desalinated water. Really? That's good because it was only a couple of years ago that that was really made possible. Well, It's it was not only good. They're not up to the capacity they need to be. because a couple of years ago they had a long-running drought and they were worried that they were literally going to run out of fresh water. Yeah, they've run out of fresh water and they're now totally dependent on. That was last year. Oh, it's nice to be in Canada. Yeah. We got lots. Pretty wet last time I was there. We got lots of water. Fresh water. London didn't have any fucking water when I went there. Where?
London. Went there expecting it to be rainy and dark. It was freaking hotter there than it was in Florida. I was not happy with the country. It's always hot in London. Yeah, but It's the hottest part of the country. because Gulf there's weather. Stream. there's like the assumption of, oh hey, Florida will be hotter than London. But I mean, it he wasn't lived there. long ago we were sitting at 15, 16 degrees in London, and it was -10 and massive snowfall in Madrid. So Again, I'm going to point out, I live in Florida. well, yeah, Madrid's as far south as Florida, isn't it? No, Florida is like Morocco. Same thing. It's very London, close to the equator. So London's its latitude is like the equivalent of Calgary. Yeah, it's not a good heat in London, though, is it? No, But I I'm- understand it's by ocean, and that would I'm, cool it down. It was just weird. I'm north of Calgary. It's Well, starting then- to warm up a little bit today, but the last few days it's been -30, -35 with the wind. Nice. Nice. That's freezing. Are you talking Celsius or like Fahrenheit? Celsius. Which Alright. -40 they line up again. I mean, I guess now I'm thinking about it, it doesn't really matter when you say minus something. It's cold. It's too cold for myself. I was trucking down in Georgia, my poor Canadian skin, man. I went to the Six Flags water park in Atlanta. I'm just going to point this out. London is 1.5 degrees further north than Calgary. Oh yeah. Close But- enough. But it's got the Gulf Stream, not Arctic air coming down. That's true. Also, Big difference, yeah. North America as a whole is a colder continent than Europe, I believe. Only because it's got Canada. Well, Canada is a hat. It's yeah, you funny, know, it's America like, light. We have one of the biggest countries, but it's not really usable land. I wasn't trying to be political. Oof. I was trying to just make a joke, and holy crap, Defiant Plastic just flew by us. The Is thing this is with- touch and go here, by the way? Touch and go. The thing is with London and a lot of UK, the heat can be very humid. So even though the thermometer isn't very high, it can feel awful, really hot and horrible. Yeah, I can feel that. Florida, it never gets hotter than like 100 degrees Fahrenheit. Like it very rarely is, but we have like 90% humidity. London- Yeah, there's like 2 Insects weeks. the size of my fist. The UK is special. No, that's though. Australia. Like when I was in Vietnam at 45 degrees Celsius with 100% Oh my humidity, God. it didn't feel as bad as London at 35 degrees. Do you Yeah, think, I think- it's because you had like the mindset of, oh hey, I'm in a tropical country? Might be something in that. So, the thing about like being too cold, you can always put on more layers, get gear. You can keep yourself at a nice temperature, but Here, here. you can only get so naked, like with heat. Need fun water. Yeah, but in heat, getting naked is actually the worst thing you can do. Yeah, you got to do the herb thing. Oh yeah, you want to soak in the sweat so you can have it wick off the heat easier. I just And oil then myself up and stand in front of 4 or 5 desk fans. I'm like, yeah, bring it, baby. Okay. Incredible. Unsee. I'm visualizing. Why did you have to Stop paint it. Stop visualizing. Just stop it. You don't want to. Oh, my gear's not down. Oh, that was close. I'm going to get another bottle of wine. That was like 8 inches to the runway, man. I was like, my gear's down. Or up. That was sketchy business. Insurance company would have loved me. Okay, nav altitude 1,000 feet. Vertical speed 500 feet per minute. Rotating. Engaging. 1,000 feet? But do you 1,000 have the goose mod? I do. Throttling back to Oh, 70%. Beautiful. 70% throttle. This runway's closed. Yep.
Yeah, a lot of yellow X's on this runway. It's a touch and go and get out of there. Yeah, Oh, Footy, that's one of the nicer sunsets I've seen so far in this game. Footy rented this one for the day, I guess. Yeah, he nailed the time. You guys doing live weather, right? Or live time? What time do you Plus have? 1 hour. 17:44 it should be. Sorry, UTC is 22:44. Oh yeah. Back again. Nice. Can a 172 go inverted without ripping itself apart? Yes. About. The engine doesn't like it so much. At certain speeds. Yeah, What's target altitude? if it was mine, 1,000. I definitely wouldn't. I'm sorry? 1,000 feet. Okay, yeah. Sure. Sorry? Are we using the AP? Yeah, I'm just watching the sunset at this point. I'm just going to cruise at 1,000 feet at this speed, 70%, and then when the sun is pretty much dipping below the water, I'm going to climb to maybe 3,000 feet. And I'm just going to keep the sunset for the entire flight to the destination, and then we're going to descend into a twilight and touchdown. It's going to be amazing. I'm just going to let everybody form up so we're in a nice tight pack, and then I'll increase the speed a little bit. Okay, autopilot नहीं हुआ. I've got to figure out how I'm going to kill Skydive Man today. Skydive Man is very impressive right now, considering he's been running the entire time upside down. I am genuinely impressed. He does this every time. His Also, Yoda, I'm going to try to form up on you. His second monitor's upside down too, I guess. Didn't I I was kill about you to on say, Thursday, if Skydive Man ever has to like save a crashing plane, he's just gonna have to turn the whole thing upside down and just jostle the participants around. Okay, bye. Didn't I get you killed on Thursday, Skydive? That was the world tour going through the mountains and then landing at the final airport in the middle of a cloud. At night. At night. Oh, okay. Because I know a lot of people died on that one. Man, this looks beautiful. Are you meaning to mass murder? Hey, you didn't get the Kool-Aid at the last stop? I just like flying the I like flying the aircraft beyond the edge of the envelope, outside of safety limits. Yoda, you kind of tailed off from everyone else. Yeah, I'm trying to get the whole People flight. ask like a world tour will overstress the aircraft and then have to start from the beginning. Dope. Each airport I touch down at is a save point, so I'm not doing the world tour hardcore mode. Yeah. Now that we have all the plans, we'll have to race it. Well, we've only got the first 51 plans, haven't we? Because I haven't posted anything beyond that. Oh, that's right. Mm-hmm. Yep. How many plans do you have? Is it going to be total? It's probably going to be close to 100. Ridiculous. Yeah. So And with I another, love it. another 55 to go, roughly. And we're doing 3 a week. That's another 20 weeks. So that is 5 more months of the world tour, I'm afraid. Sweet. Yeah, it'll be the length of lockdown. It'll be like next time we have a pandemic, we can just fly the world tour. Next time. Next time there won't be a next time. It's still going on. There's a mutation. Moderna said they're looking into a booster. I hear that's mutating or stuff like that, right? Lots of different. So first Footy, they what have called you it the UK. They called it the UK variant, but like, I think the UK was the only one looking for a variant. Yeah, I think so. Yeah, it was actually detected in Brazil about a year before. So, lovely. yeah, calling it the UK variant. I mean, sure, give us the credit for finding it. I don't mind that. Maybe the bats are trying to take over.
Monster SD 619, you look great. Is that the goose I'm looking at? Thanks, man. I'm throttling up to 85%. Probably. Hello. Hello. Is that the goose I'm looking at? Which goose? Because there's 2 gooses behind you. There's like 3 gooses, or 3 or 4 total. I think you mean geese. Yeah, I was gonna say gooses. That's brilliant. Pieces. Green cover, mostly analog. So, why isn't a flock of moose meese? I think I'm looking at Grant Gillett. Grant Gillett. Gillette. Gillette. I'm sorry. Did you know that a flock of owls is called a parliament? The I'm looking at your It's called a murder. Perfect. And a gathering of hippos is called a congress. No. I feel like a gathering of hippos should be called a murder because like they're like incredibly dangerous. Oh yeah, That most is true, dangerous that is land animal. That's a crow thing, right? Yeah, but a flock of crows is a murder of crows. A flock of ravens is an inspection. Who thought of these names? If you can tell the difference. Oh, no, Some fun biologists, that's who. I always loved the Latin name for the silverback gorilla because it's gorilla, gorilla, gorilla. That's pretty accurate. Because I feel like that's the only thing you'll be saying when you see a gorilla charging at you. That or what? Just screaming in fear. Oh, just. Do we know if there's like lights in the Gremlin Goose? L, hit it twice. The lights will come on. You are a blessing, thank you. That's you, Yoda. Alright. That's the see cover shot Soul. right there. Alright, Soul, I'm coming up next to you. There's actually a cloud cutting off the bottom of the sun. Look, you can see the sun above and below, and the sun ripples because of the heat haze and whatever. It's so good. Oh yeah. It looks like the intro to Lion King. Yeah. Anyone want to sing the song? No, please, no, stop. Oh no. No, Okay. Footy. my daughter does that to me all the time. Yeah. Nice hit. Get on that squelch, Footy. I don't want to break any speakers. I gotta refrain. Right? There's children sleeping. Oh, and now look, that orange is turning purple. Yeah, that's cool. Swig and Flavor holding up the rear, nice. And now the sun's touching the surface. Not quite on mine. Beautiful Terminator. It's not touching. I mean, it's not touching you. Yeah, maybe I'm a minute ahead or something like Oh, that. dude, But it's, what does all I think the sun is modeled really nice. Yeah. That's really good. Oh, that is autopilot. Need that I ray just tracing. realized. And the crazy thing is, right, They is announced that it. if you climb up, like if you was to like slew up 60,000 feet right now, the sun would not look orange. So the light source of the sun is a specified color, and the way it interacts with the atmosphere at specific angles is what creates the color. So it's like completely realistic as you climb and descend and stuff. I mean, I know the colors might be slightly off, but it's just so cool. Oh shit! Really? That's thank you for the silence lesson. Actually, Do you know why the sky is blue? I used to. So please explain. The color of oxygen. If you look at oxygen in liquid form, it's Nitrogen. perfect. It's sky blue. It's the ox. Interesting. I thought it was to do with the wavelength of blue light bending less, and therefore. Yeah, me too. It's a combination. It's a combination of And all also, these.
Check Yeah, Google. it's how the gases let the light through after the photons interact with them in the atmosphere, but it's mostly nitrogen in the atmosphere, so I It is think it's 74%. namely that. But the nitrogen's clear. If you Google liquid oxygen, it's really cool color blue. The oxygen's not liquid up there, though, is it? No. It is not. It's even. Well, it's not more gaseous, but you know, it's less close to liquid than the oxygen we breathe. I don't know. That's what I heard one time. There's a lot of reasons that play into it, but the red light during sunset, that is just simply because the light's rays have to travel through more atmosphere because the sun is relatively. I mean, it's lower down on the horizon, so the light waves have to travel through more of Earth's atmosphere, and the only ones that get through are the long ones, which are red. Because the blue ones get scattered out before they hit your eye. Hold on a second. Charged particles inside air molecules oscillate up and down as the sunlight passes through the atmosphere. When this happens, the oscillating charges produce electromagnetic radiation at the same frequency as the incoming sunlight, but spread over all different directions. This redirecting of incoming sunlight by air molecules is called scattering. The blue component of the spectrum of visible light has shorter wavelengths and higher frequencies than the red component. Thus, as sunlight of all colors passes through the air, the blue part causes charged particles to oscillate faster than the red part. The faster oscillation, the more scattered light is produced, so the blue is scattered more strongly than the red. For particles such as air molecules that are smaller than the wavelength of visible light, the difference is dramatic. The acceleration of the charged particles is proportional to the square of the frequency and the environment. Science shit. That was all off of the top of your head, right? No, obviously. He just is that good. That was just reading an oxymoron, the Scientific American. Actually, you can nicely. Hey, political. You can actually nicely demonstrate that effect with a white light source that you put behind a box filled with cigarette smoke. You may have noticed that cigarette smoke is bluish in appearance, and basically does the same thing. You know, you go on YouTube and type in how to create an artificial sun. There's a guy who actually did this, and he used like coloring for water, and he put a water tank in front of this artificial sun that he created, and then he had like the natural look of the sun. So just so you all know, I've just started climbing. Where are y'all flying? We're on the last leg of this event, which is flying from Micah Yankee Golf Whiskey to Micah Yankee Bravo Sierra, which is in the Caribbean. Are you actually saying Micah? No, he's saying Mikey. Mikey. He's saying Micah, always. Okay, I knew it was a dialect thing, but I was trying to figure out what my ears were actually hearing. I pronounce it with an A. Okay. Oh, fascinating. Is that a London thing, or...? That's a me thing. Did you know, speaking of accents, did you know after people stay in Antarctica for like a 6-month period, they all start to develop their own accent. It's really fascinating. No. Yeah. Can you repeat that? What? So basically, because when scientists stay in Antarctica and they're all isolated from everyone except for them for like after 6 months, they all start to create their own accent that is separate from the rest of the world. Imagine being there for 2 years, come back, and then no one can understand you because you're speaking a totally different language. Well, it doesn't happen that fast, but it's a great example of how this happens in life as well. So like, my wife sounds more like me and I sound more like her. I used to work a lot with specific work colleagues for extended periods of time, and I would pick up inflections and phrases, and they would pick up stuff with me. So when you spend time with people, you kind of, it blends, you know? Yeah, it's actually fascinating to me. If you watch your kids closely, you might make out these changes within the week they spend with a friend. Yep. Yeah.
There's another really cool phenomenon that humans do. I think it's called code talking or code transitioning. But let's say I house somebody in America and they just came from Ireland. I will start talking with a slight Irish accent, as bad as it would be, in order to make them feel like more comfortable and more at home. And we just kind of pick up accents. Yeah, you're actually taught in a lot of places to have to fight that reaction. Like at a I can't remember what it's called, like a charm school or something. Yeah, sometimes you're actually taught to fight that. You know, like if I were to be visiting foot. Hello. Yeah, well, imagine if I were to go, you know, visit foot or something. And God, भाई तू देख level flight चला रहा है भाई उल्टा. His accent. उल्टा भाई विशाल उल्टा level. It's like, you know, it's kind of off-putting. मैं यहाँ पे सीधा नहीं चला पा रहा. If I was offended, They probably just sound like a douchebag. If I was offended because you were trying to pull off a bad English accent, then I'm the a-hole. Well, don't you think it would be awkward if I just, you know, because I just showed up and Just try to figure it out. you know, What server are you guys on? North Europe. North Europe. North Europe. I mean, thank you. I worked in a lot of call centers over my career, and अंग्रेज है ना सारे we had a अंग्रेज lot हैं. of telephone training, communication training. The first College rule भी हैं, of every अंग्रेज भी हैं, क्या communication हुआ? training was to get on the same language गोरे भी level हैं. like your the one you're calling. बंदूक वाले boys भी हैं. So you have to बताओ क्या हुआ? adapt something from him to be more like him, to get him on the same We also want language Banduk level boys. as you. That makes sense. Yeah, and it's hard to achieve without insulting the person because they might notice. Absolutely, and that was a part of the training to pick one thing, not do it unintentionally, but do it Well, intentionally. Pick just one thing he is doing and adapt that in a good When way. you watch people when they're talking, if they get on really, really well, their mannerisms, the way they're I holding shall themselves, take my sky copy, dive you know, what they're doing with their arms, what they're doing with their hands, and they copy. And that's an important thing that people subconsciously Body pick up on. language, And I yeah. suppose if you're on a telephone call, you need to find something that's equivalent. That's it, yes, and that's part of sales training in every communication training you will get. Cool. Yeah, that totally makes sense. गोरा लोग हैं by I used to sell good night. hi-fi and audio equipment years and years and years ago, before I started my career, and I was terrible at social interaction with people. Like, talking to people was tough, so like doing sales was even tougher. And what I found was somebody would come in and they would lie to me. They would say, I want a system that can do X, Y, and Z. This is the size of my room and everything else, and this is my budget. And that's exactly where they'd lie. Every single time, they would always lie about their budget. And I would be diligent and work to build the perfect system for their budget and be excited about the right system. And they would be like, it sounds really good. And then they'd be like, almost not wanting to offend me because I put in so much effort. They'd be like, are there any other options? Like, can we go a bit better? I'd be like, well, we can, but like that's going to blow the budget. And they'd be like, well, the budget might be a little bit flexible. And then that gives me the leeway to not necessarily just jump them to one level, but I could jump them to 2 levels. That's because And there then have there'd been be- other salesmen who always try and push the budget. Like an HGTV show. That's actually kind of impressive that they would go, the budget's flexible instead of, well, actually this is too much. So that's a good thing that they're like, actually we could. When people see quality, though, they tend to want to give out the bills, you know. Yeah, it's go low, sell higher. That's just another lesson. Tell you a high fidelity system, you're not going to be cheap. Well, the thing What was is, I saying? Go low, sell high. Another important step in sales is to always put something in the sales without telling them, so they come back.
You always factor in something they don't expect. But you will give it to them as well. Hell, I do that. Like Yeah. for free. Pick it. Yeah? That's like Because- marking up the price. Yeah. And making it look like you have a big sale, but that was just the regular price to begin. Hell, I do that for my drawings or like whenever I'm working with a client. I do the exact same thing. I'll say, I do it for timelines where I'll say, "Hey, this will take me a month to do," but in reality, I know for a fact I could have it done in 3 weeks, and they will be super impressed by me, even though I've just I did lie to them, but it also gives me a buffer time, you know? I got a sale once from a guy, right? He walked into the shop, he says, "I want to buy this." He wanted to buy a surround sound speaker system for his surround sound. And I asked him for some details, and he told me what he wanted to experience and watch, and I simply said, "That speaker system will not cut it for you." And he went, "Well, okay, that's my decision. I still want to buy it." I said, "Well, I'm not going to sell it to you because you're going to bring it back next week." And he was shocked. Like, no, he was trying to spend £1,000, which is like $1,500, right? And I was refusing to sell it to him. And he said, "Can I speak to a manager?" And I was like, "Absolutely." And I called the manager out. I didn't say anything. And he said, "This member of staff is refusing to sell me a speaker system." And the boss looked at me and he said, "Someone like you, what's going on?" I said, "Well, this is a gentleman's room. This is the sort of stuff he wants to experience and watch, and he wants to buy this." And he went, "Well, that's not going to work." I said, "I know." And the boss said, "Well, I support my member of staff. Have a nice day, sir." And the guy was like shocked, and he was like, "Well, I'm going to take my business elsewhere then." I'm like, "Okay. Yeah. Have a nice day. If there's anything," I said, "if there's anything I can help you with, in the future, let me know." 2 weeks later, he walks back in. He'd gone to the shop down the road, bought the speaker system, took it home, tried to calibrate it, tried to make it work, ended up taking it back, came back in and said, "Okay, I trust you. What do I need?" And he came back and he brought us loads of business. He told his friends, his family, everybody was coming in. Grant. Someone was calling me. There's no substitute for a good Grant. reputation. Yes, sir. Yeah. You may there may be other gooses out there, but you're the only one that's streaming. So that means the sky on your stream looks so good there right may now. be geese, but you're the only goose. You're the number one streamer here. Can you not get that sky yourself, or? Mine is not nearly as impressive. I don't know if it's a difference in the clouds or just the color. Yeah. I'm only on medium settings, so. It looks great on low settings as well. How much extra GPU power do I have? Let's but, see. Footy, go look at Grant's stream real quick. Oh, my GPU If is you're on maxing autopilot. out. Quality of cause is going to go in 30-40 seconds. Wow. That sky is on fire. It's actually good. This girl. Oh my god, yes, Grant. I'll give you. Yes, I'll give you screenshots when we're done here. That is just silly good looking. I'm just gonna say, that sky is on fire. Oh yeah, that looks great. It just sounded like what are hold we on, climbing to? somebody just lost an engine. I just heard an engine go off. What, fall off? It just stopped, like suddenly. That was my just be. Hit a really big bird. Sun rather than you. Oh, okay. Wait, so is that a goose on Grant's stream? Yes. Oh, that's looking awesome. Grant, your name is Soul, right? Soul Dalton. Soul Dalton. All right, I'm going to try to form up on you. Wow. I mean, even the sky in front of us, it goes
yellow, orange, pink, red, purple, exterminator. It's just awesome. That's great. And it's even cool how the stars will come out in a series of greatest brightness, just like in real life. Yeah. Are the constellations and stuff real? Yep. Yep. No way. That's awesome. I'm not sure if Yeah, they every are. star is real, but there's all the known constellations that you know about, yeah. The major asterisms are all there, yeah. I wonder if you could see the space station moving and stuff like that. That would be doubt cool it. if they put that whizzing over. Have you ever seen the space station in like real life, seeing it fly over? Yes, I have. Yep. Honestly, they Oh, should yeah. also put in X Space's Starlink, so you can just see lines of dots flying across the sky. Yeah. Yeah. Never seen that. Those will be spread out a lot more later, I guess. And the Northern Lights. You know, that's something we take for granted here is the Northern Lights a lot. There's nights you're working outside and people are like, oh, the Northern Lights. You're like, yeah, we got shit to do. Let's go. Yeah, I've never seen the Northern Lights. Oh my god. Yes, you have. Oh wait, no, you're in Florida. I live in Florida. No, I haven't. They actually have extended as far south as Miami before. It just all depends on how big of a burst from the sun's coming in. Yeah, I've never seen it. Also, never seen I it. appreciate I'm 50 years old Grant. and I haven't seen it in San Diego, so no. Grant, I appreciate how confident you were in that I've seen it. Just most people don't know that they've seen it. It's so faint. It's so weird. You've seen pictures of it. I've seen it in New York a few times. I've seen it here in Germany once or twice. Isn't this amazing? We're all cruising at 8,000 feet and we're in super tight formation. We're all in aircraft that are not really supposed to be flying at this time of day. Yes. Why, the 172 is not certified. Are there even panel lights on? Oh, yeah, you got the G1000. You guys look. There is Foot, Steve, and Nico. You guys look amazing because you guys have been in formation perfectly this entire time. It says in the plane, though, it says this airplane is certified for the following flight operations: day, night, VFR, IFR. I'm sure it's able to be, but I mean, you wouldn't choose this as a night plane if you were going to have to fly at night a lot. Which game is this? This is Microsoft Flight Flight why Simulator not? 2020. Always perfectly depends on your IFR budget. capable. I used it in the Cannonball. Yeah, anything with the G1000 Yeah. IFR capable. How did you guys like? I regret missing that cannonball run. Sorry. You first? I knew a guy that had a Piper with the steam gauges, and he did an awful lot of night flying over Germany with it, and it worked just fine. It was a long event. I mean, the actual flight or the actual drive is like current record is What are you exactly 25 doing? hours, We are 40 doing minutes. a map. We are visiting Took all me the 22 islands hours. near the Caribbean. Kate, take your final screenshots. We're descending, and the sun will go. Why, the cannonball? Yes. Yeah. Yeah, I think I was 22 or something like that. Yeah, me too. 22, 30. I was, but I Kill engine. needed 2 days. Planes So were y'all we're in? descending now, down to 1,000 feet. I was in the Cessna 170. Me too. Same. So we're flying with a lot of people. I'm going This maybe. is a I want community to kind of want event. to try that, but in like the pits. And since we are going down, we'll get our That random lights sounds on. unpleasant. What? Doing the cannonball in the pits. Yep. Oh, I thought you was talking about me dropping my gear. What? Why would you drop the gear? Get some dirty surface area to slow down a bit, so I just send. You know, that's a lot smarter than doing a big ass turn. I'm also going to lower my floats. Reduce throttle, pitch for speed. Slammer, yeah. Which runway are we going for?
We will be coming in on to lower this. runway 10, runway 10. There is a No, VOR. that's- Sorry? No, that's not right. 28 There's- should be. Yeah, Yeah, 28 10. because of the wind. Yeah. I don't know why my autopilot gave me the wrong one, but there we go. I was turning left to line us up for 28. You gonna land with the tailwind? We should be landing into the wind, so we should be coming in on runway 28. No, 10. Yes, 10. sir. Hold on. My wind is showing me 190 Okay, degrees they are at still 7 knots. Left of me. Yeah, mine too. I've got it 18 knots at like 310. What is the meters at the airport? Ooh, Ground yeah. NOAA says 216 at 5 knots. Currently, I'm over the runway almost, and I get 60 knots from 127 degrees. That's like mine. 117 at 17. So we should be coming in on runway 10 then. Strange. Yep. That's what I'm doing. Left pattern into 10. Okay, so I'm going to update my heading. Okay. For those who want to use it, there is a VOR at 116.7. I don't have any lights, let alone navigation aids. Can you see your instruments? I'm using a flashlight. Oh no! Nice. I wonder There are why you 2 wouldn't- overhead lights in the What's the 172. runway course? We're coming in on 90, runway 10. 97. Yeah, 10 is at 97 degrees magnetic. It's nice when someone occasionally flies behind me and lights up my panel for me. Incredible. I got you. Can we put a solid strobe instead of a flashing strobe? I don't think so. Wouldn't be very stroby, would it? Rope is. Strobe would be the wrong word then, wouldn't it? You can change it in some planes, can't you? Mm-hmm. Yes. Take your nav lights then. Yeah, they got logo lights, wing lights. So I think the wind is going to change at some point. Yeah, it's already started to change direction. Yeah, I still got 16 knots. Okay, I'm gonna do a circle. Weird. Up to 18 knots from 143, but That it's line slowly looks so turning. good. Okay, I'm gonna merge like this while overspeeding. Descending. 141, 140. We're coming into clouds, aren't we? No, it's perfectly clear. Yeah, same clear. The only clouds are just for things that are designed to make the sky look more pretty. I have different weather than you, I guess. Yeah, I noticed. Yeah, that seems to be happening tonight. I'm seeing illumination off the clouds from my lights. Cool. What altitude are you at? I'm at 3,400. You are quite a bit higher than us. Maybe you picked up a bit of mist. How much distance? The is runway that? has no lights. It's pretty hard to see it. Excellent. Just as we like it. In fact, I can't see anything. Nobody has died yet. The flight is not complete for footy. Didn't someone die? Like, did you guys have a funeral or something? Yeah, oh yeah. Wasn't Turns somebody out the guy is confined- alive. That was a Yeah. false alarm. He got resurrected. False alarm, we thought it was Christmas. Listen, if he You got were- resurrected, he died at one point. Yeah.
But no, I mean, you guys said you didn't want to fly at night because, you know, it's dangerous. So this is why we're landing before it gets too dark to see. I can't see anything. I have probably, no You know, clue open your where eyes. to land. We're probably stretching those rules. I mean, Oh, I sunset in see what it. time zone? And at what altitude? Yeah. But also, like, if it's sunset and you're at 20,000 feet, you still got 30 minutes, right? Well, I'm officially a Baron fan. Kind of its first run today. You are using a mod for it? No, I just kind of got the rest of the pack or whatever. The Premium Deluxe. Yeah, because I use it and I don't like it, and I used to love it in FSX. Oh, I really like it. Like what? I kind of like all of them though. It's got a propeller. I'll fly it. Man, the Yeah, I'm stars kind of the looks same. amazing. All the green and red lights are even funnier to me. The red, white lights, it's like a Christmas tree up in here. I do love seeing everybody's lights at night. Oh, wow. Look at my stream. So pretty. Whoa, what the hell? Are we all going to try and do a simultaneous landing? Is that what we're doing here today? Whoever just touched down, thank you very much for lighting up the runway for me. You're welcome. I'm going to try and make. I'm going to try and make the runway as smooth as possible. I almost nose planted into it, so you know, hey. I had to turn the flashlight off because I can even see the inside of the cockpit with the flashlight or the outside with it off. Looks like a perfect night for a bonfire next to the runway and some rum. With dead aeroplanes all on fire. Just to mention to everybody who's obviously been on this long tour through the Caribbean, next week we will be hitting mainland US. So if you have any substance stored in your aircraft, make sure that you Put it in somebody else's. consume, Yes, use, or Brenda. dispose of before we get into US airspace. Including It's the also baggies. recommended that you bring bear Also living, mace you're, with you. aren't you hitting Miami? So like, you know, Make You're a quick used to run it there. through there. Flew into Boise, Idaho from Canada, and customs came out when we got to Boise. He looked at us, looked at the plane, he said, I trust you. Come on in. amazing. It's probably because you weren't bricking Yeah. it when he looked at you. And then coming back into Canada, they don't even show up for every plane. It's like 1 in 50 or 1 in 100 for general aircraft. I just want to let you guys know that I do have lots of rum in my plane, but I'm also usually the one that ends up on fire as well. Well, I'll drink some of that rum from you. No, you're not. You're too young. You're gonna have to pull me out of the fire. I'm 25. Are you? You sound like you're you were a lot younger. I mean, no offense taken, but like, thanks. I thought you were like 15, 14 from your voice. Thanks, man. Anything? Yeah, where's the runway? Oh, yeah. To the left of the planes landed in the parking. मैंने देख रहा है Everything ये in your- easy everything हो in जाता है box ना to यहाँ your पे left. लौंडे, इसीलिए मैं नहीं होता इसीलिए Yeah, मैं I'm ज़्यादा just बोलता नहीं I'm यहाँ still पे। flying south a little bit before I make my turn onto
I'm trying to. Yoda, I'm trying to follow. are you gonna be 99? Yeah, for those who need it, I'll illuminate the threshold. Much appreciated. Roger that. It's a 46-degree approach. I keep trying to light up skydive, but it's getting really difficult. It's very dark. Can't see him. Oh wow, the sky does look incredible though. भाई Sorry, घना Sky. अंधेर हो रहा है I'm struggling to see 50 most of the time. क्या है भाई रुको जरा देखा जाए बनाया क्या है It's alright, we got you. Stay on my wing and we'll fly in together. Okay, बनाते I ain't gonna let you down, man. Hey, we're lighting up the runway for you. You can be my wingman anytime. No, you can be mine. बिना बताए बुले हो जाते हैं वेंजा यहाँ पे इसीलिए मैं फालतू पकड़ नहीं करता बस जब मेरे को ऐसे पूछता है कुछ तो रिस्पॉन्ड ओके ठीक है Beginning a bit more of a descent. Do we have a altitude of a runway? I'm at 30.18. local is 30.16 8 feet. Yeah. According to my altimeter, it's about 12. Yeah. Set to 30.18 inches. Cool. We have the runway lit up for you, Footy. Roger, Roger. ये देख रहे जिसका Perfect. नाम है ना I can't see shit short either. 9x This is gonna be great. इसने ना अपने सर्वर पे नाम We're all change down कर here with दिया our है। landing lights I pointing crashed your way. 9x. That's really nice. Really nice. That's cool. If you could line Anybody- up along the edge of the runway, we'd know which direction it was as well. Anybody streaming who's still approaching? Yes. Me. Like this, if you miss, we will all see it. अंदर लेकिन वेदर बड़ा ताबड़ हो रखा है देख That's awesome. भाई मैं ज़्यादा नीचे आ गया भाई ये लोग ऊपर हैं Okay. F Dropping flaps. F We could throw a rave, you know? Oh, sugar, have I lined up wrong? I have. Yeah, I'm not following you down there. Be a little Alright. bit. I think I'm on final. I was lined up on the taxiway. If I go any slower, I'm gonna fall out of the sky. I'm trying to stay on Soul's wing. I'm looking at Footy screen, it's just full black. Have a look at mine if you want to see real black. White men black. Be careful. I guess ऊपर I'll लेना see पड़ेगा when you आगे get there. तक कुछ जाएगा नीचे भाई एक साइड पे स्टॉल दूसरी साइड पे है ठीक है भाई Alright, Yeah. I'm buying one Brit Brian. ठीक है चलो अब थोड़ा सा My stream might be interesting because I set the camera down the runway a bit, looking at the threshold, seeing everybody approach. Oh, it looks like I've lost skydive, man. I think I'm with you. Oh, you are. You just gone under my right wing. You were so close. भाई ये बेचारे स्काई डाइव मैन को मारने के लिए लगे रहते हैं पूरा सर्वर भाई पूरा सर्वर Sorry, I'm not lighting them up anymore. I had a break off. Oh, Oh, my God. I see. God, Foreman just Oh no! हेडिंग है 99 That's on the runway somewhat. Footy, you got your death. I've just realised my speed would drop below stall point by a long way. So I'm Toga at the moment. ये क्यों ऊपर वो कर रहे थे पिच Coming off autopilot. हेलो भैया ऊपर पिच करना Alright, I'm coming in at final. I'm squinting real hard. All the windows are closed. I'm flying in on my PFD. Hey, And let's I go. love that. Otherwise. I love the way these guys
lit up the threshold. That's brilliant. Thank you, guys. ठीक है भाई, ये भी उड़ा रहा है भाई, हम भी उड़ाते हैं, आ जाओ। ठीक है, I love the way you guys are lighting up the trees ahead of me. Alignment required है। थोड़ा सा ज़्यादा पिचअप हो गया। Oh, a little too low there, Yoda. Oh. No, Benzu. There he goes. Collision हो गया तो क्या ही होएगा, Benzu? I'm in a goose. Hold it up there for you, footy. ये ज़्यादा नीचे हो गया, ज़्यादा नीचे हो गया, पेड़ वेड़ आ जाएंगे bro। Oh, nicely done. That was really hard on the goose. Oof. Benzo देख रहा है, soft landing करवा दी मैंने। Quite a strong crosswind as well. Appreciate you guys lighting up that threshold. You guys are the real hero here. Can we turn the lights off? Fine by the threshold. Okay, so the parking area is at the start, isn't it? So Yeah, there's fuel there too. nice. वो यहाँ पे अभी एक और लेग बची है क्या? हेलो, वो अभी एक लेग Did everybody get down safely? एक लेग बची है वो बंदा अभी। I'm coming in right now. Oh, we got another one coming in. Who's 38? दिख बढ़िया रहा है, so 38 के 90 होता। From what My GPU is not same fully runway? utilized I don't see him. because I've got Oh, y'all don't see me? 3060 Ti on this thing. You see your lights, I think. It's a 1440p car, 1440p high refresh Should be card flashing a lot of red on and white. This thing. I see Not very high green refresh, from my but, angle. 3060 Ti is meant for You're on around 172. 1440, 120, and I am at 1080 144, and this game is meant to be running around 25 FPS. But I am getting like 50 because I cannot handle lower FPS at all. I have Good a touchdown. condition, medical condition, because of which I cannot handle lower FPS. And we're clear. I didn't see whoever that was. Alright, let's get to parking. यहीं पे खत्म हो रहा है क्या? मेरे को लग रहा है यहीं पे खत्म कर रहा है। I'm gonna stop at the runway end of this patch. लोग घास पर कूद के जा रहे हैं क्या? Easy बदतमीजी। Oh, that was grass. There we go. Right. Everyone wants to pull onto the parking area. I'll get some screenshots done. अदू हम आएगा क्या इसकी फोटो में? यार मैंने पता नहीं ना मीडिया वाले पैनल ऑफ कर दिया यार, गलती से मुझे रियलाइज किया। That was great. Thank you very much, guys. खेलेगा तो PM करना Discord पे। So for See you coming. tomorrow night. Cheers. Good night. I'm glad I hopped on for the last leg. That was pretty nice, wasn't it? Yeah, this was pretty sweet. Loads of fun. Why do I? Cool. So thank you very much for coming, everybody. That is leg 16 of Pilots of the Caribbean. The final leg 17, will be held next Saturday. We're no longer doing the Wednesday events due to negotiations with my wife. So unfortunately, I'm down to 4 events a week, which is going to be 3 world tours and 1 Pilots of the Caribbean, or 1 event flight, which probably after next week will turn into exploring the new content in the UK. I'll give you a guided tour of my home country, or country of countries, I guess. From there on, please, if you get some amazing pictures from tonight, post them on the forums. I do love looking through those.
And I will be in the passenger lounge. I think I'll be in the passenger lounge. Let me just check. Yeah, I'll be in a passenger lounge after I log down this channel to answer any technical questions that I can, or just general chit chat if I can't. So yeah, thanks for coming, everybody, and hope to see you next time. Peace. Thanks. See ya. Thanks, man. As always, thank you. Thank you. Thanks, Footy. Thank you, sir. Take it easy, guys. Yo. अरे यार मेरे को ना अपने इस पे देखना था एक. Right. Hey, where do I put those posts on the forums? So if you just go to the community events one, you'll see there's a post up there for Pirates of the Caribbean, stage 16 or leg 16. It'll be at the top of the forums. Why am I because doing it? It's no I advantage. can see people are already posting replies to it. So can y'all hear me? yeah, I can hear you loud and clear. Yeah, well, we would have flown the entire length of the Caribbean and visited virtually every island. So yeah, that will be the end of the Pirates of the Caribbean. I will continue doing a Saturday event, as I said. So there'll be touring around the UK, looking at the new content, and then I want to also do an event around Madagascar. And I've got some other things I want to try and do as well, but it's going to depend on the time of year, because I view the Saturday event as being a little bit more sort of easy flying and relaxing, rather than the world tour, which is about the challenge. So I'm not going to do like the Baltic Island chain, for instance, in the middle of winter, because that's just asking for trouble. But yeah, there's going to be a Saturday event, which is going to either be part of a chain of events or just be one-offs. Thank you for clearing up the confusion, because I've seen so many Pirates of the Caribbean flights, and I thought y'all were flying the same route over and over again. No, in fact, if I send you to, I've got a forum post which has got every Pirates of the Caribbean leg in there, including a map, so you can see exactly where we went. You must have thought we were really sad for just flying the same route every week. Yeah, that's exactly what I thought happened. I'm going to put this into voice text, so just above this passenger lounge. So there you go. I've just linked it, and you can see the full leg and all the different flight plans. Screenshots go? Thank you. The screenshots will go into part 16, which is, I'm going to link it in there again. No. Where do screenshots go when you take them? Oh, are you using Steam? I was using both. So the Steam ones, if you... I know it's the ones that I was using F12. F12 is the Steam ones. Okay, excuse me. I'm sorry. So under Steam, you click on View, Screenshots, and then you click on Show on Disk. It'll open up a folder, and I just recommend pinning it or bookmarking it. You can just keep going back there whenever you want then. Where do the screenshots go? Sorry? When you use print screen. Yeah, so you click View. Within Steam, you click on View, then you click on Screenshots. And then sometimes you've got to drop down to select the game. And then you click Show on Disk, and then it'll open up a folder with all the screenshots. I mean the other method for using screenshots. I don't know the other method, whatever you're doing. They would go into pictures in Windows. And print screen gives you screenshots, but they save someplace else under Windows standard of screenshots. No, it doesn't save it by default. You need to save it manually. Yeah, it's a and I think overwrites it's like it every time you press the print screen again. It's a capture, yeah. It doesn't save or write to a file. Leave it in the game folder, user data. I've seen it, I just can't remember. Does someone know how to capture a screenshot in VR?
Oof. There's a depending on what VR headset you use, there's a debug tool usually that will show a single eye, and then you can use a tool to be able to capture that, but it's a little bit more involved, let's say. Okay, but there's not like a button to have the full screen screenshot taken while in VR. I guess you could just use F12 if you're in the Steam version, and it will take a picture of both the eyes, but it always looks a bit weird when you do that. The 2-eye screen, but yeah. To think you thought we were flying the same event every week. Oh dear. I guess there are groups out there that do that though, so. Alright. Thanks for coming, Applecade. Appleackle? Okay, not Applecade. Appleackle. Hopefully you enjoyed it. The Pirates of the Caribbean, given it's a weekend event, it's designed to be a little bit more easy to fly. But the World Tour events can get pretty tough. It's unusual for us not to have a fatality. Or two. I think on the last event, I think we lost about 5 or 6 different people in different accidents, and one person died like 3 times. I mean, the last airport was hard. It was. It was really hard. I mean, you could see more than today, but it was just the mood of the scenery. This low-hanging clouds and the dark and red sky. It was, yeah. It felt like we were landing in hell, didn't it? Yeah, definitely. Oh dear. At minus 30 degrees Celsius, it was, yeah. Oh yeah, it was really cold as well, wasn't it? Yeah. I love those flights. When are you guys doing the UK leg? The next Saturday, did you say? No, next Saturday will be the final Pilots of the Caribbean, and then the UK okay. one, assuming the content gets released, will be the following Saturday. Sweet, sounds good. I'll join you for that one because I'm UK based as well, as you can probably tell. Awesome. You can probably correct me when I get stuff wrong then. I don't know about that, mate. No, it's fun. Nice one, dude. Thank you. Well, thanks for coming. Yeah. Has anybody got any technical issues or queries about the game that I might be able to help with, or? I'm good for now. I might pick your brains on some navigation No. stuff on other planes eventually one day, but I'll wait for the UK leg for that. Fair enough. But let's get I have a question. So just want to make sure. So since the latest update, like the performance when it comes to more players changed for everyone, or did I get that right? No. So when you have large groups of people, it always hurts performance. If you're used to getting 30 FPS, I would expect a drop of between 5 to 7 FPS. The thing is, I was used to get like 35 FPS with groups, but now it's like only 30, going down to 26 sometimes. I mean, the size of a group certainly impacts that, but have you checked your drivers are up to date and you haven't changed any other settings in the game, or have you started popping out windows, for instance? Yeah, listening to music, but I don't think that is. No, so you don't pop out game windows like the PFD, MFD, VFR map onto a separate screen. Because that doesn't work with my. I have one screen 16 hertz, 60 hertz, and one screen 144, and then it begins to lag. Gotcha. Yeah, don't
So Do you reboot your computer before every flight? No. Nah, that makes a huge difference for me. Like, huge difference. When I sometimes get issues with the game, I close it and I restart the game, and then it's better. Yeah, I mean, restarting a game can help, but I find just rebooting the computer has a massive difference. It's better for performance, stability, a lot. But somebody before mentioned that disabling the VFR map in the toolbar menu helps, and I tried that, and it seems to work. Interesting. What is that program that you're using? Oh, Space Engine. So that's how the sun looks like without going through the atmosphere. Problem right now because again I'm having this game detect my controller and doing whatever it likes without me actually having assigned any inputs. Did you guys seen that video where a guy really made an artificial sun in his room? It's really interesting. So I'm off for tonight. I wish you a good night. Good See night. you tomorrow. Thanks for coming. See you tomorrow. Bye bye. Bye. Catch you later. बिंदु अगर है तो थोड़ी देर में खेलता है. I wonder if the UK update is going to Manijot, we just include stopped. Ireland. You can rewind. I think We they were said it doing will. Something till like Northern few Ireland or minutes all ago. of Ireland? We were just flying says till like Ireland. few seconds ago. Interesting. Ireland. So I might need to get, you know, the I'm Irish trying to guy. get something to Might need work, to get it's him not in working. to fill us in about some Irish stuff. You mean Shamrock? Yeah, Shamrock 1642, is it? I'm not sure about the Manijot, number. we have been flying for 3 hours. We can take 5-minute rest, right? I'm trying to figure out some settings because it's not changing my camera angle. If you type into search in Discord, you get 3 different shamrocks. Is there a 1642? There is a 3759, a 65 something, and an 6854. Maybe I'm misremembering him. Do you know what his profile pic looks like? I do. He got that skeleton face, and I have him in the flight sim Cannot get that to work. edit. Just give me a second. I think I wrote with him. It's that green one. He's just in Discord. He's Manijot, just if called I'll stop Shamrock, the plane right now, and then he's got a how random long number we've been 654. you'll get to know how long we've been flying once I get the plane to shut down. Or I'll just control you because I want to do. Okay, it's auto resetting. I do not do auto review. She's not staying on.
फिर this is I turned off the avionics. Where was the battery? Lights on. Okay, where's the light now? Electricity now. The battery. Why is my flight not ending now? What did I do? Do you have external power on? You just stand by कब तो ऑफ है क्यों नहीं हो रहा है फिनिश Like over the ocean from Germany to New York. You wouldn't make it. Like sitting there for 5 days. Oh yeah, nice. कहाँ गया भाई हैंग हो गया क्या गेम I mean, you can make it. Just need a long cable and attach it to a 747. Who's talking? Does anyone know something about LA? Because what is that thing down there? There's something written down on the. It's a Christian church. This is a church.
Yeah, look at the writing on the ground on the parking lot. क्या बात चल रही है भाई? The Faith Dome. Green Zone Christian Center, home of Faith Dome. That's interesting. Yeah. भाई I live it's in nice. San Massively Diego. sick from COVID. व्यू बड़ा सही है लेकिन मैं तो ये पता नहीं क्या उड़ा रहा है. देख दिखाता है मैं तेरे को. डिस्प्ले कैप्चर. आंखें जलेंगी थोड़ी सी. वाइट है. Uri? No, those don't look like LA traffic down there though. Bro, मैं we इंस्पेक्ट actually, नहीं कर रहा. yeah, I मेरा have the पता नहीं traffic ट्रिप off, क्यों one नहीं sec. खत्म हो रहा. we actually solved that issue about the stick. मैं वो ट्रिप Oh, का देख fantastic. रहा था कि ट्रिप क्यों नहीं चल हो रहा. Yeah, it was about like Hello, there was is this a Freddy? setting that was like the axis of reference. So once you've moved the, I don't know, for example, the rudder, he has to go to 0 position, and there wasn't the axis of 0 position. So actually, the stick Me trying to doesn't figure know what out to how do. to turn That this was the shit off. problem. Got ya. So, Okay, cool. yeah, cool. So now it's working finally. I think I know the reason why I turned it off. As you can see, the traffic is somehow a little bit blinking. Glitchy and blinking. That's not good. ये क्या था? मैंने क्या ऑन कर दिया? 1 second, let me turn off the traffic again. What is this way? Just reset. Nice भाई, पता नहीं क्या ही चल रहा है. क्यों नहीं हो रहा ये बंद? Probably not good. जैसे काम तैसी. ओह. टनल पावर तो हमने ऑन कर दी है. वो फ्लाइट तो आ गई बेंजा. अच्छा अगर मैंने यहाँ पे बंद करी थी. नहीं सब में बंद हो जाती है रे. बट पता नहीं कुछ रह गया है. ये कुछ प्लेन स्पेसिफिक चीज़ है जो मेरे को आती नहीं है बंद करनी. ये क्या है? इनऑप. क्यों नहीं बंद हो रहा है पनौती प्लेन? मेरे आर्ट ब्लॉक हो जाएंगे भाई. प्लीज हो जा भाई. ओ ये क्यों ऑन है? ये ऑफ कर रहा हूँ. अच्छा वो ऑफ हो ही नहीं सकता आई थिंक. ये एआई कंट्रोल है क्या है ये? रुक जा. इवैल्यूएट करेगा. फ्यूल सिलेक्टर दोनों ऑफ हैं. क्यों नहीं ऑफ हो रहा भाई? ठीक है बंद हो जा बस भाई किसी तरीके से. क्या ही पता नहीं वियर्ड एंगल दिया इसने. रुक. ये तो सिलेक्ट भी नहीं हो रहा. टोटल तो है आइडल स्टेट में. और ये तो जो भी है इमूवेबल है. इन एनिमेट ऑब्जेक्ट. भाई बंद ही नहीं हो रहा है यार बेंजा. लाइक व्हाट टू डू. There's a jet. This is just a wind down channel, really. Yeah, it's a museum, I'm pretty sure. I Did think you see the jet? it's one of the president's jets, yeah. I'm not too sure which president, though. It's one of presidential libraries. Ronald Reagan's is Texas. That's cool. Yeah. I don't know which one this was, I can't remember. Maybe Ford? Could be. What is that saying?
My eyes are too bad. Happy connecting means better call quality Americans news. Advertisement. For Sprint. If this. I wonder if they get paid for that. Who knows? There's another one down there. मैं ढूंढेगा, मैं गूगल करेगा। मैं अपने R लॉक करके जाएगा बेंजा। Turn off MSFS. Cessna, Cessna नहीं ना, Caravan 28. Cessna तो ये लोग चला रहे थे। Turn off नहीं होगा, power off होगा। Cessna 280 कहलाता है क्या? Hello everyone. वीडियो तो नहीं देखी। आजा बिंदा, आ रैली खेलते हैं। मैं देखिएगा how to do it properly real life video. फुल स्टार्ट करा रहा है ना, उल्टा करना है रिक्वेस्ट का। चल भाई लोड हो तू। This is probably their favorite powers, your starter motors, your avionics. So this is going to be the main panel that we are going to be using. Up here, got our lights, strobe, navigation, beacon, cabin, etc, etc. The seatbelt and smoking sign actually work in this plane. It is probably one of the better planes that we actually have. The anti-ice system, if you have your throttle, cabin heats, if you were to use them. Most of the stuff we're going to need here is set, which is this little nozzle. To get this bird in the sky is very simple. We check park and brake. Park and brake is set, which is this little nozzle down here. Park and brake. So, next thing we're going to want to do is we're going to want to flick on both fuel tanks. This is very important. You need both these fuel tanks switched on, otherwise this is not going to turn on. We can see the propeller out the front here. Okay, we're going to go down to our battery pack here, and we want to throw on the batteries. It's good, you can hear it all coming on, lovely. We can turn the alternator master switch on, which is on. We can set fuel to on, so that's going to now boost the fuel. We're going to put avionics 1 on, so avionics 1 should kick in. As you can see, it is now kicking in. We're going to set starter to on and ignition to on, then followed by avionics 2. Now we should start seeing the RPMs start rising. Here we go, this is what we're going to keep an eye on here now. Make sure our oil pressures and stuff stay in the green. मेरा बंद करा दे भाई, मेरे एड्स नहीं लॉग होंगे। लिटरली सब कुछ ऑफ कर दिया मैंने, तब भी नहीं हो रहा भाई। We can now turn the fuel boost off. So everything, the RPM is running nicely, everything seems to be looking nice here, and that is basically it. It is very simple to get this plane going, and of course at this point you would probably want to set all your cabin lights etc on, your beacon light on,
If this बंद कर रहा है मैं रॉकेट लीग खेलेंगे बंदा आ जाओ खाना लेके आया मेरे सर्वर आ जाओ बंदा चल रहा है इस सर्वर में डाल दिया हम तो चैट में नाम लिया क्या यहाँ तो अपना भाई बंद हो जा भाई गेम तेरा हो लिया यो जियास ओ पुश टू टॉक पे यो जीएस इनको कॉल करो क्या मैं
है बिंदा को कॉल। वो बिंदा ने उठा लिया है। वेट मैंने अभी ईयरफोन्स नहीं लगाए थे, मेरे को लगा था तू नहीं उठा रहा है इसलिए यस हो लगाएगा। गया। हाँ मैंने बंद कर दिया गेम, तूने बोला तो। कौन सा गेम बंद किया? फ्लाइट सिम। मैं यहाँ पे रॉकेट लीग खेल रहा था। खतरनाक नूब्स आ रहे हैं भाई, 4-5 गोल मार रहा हूँ मैं। अरे एक क्या? काम करते हैं, यूरोप कर लेते हैं, दोनों खेलते हैं। हाँ आजा। हाँ मैं लॉन्च कर रहा है, 1 सेकंड है। तेरे सर्वर पे बैठना है? बैठ नहीं, तेरे वाले आप तो सो रहे यहीं होंगे बैठना अभी। है, क्या हो गया? हाँ सब सो रहे होंगे, ठीक है छोड़। कोई पीएम करेगा तो देख लेंगे। When you finally reach plat and the cars turn into aeroplanes. Mom pick me up, I'm scared. क्या रॉकेट लीग के मीम्स देख रहे तो? हाँ मैंने तेरे मीम्स के चैनल में डाला। ओके। ये सही बात है। डॉगी प्लैट 2 डिव्स प्लैट 1। क्या बात कर रहा है? सच में? आज का अपडेट दे रहा हूँ मैं तो तुम्हें। रॉकेट लीग में रैंक्स क्या है? रॉकेट लीग रैंक्स। मैं तो खुद शॉक हो गया कि इनको ये कैसे मिल गया। वही तो देखना। अच्छा ये अपने इसकी तरह है, एपेक्स की तरह, प्लैट डायमंड फिर चैंपियन। ठीक है, प्लैट डुएबल है फिर। फिर प्लैट डुएबल है ना। ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि बुरे प्लेयर है ठीक है। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। एक काम कर, तू मेरे को इनवाइट कर। फिर तू अपने रीजन सेट करके छोड़ भी देगा। मिडिल ईस्ट कह रहा हूँ, यूरोप में तो इशू नहीं है ना। कुछ भी मिडिल ईस्ट यूरोप दोनों चलेगा मेरा। तू बता तेरा, मिडिल ईस्ट तेरे को जो ज्यादा हो जाता कंपनी है ना का। तेरे को। नहीं मिडिल ईस्ट का परफेक्ट बैठता है। 200 कुछ आता है ना तेरा। नहीं मिडिल ईस्ट पे तुम लोग को मेरे से बेकार पिंग आता है, इसलिए हम नहीं खेलते मिडिल ईस्ट। नहीं फिर नहीं खेलना मिडिल ईस्ट। मैंने देखो इनवाइट भेजा, देख आया। Mina is having little bit of food. नहीं वो ठीक है, मैं बस वरना I know तेरे को today I ट्रेन। was going to be playing till late. So I got food made for me. क्या बात है, क्या बात। हाँ I planned earlier today. मैं भी तुम लोग के साथ खेलने आने वाला था, बट देखा तभी मैं देखा तो तुम्हारे सर्वर पे कोई नहीं था जब, और फिर मैं फिर जब सब चला जस्ट गया। लीव कराऊंगा, जब तूने मैसेज किया था ना पहला। हाँ मैं देखा। हाँ नसीब, बैड और नसीब। तेरे को पता है मैंने ना वहाँ पे, मैंने 4 बार पूछा किसी की बेंजा से बात हुई और मैं ना बस सो के उठा था। मैं बहुत देव ने मेरे को चिल्ला चिल्ला के बुलाया था, आजा आजा आजा। मैं बोला, वो वीरू भी बैठा था। हाँ और उससे पहले कौन खेल रहा था हमारे साथ? कोई खेल रहा था, कुत्ता खेल रहा था हमारे साथ और कुत्ता भाग गया। तो फिर अनिकेत खेलने लगा, बट फिर वीरू बैठा हुआ, तो मैं बोला वीरू भी बैठा है, देख लो बंदा बंदा आ जाए तो 6 बंदे हो जाएंगे। नहीं तभी मैं शायद से सबवे में था, तो लेट आया मैं। ये क्या है, अपने को 6-0 गेम में डाला है भाई। पिंग देख ले, अगर पिंग सही चल रहा है तो सर्वर होल्ड कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है सर्वर, मेरा पिंग तो ठीक लग रहा है। 200 से कम, ठीक है 200 से कम पिंग ठीक ही है। हाँ और ऐसे भी ना, क्योंकि अभी सारी कंट्रीज में रात हो रही है। इंसा अपने गोल में डाली है तूने। That was my bad. तू क्या कह रहा है कि जब जा ही रहा था कूड़े में तो डाल ही देता हूँ।
अबे 2 एफ के है? बोला तो खाना खा रहा था। अरे तो खा आराम से। मेरा भी बस वार्म अप ही चल रहा है एक प्रकार का। देख रहा हूँ मैं वार्म अप चल रहा है। ये वाला वार्म अप नहीं करना था फ्रेंड। वो आ गया, ये ऑनलाइन आ गया भाई, डेड बॉय आ गया। आजा, हम तो बात ही कर रहे थे कि तू बैठा था। सॉरी भाई, 10 की हो रहा है अभी तक। मैंने तो स्ट्रीम का टाइटल नहीं बदला। चल लॉबी चलते हैं इसके बाद। बट हम यूरोप खेल रहे हैं। नहीं छोड़, अगर बनने मिले दोनों सर्च करते हैं क्योंकि रात को मैंने मिडल ईस्ट भी लगाया था। रात को सर्वर मिलना मुश्किल है। अरे हमें तो लगा था तू सो गया होगा, हम तो बैठे ही नहीं थे। हमने अभी सोचा था कि हम सर्वर जाएं, बट फिर हमने सोचा कोई होगा ही नहीं। चल सर्वर चल। लॉबी चलें? हाँ मैं तो लॉबी आ गया। अच्छा तू अपने सर्वर में तो चल, बंदा आएगा। हाँ आ जाओ वीर भाई। ऑनलाइन तो दिख नहीं रहे हो, साइड देखो। वीर भाई ब्लॉक करने का ऑप्शन आ रहा है, ये सही नहीं रहेगा। आ जाओ आ जाओ। बंदा पता क्या हुआ आज? मेरा ना वो था ना DBMS का एग्जाम। उसने ना 1-2 बड़े सिंपल से क्वेश्चन पूछे हैं। सैटरडे को? हाँ सैटरडे को था, सैटरडे को था। फिर उसके बाद हुआ क्या कि ब्रो तुम्हें पता नहीं हम कश्मीर 2.0 में रह रहे हैं। मैसेज आ गया एक अच्छा सा गवर्नमेंट की तरफ से, और क्या इंटरनेट मैसेज कट आया? गया। घर का इंटरनेट आज तक झटका नहीं लिया था, गवर्नमेंट का मैसेज आया इंटरनेट रुक गया। बताता हूँ तेरे को क्या मैसेज आया था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का मैसेज भेजा था। इनवाइट भेज भेज रहा हूँ रुक जा। गवर्नमेंट का मैसेज तो भेजना था। वही गवर्नमेंट का मैसेज देख रहा हूँ ब्रो मैं। मैंने अपने दोस्त को भी भेजा था। वीरू तो ट्रेनिंग एंटर करियो। सुन रहा है? हाँ कर रहा है। हाँ अबे पार्टी इनवाइट दिया तेरे को देख। अरे तो बंदा मेरी पार्टी में बैठा ही है ना, और ये इसने सर्वर सिलेक्ट कर रखे हैं। तू बस ट्रेनिंग एंटर कर। मैंने नोटिस किया तुम लोग को, मतलब सागर तेरे को यूरोप पे बेटर पिंग आ रहा था मिडिल ईस्ट से। हाँ आई नो, सरप्राइजिंग। बोला तो। अभी तो मैं एपेक्स खेल लेता था तेरे साथ मिडिल ईस्ट पे। अगर जितना मिडिल ईस्ट पे आ रहा होता उसके बाद यूरोप का पिंग ऐड होता तो मैं घंटा नहीं खेलता कभी तेरे साथ मिडिल ईस्ट पे। ओ यूरोप में हाँ मिडिल ईस्ट खेलते नहीं अपेक्स, जर्मनी या हाँ लंदन खेलता। वही कह रहा हूँ मैं। तो मैं खेलता ही नहीं। फिर मैं कह रहा हूँ अगर उस पे अगर राउटिंग डायरेक्ट होती मिडिल ईस्ट से मेरी, फिर तो मैं खेलता ही नहीं ना कभी। True. सुनो, डियर कस्टमर एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स। बंदा सर्च लगा दे। हाँ Dear customer, as per government order, internet services in your area has been blocked till 31st Jan midnight. We sincerely regret for the inconvenience.
कश्मीर 2.0 लेट्स गो। क्यों बट दंगे हो रहे हैं ना ब्रो। भूल इनमें गए क्या? दंगे है ब्रो। क्या विंदा तो कुछ तो इंडिया की न्यूज़ देखा कर, माना तू एनआरए हैकर है। हैकर है साला। ये देख हैकर मेरे को हैकर बुला रहा है। निकल अरे साले। देख मैं तो तेरे को बता रहा देख वीरो, इसका वो शाम को जब मैं पहले स्ट्रीम चालू करी थी तब आया था ना तू, तब तूने रॉकेट लीग के टाइम देखा था गेम? बे मैं खेलता ही होता हूँ यूजुअली इस टाइम पे। अच्छा नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ जब मैं रॉकेट लीग शुरू किया था शाम को स्ट्रीम करना, मतलब रात को 12 बजे हाँ। मेरी शाम, तब तू वो कर रहा था क्या? तब तूने देखा था क्या स्ट्रीम पे? इजी कॉल नो नो, दोबारा आ रही है बॉल। स्ट्रीम देखी थी तूने तब? हाँ था मैं स्ट्रीम पे। तो वो जो वो था ना डॉगी करके, हाँ वो बंदे ने तो लिटरली ये बेंजा का नाम बेंजा थे एनआरए हैकर उसी ने तो रखा है। ऐसे थोड़ी हम बेंजा को एनआरए हैकर बुलाते हैं। लेटेंसी आ गई, नाइस। बेंजा वीरो के पास आया और सागर ने बॉल ब्लॉक किया नहीं अच्छे नहीं से। मैंने नहीं किया, मेरे आगे वाले ने किया। अच्छा मैं मान लेता वैसे मैं ये सारी चीजें करता तो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बोल। ओह नाइस भाई प्लेन उड़ रहे हैं भाई साहब। वही वीरू बर्बाद कर दिया तूने, वीरू शॉट था मेरा। मेरा भी था। वही नहीं रुकी रे। नाइस, इसने भी उछाल दिया। इजी डिफेंस। उसके सर के ऊपर उछाल दी थी मैंने वो। हेलो भाई, इसको क्या हो गया? इसकी तो मम्मी भी नहीं छेड़ी। लॉल भाई ठोक ले बेंजा। Oops. ಇಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ नॉइस नॉइस फिर बाय नॉइस। इसलिए तो बोला सेंटर पे। मैं सेंटर में रेडी था। बंदा भी हटा दिया। जा सागर। जा रहे हैं ब्रो। सागर यू कैन डू इट। आई डिड इट ब्रो। लग नहीं रहा है। और बढ़िया सेव यार। कहाँ फेंक दिया मेरे को हवा में। गोल। नहीं ब्रो, वो उसका दोस्त आ गया था। ओ भाई गोल है उनका। उड़ता है वे। साला हैकर उड़ता है। मेरे पास ना बूस्ट नहीं था, नहीं तो पता है मैं पहले पहुंच जाता। हाइट वैसे भी छोटी बेटर है। वही तो। मार 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 मार। भाई गंदा कर रोक दिया मैंने। गो बिंदा गो 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 गो। मेरा सेंटर क्या है? ये बड़ा अजीब सा सेंटर था, मैं पीछे लू। अच्छा ठीक है। हेलो, मेरे को क्यों मार रहा है? नॉइस नॉइस। भाई ये हवा में बैंक कर रहा है भाई। अबे मेरे को क्यों मारता है हर बार हर माय बार? बैड। हट, बहुत हो गया इस बंदे का। जा 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 बेंजा जा। सेंटर
उड़ता है बे। ओए यार बॉल लैग भाई हुई। सागर why you do that? भाई बॉल लैग हुई थी मेरे लिए बंदा, नहीं तो मैंने थोड़ी करता ये सब। सेट कर दी बंदा ने हवा में उनके लिए, अगर वो हवा में उड़ता है। मैंने अपना अच्छा वीरू भाई ने भी मिस कर दिया। जाओ। बे पता नहीं क्या हो रहा है माउस के साथ आज। What? पीछे नहीं गई, किधर आ गया? जा रहे हो? ए मत मार। गोल है? नहीं है ब्रो। अब है। वो बेचारा बॉल के साथ अंदर चला गया। ठीक है भाई। ये जा वीरू। गोल करा लेंगे अपना एक। ओ भाई साहब रह गया ब्रो। रह गया। मैं तो फुल मूड में था गोल कराने के। नहीं यार। रेडी करो, ठीक ठाक पिंग आ रहा है। वीरू का भी उतना बुरा नहीं आ रहा। रोनाल्डो ऑन गोल नहीं करता है। वीरू मैं तो हुई नहीं रोनाल्डो। मैं अपनी बात कर रहा था बट नेवर माइंड। कभी इसके बाद कभार देखते हैं मिडिल ईस्ट में कितना आता है। खुद को रोनाल्डो बुला के 0 गोल्स। नाइस नाइस, आई किड। देख मैंने उस गोल सेटअप करके दिया था उसका, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके बहन। यूरोप सर्वर है, चलेगा। भैंस क्या पीछे जा रही? भाई रुक दे। ओ भाई। बेंजा क्या किया तूने? नहीं रोक पाया, नहीं रोक पाया, क्या करता मैं उधर। मेरी गलती थी। नहीं नहीं, मैंने बेंजा को आते देखा। वो अच्छा ये किया बेंजा ने। हाँ मेरी गलती थी भाई। टच करता तो बॉल जाता है अंदर गोल में। जा वीरो वापस जा, सेट करके दे रहा हूँ। एक बंदा भी हट का आया था मैंने। हट। ये ले सेटअप है। अबे ठोकता है बे। एक मैंने भी उसके बंदे को ठोका था तो मैं मानता है कि वो ठोक सकता है। एक बंदा और हटा दिया मैंने बॉल से। भाई बॉल नीचे से चली गई, ठीक है। What the fuck? मेरे बंदे को गुस्सा आ गया। आजा। बॉल आ गई है। यस। नाइस नाइस वीरू भाई। यार मैं पीछे से वेंदा तू गलत ही उड़ रहा था। वेंदा तू गलत ही उड़ रहा था, तू नहीं छुपा मैं था। टच कर, मैं बॉल को बाउंस कर लेता नीचे, ऐसा ऐसा था। बॉल नीचे रहने वाली थी, मैं वही बोल रहा हूँ। ओ भाई मैंने गोल पे से हटाई। ठीक है भाई वीरू भाई। नहीं नहीं नहीं, वीरू ने मारा। हाँ वीरू वीरू वीरू। वही मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं क्या बोल रहा है वेंदा। असिस्ट ले ले। मैं सोच रहा हूँ ऑन गोल कैसे बोल रहा हूँ। मैं तो वीरू भाई को मेहनत मेरे को लगा था वो स्टॉर्म पीछे से आकर टच किया था। वीरू भाई वाज लाइक मैंने की है मेहनत। भैंस की आंख भिड़ गई। क्या कर रहा था? नॉइस
मैंने बंदा भी निपटा दिया ब्रो. I caught that guy mid-air. जाओ ले लो तुम लोग आ गए हो. ओ मिस कर गया ब्रो. बट शॉट अच्छा था उसका. हाँ अच्छा तो था. ओह असिस्ट. भाई ये मेरे को बस मारने आया था भाई. भाई क्या हो गया भाई, इसको तो मैंने मारा भी नहीं है. उसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग लिया है तेरे नाम का. अबे हटो ना, खुद चढ़ रहे हो ना मेरे. हेलो वीरो वीरो. वे बेंजा तूने ठोका मेरे को पहले. नहीं तू मेरे को पहले. सागर ने ठोका, तूने मेरे को ठोका. ओ नाइस रे सागर, तुम ही हो. चल साले, मेरे को धक्का देने आएगा ना तू. टॉर्न बोल्टी खत्म कर दूंगा बेटा. भाई इसका दोस्त आ गया. हट. भाई तेरे को मारने आया था, मैं मर गया. नहीं भाई. हेलो, ये क्या हुआ? Is this it? मैं था. Is this it? अच्छा ये सागर था. जा भाई, इनका ना एक एक्टिव गोली है तो ध्यान से खेलना. गोल ओपन बॉयज. बॉल तो आने दो. गोली धरने का. डाल दे. ओ लेट भाई यार मैंने ना, मेरे को लगा था कि बॉल उठेगी. बहुत बढ़िया सेव भाई यार. नॉइस. लो दोबारा जा रही है. ना नहीं, मैं पीछे जा रहा हूँ, पूछ लेना. मैं हूँ. आ गया. बेंजो, you don't seem to be in control of this situation. मार. Is that so? Fuck me. हेलो वीरू. अबे कौन ठोका मेरे को? वीरू कौन ठोका? सागर ही होगा. नहीं, रुक गया, देखते हैं क्या किया है इसने. मैं मार रहा था और सागर आ गया. तूने बॉल पे मारा ब्रो. तूने बॉल पे मारा. तो मेरी डायरेक्शन की वजह से मैंने सीधा मारा, बाकी मैं लेफ्ट जा रहा था. मैंने तेरे को गलत मारते देखा, उसके बाद में आया ब्रो. आज से ये स्कैम कर दो मेरा. जाओ. What the fuck? अलू बॉल उठ किया है. भाई बॉल कहाँ गई? मैं बंदों को हटा रहा हूँ. मैंने बंदा मार दिया, अब बहुत हो गया भाई इनका. हाँ और आओ. What a match. वटा मैच सीधे बंदे निपटाने पे आ गया. अगर एक बार मेरे को गुस्सा भी लगा. और एक टीम है. हाँ भाई आओ तुम निकलो सालो. तुम बहुत बंदे मार रहे हो ना. क्या नाम है इसका? बोल्टी. फट गई बोल्टी की. बोल्ट ढीले हो गए साले के. तीनों ने गेम छोड़ दिया भाई. हमसे मजे लेगा मतलब. नट बोल्ट टेढ़े कर दूंगा, टेढ़े. भाई ये उसके साथ. ओए वीरू पीछे गोल खेल.
AI कुछ भी मारेगा क्योंकि तेरे को भी पता है AI फुल साइडेड हो खेल जाता है। इजी ड्रिबल नॉइस बहनता फ्री फंड का गोल था। दो AI है सामने, क्या है ये बंदे का है? बंदा AI ज्यादा खतरनाक है, बता रहा हूँ तेरे को। Keep that in mind. बंदा गोल नहीं कर पा रहा है, देख रहा हूँ मैं। बॉट ने अपने बंदे ने अपने आप किया भाई, प्रॉक्सी एच ने किया है, बॉट रोक लेता। ये बंदा बेंजा पता नहीं हैकर है। गुस्सा खा गया भाई। बंदा ने दूसरा बंदा कंट्रोल कर लिया। बंदा कंट्रोल द ह्यूमन। आ गया बंदा उसमें। हाउ द एफ डू यू कंट्रोल द ह्यूमन? इसके लिए कौन सी स्क्रिप्ट लिखी भाई? माइंड कंट्रोल है भाई, माइंड कंट्रोल। इसने हट पे भाई सब मिस कर गए। ठीक है भाई, मैं तो क्या ही बोल रहा हूँ, मैं तो क्या ही बोल आ रहा गए हूँ। तीनों टीम। Hello, seems to be noisily playing. वही सोचूं आ क्यों नहीं रहा है बेंजा अभी तक। मैं 2 बार बॉल स्टेबलाइज करी। मार दे। डिस्ट्रक्शन, बंदे ने गेम छोड़ दिया। भाई वो उड़ते हुए बॉल रोकने वाला था, रोक भी लेता पॉसिबली। जा सागर जा। वीरू भाई, ये रोकना वीरू भाई, वीरू भाई। बेंजा ने रोक दिया भाई। अरे मैं था पिंच में उसके। हाँ भरोसा नहीं है वीरों पे यार तेरे को सागर, क्या यार। नहीं मेरे को सब पे भरोसा है, सब पे भरोसा है मेरे को अपने सिवा। और बोलो। थैंक्स फॉर द बूस्ट। देखो बॉल ऊपर से मेरा ऑलरेडी 100 है। भैंस के पकड़ लेता हूँ। ने मेरे को धक्का देने के लिए। ओह नहीं। ये क्या हुआ? मार बेंजा। सागर हटा तो दी मैंने। साले गोल पोस्ट पे था मेरा परफेक्ट शॉट। परफेक्ट स्ट्रेट लाइन कर सकता था। उफ, बोलता ना कि मैं शॉट ले रहा हूँ, फिर जब तूने मेरे को आते देखा। मैं तो बूस्ट नहीं, करते तू तो हुए अचानक से रस्सी एक बार ही बूस्ट करते हुए भी नहीं आया मैं, पहली बार जिंदगी में। मैं बोला ये तो कितना शॉट इजी ले लो। हटाएगा मैं। भाई अगर मैं नीचे नहीं गिरता तो मेरे हाथ में थी बॉल। ठीक है भाई। इट्स एन इजी गोल नहीं। नो भाई, हवा में आया उसको लौंडा। आई भी यार भी... ये भी रोना मेरे सामने आता है भाग भाग के। गोल की तरफ जा रही है बेंजा, रोको। भाई यार निकलो। तेरा गोल है सागर? नहीं है भाई, मैं हवा में पकड़ लिया था, मेरे को तभी पता चल गया था। हट या। नॉइस वीरू, नॉइस। हेलो बेंजा, क्या कर गया तू? जा बेंजा, आगे की तरफ करिए मैंने थोड़ी सी और। यार मैं क्या एरियल मिस कर रहा हूँ बक। आने तूने।
ठीक है वेंदा, ठीक है वेंदा। पीछे गए उसको बॉल। हवा में पकड़ के फैलाए भाई। हटा दी मैंने। बढ़िया। भाई क्या इसके बंदे ने क्या हटाई है बोलो। जाओ। सॉरी बॉल तेरे पे ही आई थी भाई। बेंजा इफ यू क्यों मारा? बेंजा इफ यू वुड हैव गॉन एंड डन इट तेरे पे ही आई थी बॉल। नाइस वीडियो Nice भाई। one. नाइस नाइस गोल। देखो मैं पूरा में अपना कोड है बूस्ट। ये गोल देख रहा है सागर। Oh my god. इजी भाई। Easy long range, easy hacking. मेरे को कैमरा पता था वही कितना बोलो दूर। हैकर है साला। हेलो भाई ठीक है। वो यार बंदे ने रोक लिया उसके। Oof, my car in here. Listen to the songs, boys. 4 goals. Nice. साले गोल कीपिंग कर रहा था मैं। वही ब्रो अच्छा अच्छा गोल कीपिंग कर रहा था। गोल भी नहीं लेने दिया मैंने वीडियो को। पता नहीं तेरे को एक बार का भी। एक सेकंड. एक What is गोल this? दिया वो अलग। क्या मेरे को कह ये रहा है? देखना था क्या मिला है मेरे को. एक सेकंड. ठीक है भाई लीव करके चले जा हम दोनों को जोड़ के क्योंकि तेरे को देखना है तेरे को क्या मिला। मेरे को ब्लूप्रिंट मिला है. मतलब क्या करना है उसके बाद? उसका कुछ नहीं करना पता है तेरे को। अरे वैसे बेंजा तो यूएस में रहता तेरे पास पैसे तो हो गए। सीएसगो की केस ओपनिंग कर ले भाई एक। वही रॉकेट लीग में होता है। भाई ऑफ की स्किन दे दूंगा किसी को भी चाहिए हो मेरी। तुम लोग गेम के अंदर हो क्या? भाई मैं मेरे को जबरदस्ती धर लिया इस गेम ने। क्या? सागर ऑफ की स्किन चाहिए। क्या? मेरी ऑफ की स्किन। कौन सी ऑफ की स्किन है? सीएसगो की। कौन सी है स्किन? जब जा देखने पे निकल आता है मेरे को भी आती है। अरे वर्म गॉड होगा. नहीं तो नॉर्मल है सर सिंपल है बहुत। वाइट कलर की वाइट कलर की। डेजर्ट है शायद। विनर बाय 4 फीट हो गया मेरे को जाने दे भाई। चालू करे बंदा सर्च। यू नो व्हाई यू नॉट सर्चिंग मी? लोग मैं मिडिल ईस्ट लगा रहा हूँ. इसका पिंग ज्यादा आ रहा है ना क्या कहते हैं वीर बाय का। हाँ मिडिल ईस्ट और एशिया ईस्ट लगा रहा हूँ. बट एशिया ईस्ट में क्या है ट्राई हार्ड बहुत है. ये मतलब क्या भाई तू सब छोड़। आज शाम को मतलब जब हम पहले बैठ के खेल रहे थे ना तब तू अनगेत का फ्लेक्स देखता 3 सेकंड में 4 महंगी गाड़ी दिखा गया वो। एंड वी वर लाइक ठीक है भाई। मैं देखो अपोजिट टीम से खेलेगा ऐसा लगेगा उन्हें। मैच मिल गया. कौन सा सवाल है? ओशियन ना. हेलो अगर तू वहां लेके जाता ना मेरे को रोने वाला था मैं इतनी जोर से। मिडिल ईस्ट राइटिंग देखिए ब्रो मेरे तो पिंग बट से आ रहा है। some easy goal. जा सेट है वीरू।
भाई रोक दिया भाई मेरे इन लोगों ने। वो भी रोक। भी मेरे ज्यादा को है किसी ना और ने भाई। धक्का दिया भाई, देख अब की बारी किसी और ने दिया था। मुझे पिंग ज्यादा है, बॉल कहाँ से कहाँ जा रही है मेरे को भी नहीं पता चल रहा। तेरी पिंग और सागर की पिंग इतनी अलग कैसे आ रही है अबे? हर एक नेटवर्क का अलग अलग होता है ना। नहीं यार इतना डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए अबे। अरे इसकी राउटिंग खराब है। साले 45 एमबीपीएस देता है, ठीक है। राउटिंग नाम की चीज होती है, अगर एमबीपीएस से फर्क पड़ रहा होता तो बात ही क्या थी फ्रेंड। वैसे एमबीपीएस का फ्लेक्स करना है तो हमारा 250 देता है। मेरा प्लान पूछ लेना कितने का है, दूसरा वाला प्लान बताऊं? ब्रो मैं तो फ्लेक्स ही नहीं कर रहा ना, बात ये है। दूसरा वाला प्लान कुछ ज्यादा ही हेलो सस्ता। हेलो हेलो हेलो। सबने हक दिया तीनों ने। वो तो अच्छा कि सामने वालों ने भी हक दिया, नहीं तो नहीं अलग मैं ही उनकी बात ही कर रहा हूँ। अच्छा मैंने क्लियर किया था। ओ उड़ता है बे। पीछे डाले वो। उड़ने वाला स्पाइडर है। हेलो प्लीज स्टॉप हिटिंग मी। तू देख मेरे को अभी कितने लोगों ने मारा है, तू देख। एक पहले तू मार के गया, फिर वो बंदा मार रहा है। नहीं मैं खड़ा था, तू मेरे को आके टक्कर दिया, ठीक है। ये ऋषभ चौधरी से एज पूछो, मेरे स्कूल के फ्रेंड का नाम था। क्या अबे कौन था मेरे आगे? उड़ रहा था कौन मस्त था तरीके ब्रो? से। कौन था तेरे आगे, दिखा मेरे को। ब्रो वही लोग थे, मैं तो बाद में आया हूँ। बोलना क्या बोल रहा था, मारने वाली बहस क्या। नहीं बाकी तो गालियां दी थी। भाई बॉल मेरे में कहाँ से कहाँ जा रही है यार। नहीं मिडिल ईस्ट नहीं लगाता, वापस से यूरोप या फिर एशिया लगाता है, मेनलैंड। मार दे वीरू, सामने मार दे। हाँ अलग ठोकता है। अरे भाई 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 भाई, भाई। नीचे से क्या थे? बेंजा तूने क्या किया बॉल को? क्या किया मैंने बॉल को? तूने मेरे घुमा दी बॉल भाई बहुत अजीब तरीके से। हेलो बंदे मेरे को मारना बंद करें प्लीज, थैंक्स बाय। क्या खेल रहा है वो बॉल को छत पे चढ़ा के। बॉल रोकता है ताला। भाई बॉल उठा दी भाई ने। चलो ये नहीं रुकेगी। क्या हो रहा है? पानी क्या हो रहा है? अच्छा seems to be enjoying whatever is going on. Noise. भाई ज्यादा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? भाई गोल हो गया। नहीं भाई मैं क्या कर रहा हूँ? हेलो बेंजा तेरा भी सेम हुआ? हाँ मेरा भी लाइक हो रहा है अभी। ये मिडिल ईस्ट नहीं लगाना बराबर। बेंजा मेरे को तो कुछ कह रहा था।
मेरा छोड़ के दोनों का विंग खराब आ रहा है भाई। मैं तो पहले खराब खेलता है। नहीं भाई क्या किया भाई? वीरू ने मारता है, किसने मारता है? हाँ ये वीरो ने मारा। रुक जा रुक जा रुक जा। तो मैं तो मस्त तरीके से ना फुल स्पीड में आ रहा था, जिसको ठोकूं उसको। बॉल गई क्या वापस? नाइस एलियन सीडर मां के एलियन का ही सीड है ना ब्रो। राम मैंने मैं एशिया रखता हूँ, मिडिल ईस्ट निकालता हूँ, एशिया और यूरोप करता हूँ। एशिया मैच में मैरीटाइम लेने रख, एशिया मैरीटाइम। ठीक है। एशिया मैरीटाइम भाई 3v3 रंबल लगाना है ऑनलाइन एक, उससे मिशन पूरा होएगा। कौन सा? पता नहीं कोई मिशन है। EU सर्वर आ गया। वीरो का पिंग 0 क्यों? 0 पिंग भाई, लेट्स गो ब्रो। वीरो भाई ये चाहिए था, देखा यहाँ पे आपकी राउटिंग ज्यादा बेहतर है। यार यूरोप तो ज्यादा दूर है। लो भाई ये क्या क्या लैंड कराया भाई ने? ये वीरू ने क्या किया मेरे को समझ नहीं आया। कैसे किया? हाउ ही डिड इट? हेलो वीरू भाई। हेलो नो प्लीज। ऊपर गई। भी हक दिया। भूल जा रहे बे। अरे यार भाई महंगी गाड़ी है, देखो वो जीतेगा तो है ही है। महंगी गाड़ी होने से बंदे जीतते हैं, मैंने देखा है। अच्छा तो क्या बोलते हैं उसको? बेंजा मेरे को महंगी गाड़ी गिफ्ट कर, देख फिर मैं भी जीतूंगा। How about no? Nice so. हेलो भाई ओ भाई भाई कैसे चला गया यार? I'm so sad about this one. भाई ये पता ही नहीं चला कि पावर से मारा। अच्छा कितना लंबा बूस्ट करता हुआ है भाई वो। भाई क्या है इसका स्नोमैन मूवमेंट टाइप का जो आ रहा है। MRF टायर का मैस्कॉट है। उड़ाता है। MRF मिशलिन भाई। मैंने बंदे को दीवार में दे दिया, उसने तब भी बॉल मार दिया भाई। क्या धक्का मार रहे हैं अबे? क्यों मारते हैं लोग धक्का? भाई धक्का मार के इतना दूर फेंका जाता है ना, पता नहीं चल रहा है। भूल जा रहा है क्या? वीरू कर दे। लेट्स गो। बेंजा चोरी करने जा रहा था, देखा मैंने। मैं गोल सिक्योर कर रहा था। देख रहा हूँ।
हाँ मेरे बचे में तू था बोलता है ब्रो मैं मैंने चोरी कर रहा ब्लॉक हूँ ठीक किया है तेरे को ठीक है ठीक है ठीक है ब्रो मेरा असिस्ट है उसको तो समझना ब्रो मैंने कितनी मेहनत करी थी पहले भी इस पे नाइस कॉल इजी ब्रो अबे ऑफ की सफारी स्किन है मेरे पास फ्री की अच्छा सफारी वो भी अच्छी है पड़ी रही है अभी भाई ये बंदा वैसे भी खुद ही गोल मार रहा था तो मैंने बोला मैं कंफर्म ही कराता है मेरा नाम तो आने वाला है गो ब्रो मेरे भाई है इसका बॉल बाउंस कर जाती है यार ये ना बहुत गुस्सा दिलाती है क्या कर गया भाई ये बंदा वो बेंसा नॉइस बेंसा को फेंकने का कुछ तो फायदा होगा रोक दो प्लीज थैंक्स नहीं नहीं वीरो वीरो छोड़ देता बॉल को अबे यार यार पता तू अगर ऐसे छोड़ देता ना अगर तू ऐसे उछालने वाला था पर मेरे को ध्यान नहीं था ना पीछे मुझे लगा बेंचर पीछे है माय बैड कोई नहीं दूसरा गोल दिया इस बंदे ने वो तीसरा गोल दिया इस बंदे ने वो सीधी गई बॉल भाई यार रोक लिया उसने भाई मारने आए थे मेरे को बंदे सागर नो सागर मैंने गो हटाया था ब्रो वाई तूने सेटअप करके दिया था वो बंदा अबे कितना आगे फेंकी थी यार अब ऐसे तो पूरे मैप में सेटअप हो जाएगा ठीक है नाइस गो ठीक है बस अपना वीरो ही है वीरो ने क्या उड़ के मारा ब्रो तेरे को देखना चाहिए था अच्छा ठीक है वीरू नहीं था ये भाई वीरू नहीं था सॉरी माय बैड मैंने तो देखा भाई कि वीरू भाई उड़ा था और फिर मैंने देखा बॉल से कूदते वो बंदे ने दो ऑन गोल डाले दो ऑन गोल डाले ट्रक वाला ना हेलो हेलो क्या हो रहा है भाई अबाउट नो ट्रक गाय यार मैंने ट्रक वाला बंदा रोक भी लिया था तू देख भाई पता नहीं चिपकने लगा पता नहीं इधर में चिपका हाँ एक है ना यहाँ पे मेरे इधर में साथ भी हुआ था चिपका भाई देख मैंने वो ट्रक वाला बंदा हटा दिया था वो पहली मेरी तो गोल करने आ रहा था बेचारा यार मैंने क्या बॉल को गोविंद गो अटैक क्या कर रही है तीनों मेरे को क्या पता बिंदा मेरे को क्यों लग रहा है वी आर बीइंग ट्रोल्ड ओवर हियर हम इनके साथ रीमैच करेंगे और ये हमारे को 7-0 करके जाएंगे इजी हेलो पीछे चली गई क्या हाँ भैया क्या साला you shall not pass भाई पता बंदा लैग हो रहा है ना मैं पता पूछ भी नहीं कर रहा कितनी कितनी देर से बंदे तब भी ऐसे मर रहे हैं डाले सकते रहिए भाई उसने वो चुल मचा दी बीच में आके कुत्ता नहीं तो बिंदा को सेंटर बॉल वीरो के लिए है जा बिंदा ओह हेलो
जा वीरो। उड़ा ही दिया माँ की। भाई यार सेंटर हो गए ना। आई एम सैड, आई एम बैड। ठीक है भाई। गो। और नाइस। भाई ये मैकफ्लाई तो खड़ा ही हो गया है। हाउ टू रिपोर्ट हिम फ्रॉम ग्रीफिंग? हाउ अबाउट नो यू नॉट टेकिंग दिस कॉल? सेंटर बॉल है। बहुत ज्यादा स्पीड थी ब्रो, बहुत ज्यादा स्पीड थी। भाई गोल जा रहा है, भाई गोल जा रहा है, भाई गोल जा रहा है। नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा भाई। खराब कर दी उसने, खुद ही खराब कर दी। ठीक है भाई, क्या ही बोलूं भाई बेंजा, खुद ही अपना भला नहीं होते देख सकते ये लोग। भाई एक लेके गया, एक लेके गया। प्लीज नो भाई, हटा दी। लेट्स गो बेंजा। चले उसके टीममेट को मैंने हटाया। हाँ अरे मतलब बॉल रह गई थी भाई। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो बेंजा को बोला नाइस बेंजा, ये बेंजा ने भी हटाया। बेंजा ने तो गोल भी कर दिया। लेट्स गो बेंजा, लेट्स गो बेंजा। तेरे पीछे ट्रक वाला आने वाला था शायद। अच्छा तूने निकाल ही दिया था बॉल। ठीक है। स्कोर्ड बाय एआई। बेंजा तो एआई। हेलो बेंजा एआई। उफ बेंजा, हमें तो पता ही नहीं था कि तुमने ये सब भी शुरू कर दिया। गोलकीपर 2 saves, nice. Let's go. Let's fucking go. ठीक है, ब्लूप्रिंट मिले, कैंडी फ्लॉस ब्लूप्रिंट। नाइस। ये ब्लूप्रिंट के खेल होते क्या है? अरे सीएसगो का केस है बोला तो। सीएसगो का केस है ब्लूप्रिंट। समझा नहीं क्या यार बेंजा, स्मॉल ब्रेन हो गया क्या? क्या हुआ? आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, क्लैन के लौंडे हैं भाई। सागर ब्लूप्रिंट अलग होता है। सही में समझ नहीं नहीं वही है बेंजा। बेंजा मेरे को भी लगा था वो कि जो गोल बॉल होता है वो केस होता है। बेंजा वो केस नहीं होता है, वो केस। सुन मैं समझाता हूँ। वो ड्रॉप होता है। हाँ। अच्छा तो उसको यूज कैसे करूँ मैं? वो मेरे इन्वेंटरी में नहीं दिखा रहा है। वो नीचे ब्लूप्रिंट का है एक और देख ऑप्शन। सागर 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 सागर। ये मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चले मैंने पुश किया था अंदर। ठीक है। नो सागर ने तेरे को पुश किया था। ये चुराने आया था ब्रो, ये चुराने आया था मेरे को। मेरा गोल था, चुराया तूने। ठीक है। मेरा गोल, मेरा गोल, माइन माइन। देखेगा नहीं हो पाया, बस बंदे आ चुके थे। हेलो क्या था? ओ अच्छा ठीक है, सामने ऑरेंज ही था ना। ठीक है ठीक है ठीक है। नाइस हीरो। माइन बेंजा उल्टी साइड क्यों माइन कर रहा है भाई? करना, तूने करना है माइन कर, बट उल्टी साइड मत कर। वो नहीं नहीं वो बेंजा नहीं था वो। अरे बंदा था। मैंने अभी रियलाइज। क्यों कैसे पकड़ के लेके गया वो? नाइस हीरो। अबे मैं ठोकता है बे। डाल दे। बंदा ठोक रहा है तेरे को। और ये लो बॉल पीछे कैसे? क्या हुआ ये? क्या लैग था ये? समझ नहीं आया मेरे को। हाँ होता है। दिमाग घूम गया आपकी बार ये वाले लैग में तो। हेलो
मैंने बॉल ब्लॉक किया. Yes, Benza, very nice blocking. I see. From here remains the reminiscence of Benza. Nice. अबे रह गया फिर. ये भाई ये कर लेते हैं. खुद के गोल में डाल रहा है. नहीं नहीं वो मेरे साथ खेल रहा. बेंजा हट. वो चैलेंज कर रहा है अपन को. खुद के गोल में डाल रहा है. ब्रो अपने दोस्तों में खेल रहा है ब्रो. चैलेंज कर रहा है, समझ एक बात. भाई इतनी तेज है ना उसके बंदे. वो चैलेंज कर रहा है जैसे हम लोग उसके रास्ते से हटे, फिर हम लोग हट जाते हैं. और यार वीरू को बंदा मिलता ना. बैठे वीरू स्लाइड हो गया थोड़ा सा. वीरू धरने वाला था उस लौंडे को. गो. ये यार मेरे को बॉल थोड़ी सी एंगल करके डालनी चाहिए थी. दे बीच में दे. भाई बॉल दीवार छोड़ गई भाई. लगाओ फ्रेंड्स. अच्छा ओ यार सॉरी. मेरे पे गाड़ी बॉल आई गई ऑलमोस्ट से. क्या उठा के फेंका है. वही तो मैं सोच रहा हूँ. नाइस वीरू बाय. हाय वीरू बाय. हेलो भूल गया. नहीं भूल गया रे भाई. हेलो क्या चाह रहे हो बॉय. सागर धक्का मार रहा. अबे क्या कर रहे हैं बेंजा. क्लियर शॉट था. क्या माय बैड मैं देखा नहीं. तो यार कॉल करता यार. ये पता कॉल नहीं करता है. ये बात तो है. ये कॉल आ गया. वो होता है थोड़ा इधर उधर सा. बॉल आ गया. रुको. नाइस शॉट बट गोल. ओ थोड़ा पावर चाहिए था और ज्यादा सीधा गोल था. सीधा मिड एयर गोल हो जाता ना. गो बेंचू. सागर क्या कर रहा है. बंदा हटा तो. जा बेंजा जा. गोल कर. उड़ा दिया भाई. गोला. अरे चेंज जो. ब्रो मैं क्या कितना अच्छा गोल करके आया हूँ. तू ऐसे बोल रहा है. देख तू मार ही नहीं पाया. तेरे तू बॉल ही नहीं टच कर पाया. तू बॉल ही नहीं टच कर पाया. तू बॉल टच कर लेता तो तेरा होता. असिस्ट आता तो तेरा होता. तू बॉल ही नहीं टच कर पाया. तो क्या मिला. लिमिटेड प्लेयर टाइटल वेटरन. रेडी कर रेडी. अपन भी वेटरन है. हेलो वीरू कहाँ गया. हेलो वीरू. हेलो वीरू. बेंजा. हेलो बेंजा. आवाज आ रही है. क्या हुआ. अच्छा वीरू का इंटरनेट गया मेरे को लग रहा है. 45 Mbps भाग गया क्या. वापस से वो रात को बंदे को जगाएगा अपने इंटरनेट प्रोवाइडर को. फिर आया थोड़ी देर में.
क्या करना चाह रहे बंदा? क्या बोलना चाहिए मैंने पूछ मेरे से तो अभी। Nice save. Nice save. Easy save. Go बंदा go. Boost नहीं था यार. बोल. ये वाला नहीं रोक सकता था मैं. मेरे पास भी boost नहीं था यार. मेरे पास बूस्ट ही बूस्ट था क्योंकि मेरे को किसी ने बूस्ट पे फेंका था. बट हाँ ऐसा. मेरे पास एंगल नहीं था. इधर पीछे जा. हेलो भाई ये कुत्ते बंदे ने. लेट्स गो. No fucking way. I did that bro, I did that. भाई ये PS4 वाला ओन गोल क्यों कराने आए हैं? और अब मैं तो बंदे के साथ खेल रहा था. ये देख ला मैं उसका एंटिसिपेट किया, उसका शॉट एंटिसिपेट किया मैं. सही बात है वैसा यार शॉट से तूने एंटिसिपेशन दिखा दी मेरे को. ये जो ये था ना मेक यू IBM ये ना मेरे साथ वो खेल रहा था. क्या कर रहा था पप्पी? हेड ऑन खेल रहे थे हम दोनों बेचारे. और तभी तूने गोल की तरफ ले गया वो. फिर मैं बोला आजा बैठे रहते हैं. सही है. वो बहुत अच्छा है कि ये गलत. ओके. अबाउट नो. क्लियर कर ले. भाई मैंने वही किया. नाइस. उई मैंने बंदे हिला रखे हैं फिर से. लेट्स गो. इसने ऑन गोल मारा है. नहीं इसने मेरे को मारा था और मैंने बॉल मारी. ओ ओके. तो क्या लगता है वीरू भाई के घर वालों ने तार खींच दिया होगा? वीरू भाई देखो अभी तो आप जब हम उस दिन बात कर रहे थे बाइक की तब तो आप कह रहे थे कि वो है क्या कहते हैं अपने पैसों से बाइक ले रहे हो तो ऐसा खौफ क्यों? पता नहीं. आई फील वंस यू स्टार्ट अर्निंग खौफ खत्म हो जाता है. क्या बोलते हैं बंदा? सही में है ना वो एक दो चीज तो खरीदेगा उसके बाद मन नहीं करेगा. नहीं ब्रो शॉट ऑन गोल मिल गया मेरे को. उई बिंदा ये बंदे कैसे रोक रहे हैं? नहीं लौंडा ऐसे डरा हुआ है ना कि बापू उठ गया था. मतलब आई नो यू कैन स्टिल स्टे विद बापू बट ऐसे उठने सोने का डर क्यों? हेलो गोल जा रहे बंदा गोल जा रहे. मैंने मारा बंदा. भाई यहाँ पे ये हुआ है बंदा देख रहा है. बढ़िया शॉट था बड़े. सब ये उल्टे साइड में मारना. कहाँ से मारा तूने? लिटरली मतलब कॉर्नर से. हाँ अरे यार पता क्या था उसका ना पहले वो कौन सा मोमेंटम होता है. भैंस को बंदे ने धक्का दे दिया भाई. ये क्या बदतमीजी थी. माय बूस्ट. सागर. मैंने ब्रेक मार दिया ब्रो क्योंकि मेरे को पता था मैं मिस कर रहा हूँ. ओ आई थॉट इट विल बी बेटर. कुत्ते का अच्छा मेरे पूरे बूस्ट खराब कराया है. दोनों खड़े होके एक दूसरे के मुंह पे बूस्ट मार रहे. नाइस वन. जाएगा क्या बंदा? जाएगा पीछे जा रहा है.
लो कैसे चला गया मुझे लो बंदा पिंग ज्यादा आ रहा है अपना मतलब मेरा तो अरे वो आ रहा है सर्वर का जो वेरिएशन होता है ना छोड़ देता। अरे यार ये डेथ फीदर चूक दिया है भाई ले गया नॉइस रुक दे मैं भी जैसे मान उठाने गया था ये अपना तीसरा बंदा बहुत बेकार है स्ले क्वीन है ना वो स्ले क्वीन है ना ब्रो वो समझ रहे हैं ना बंदा स्ले क्वीन एक बंदा मैंने स्ट्रीम ऑफ करके तेरे को ना पर भाई मैंने गोल रोका है एक और बट हम हार तो रही हैं एक बंदा है ना स्ट्रीम पे म्यूट करता है इसमें ओके उसके आगे तो बोल ठीक है ओके उसके आगे ओके बंदों को व्यू में नहीं था हाँ क्राफ्ट कर हाँ ऐसी बात है कौन ठीक है भाई आज के दिन में जितने अपने यूएस या इंडिया में स्टेट्स नहीं है उतने ज्यादा जेंडर्स है वही तो मैं कह रहा हूँ पेंसा ऐसी बात है ठीक है sounds plausible नहीं बिल्कुल नहीं था ठीक है भाई बिंदा इतना सही क्लियर है
देखा मैं। बॉल ज्यादा तेज थी, नहीं तो मैं ही कर देता खुद ही। कोई नहीं कर रहा है। ये लौंडा अच्छा खेल रहा है, ये जो आया है। Yep, see he attempting to goal as well. उधर बॉल छुड़ा ली उसने उनसे। ओए 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 ओए, नो 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 नो। ठीक है भाई। तेरे को पता है ना, बिना बॉल के उड़ाया बंदा, बस जंप डबल जंप करते करते आया मैं यहाँ तक। कुछ भी था ये, कुछ भी था ये, कुछ भी था। तू देखना, मैंने गोल करने से पहले से हंस रहा हूँ मैं। तू सोच में क्या करने वाला हूँ। थैंक्स। भाई भाई मैंने इससे गोल बचवाया भाई, इसको लिख के कि नहीं आया। मैंने सही नहीं टाइम तूने पर गोल कहाँ बचाया? नहीं मैंने इससे बचवाया, मैं ये कह रहा हूँ। बट लिख के ही नहीं आया, वो आउट ऑफ रेंज होगा। गोल। भाई ठीक है भाई। अरे यार थोड़ा सा और आगे जाके मारना था। छोटे सागर थोड़ी रखी है ब्रो, मार ले तू। पीछे कहाँ लेके जा रहा है? हेलो, ये कौन सी साइड पे लेके जा रहा है तू? जा बिंदा। उसने हवा में चुरा लिया भाई। मैंने दीवार पे चढ़ा दी। एंड आई विल से कि ओ भाई ये भी ले गया दीवार पे। इसने खुद का बॉल लगा दिया। वही देख रहा हूँ। एक्चुअली नाइस शॉट बट इट विल गो द अपोजिट। भाई ये गोल जाएगा। नहीं। नॉइस। बहुत हो गया, ये बॉल इस एरिया में अच्छी नहीं लग रही है मेरे को। या तो बंदे हटेंगे या बॉल। वो तू छोड़ देता, मैं गोल मार देता। मैं नहीं था, वो था वो एवेलिनो यही था। जा बिंदा बिंदा बिंदा, जाओ। ज्यादा तेज हो गए ना। ज्यादा देर हो गया। कोई नहीं, जीता हम तब फिर रहे हैं। इसके साथ पार्टी अप कर लेते हैं, अच्छा खेल तो रहा है ये लौंडा। कैसे करता है? रेडी कर और पार्टी अप दबा। रेडी कर और नीचे देख पार्टी अप का ऑप्शन आ रहा है। यस नो, लेट्स गो। अब खेलेंगे ब्रो हम बैठ के। देख मैं ना लोगों को बताता नहीं है कि ना PS4 में ना ऑप्शन होता है कि यू कैन यूज योर फोन की ऐप टू टाइप गालियाँ। ठीक है, सो ये जो कुत्ता और ये डिप्स करते रहते ना, सोच के उनके पास कीबोर्ड नहीं है। आई वुडंट सजेस्ट दैट। Bro, Irene 1G. I get it why it didn't work out. सामने वाली टीम में Irene 1G था and Irene to work properly and Irene to work properly you need at least 32D. Get it Benza? यार अपना ये बंदा वापस आएगा कि नहीं आज? वीरो बाय। पापू से डर गया है। मेरे तो पापा आते ना, मैं गेम खेल रहा होता बैठ के, मैं तो बोलता हूँ हाँ गेम चल रहा है बोलो। ज़्यादा ये बोलते थे प्लीज चाय पिलाते, मैं बोलता हूँ अच्छा पिलाता है मैं। बहुत बढ़िया।
मेरा फुल टैंक ऑफ बूस्ट काम आया है ब्रो यार अब कुछ था ही नहीं मेरी टंकी में ये रोकने के बाद बेंजा कुत्ते मैंने अभी देखा मेरे को लगा कि ठीक है भाई ऐसे सॉरी बोल रहा होगा then I realized what had just happened ये देखो उड़ा रहा है मार बेंजा एक बार दीवार पे चढ़ जा थोड़ा सा ball what the hell ball he cha dude तेरे हवा में टर्न कैसे करता है वो कर लेते हैं बेंजा कर लेते हैं हेलो ठीक है भाई भाई सेव कर भाई हो गया भाई ठीक है भाई भाई भैंस की आँख बॉल कैसे न टच हुई नॉइस यार बॉल दीवार छोड़ गई तेरे पास बॉल है ओ नॉइस भाई अच्छा खेल रहा है लौंडा नहीं ऑन गोल है अबे अपने लौंडे ने नहीं किया वो ठीक है भाई ठीक है भाई ठीक है भाई सामने वाले एक दूसरे का क्या गाली दे रहे हो फिर साले कुत्ते भाई अपने गोल की तरफ जाती ना मेरे को डर लगता है बट भाई ने जो पिछले राउंड डिफेंड किया था ना वो बहुत अच्छा था इजी गोल सागर इजी भाई उसके ना ड्रीम छीन लिया भाई मैंने उसके मुंह के ऊपर से बॉल लेके गया था मैंने देख ये स्पेसिफिकली जो यार है कोजा वाला लेट्स गो जा बेंजा अटैक द बॉल ये भाई का पिंग अच्छा रहा ना हां चले सारा इसलिए आजा बॉल बेंजा तूने जब गोल चुराया ना तेरी ऐसी काम मैं मतलब अगर ये करना होता ना मैंने बॉल प्रोटेक्ट किया मैंने बॉल शील्ड किया देख चलो आ जाता मैं मानता है ओ ओके हाँ बॉल मारने ही चले मैं हेलो मैंने तेरे को आवाज नहीं आई थी क्या उसने अपने सारे बूस्टर ऑन कर भाई हेलो ठीक है बेंजा कुत्ते सॉरी वो तो वो बंदा था वहां पे कचरा क्लियर करता हूँ रास्ते से Benza didn't expect to do that but did that. गलती से मिस्टेक हो जाती है
ब्रो मैंने तो तेरे को फेंका ब्रो। लेट्स गो। ठीक है भाई। बेंजा वो भी गया नहीं था, उस बंदे ने डाला, पता तेरे को? नहीं जा रहा था, जा ही रहा था, नहीं स्लोली नहीं जा रहा था, नहीं वो जा नहीं रहा जा था, रहा था, नहीं जा रहा था, देख चीटिंग जा रहा था, बता रहा हूँ। तू बॉल के लिए, अपने बॉल के लिए तो जा। चलो बेंजा पीछे रही हो तू। वही बेंजा। रुक जा, मैं तेरा गोल क्लियर करके आया। बेंजा गोल इज क्लियर। वो भी मैंने सेंटर किया था बॉल। भाई हेलो, चलो गोल नहीं जा रहा, वही बड़ी बात है। उसने मिस किया। गो बेंजा गो। वो भैंस क्या, उसने ये गो कर दिया। बेंजा ना ना पूरा नहीं लीड करता है, पूरा गो को लेके जाएगा। ठीक है भाई। पोकेमॉन नहीं चल रहा है। ओ गेट जू। उसको लगा था तू बॉल टच करेगा, बट तूने भी नहीं किया। ठीक है। उई 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 उई। मेरे को बंदे ने उड़ाया था, तूने उड़ाया था क्या? नहीं नहीं नहीं। उई, मैं बॉल को और ऊपर उछालना चाह रहा था, वॉल पे चढ़ाना छोड़ता। वॉल राइड करता है। नाइस बेंजा, कैसे कर लेता है ब्रो? भाई 60 मीटर लंबा गोल मारा मैंने ब्रो। इसी मैच में मारा था क्या? हाँ इसी मैच का मिलता है। नहीं मेरे को तो स्नाइपर और गोलकीपर मिला है। ओन गोल तेरे को मिला साले, मतलब रेडी कर। ओन गोल मेरे को मिला। रेडी करना। कर रहा। क्या टाइम हो गया? 6:30 हो रहा तुम्हारे? 6:33। हाँ 6:30, 6:30। मारते खुला गोला। भाई यार नहीं हुआ, स्कैम हो गया यहाँ पे। अपना गोला। नहीं रोक लिया उसने। अगर हो जाता ना मैं सोच के मर जाता। नो वे नो। अच्छा तुमने मिस कर दिया। नहीं मैंने हटा दिया ब्रो। गोल सेट था, मैंने हटा दिया बेंजा। कैन यू बिलीव दैट? भाई ठीक है भाई। देख बेंजा, तेरे को पता है ये हवा में उड़ा मेरे स्कोप से बाहर है। हाँ मैं तो कुछ बोला नहीं। ब्रो मैंने जैसे उसकी गाड़ी का अंडर साइड ऊपर आते देखा ना, मैंने बोल दिया भाई ये नहीं हो पाएगा मेरे से। बेंजा गेट रेडी। गो बेंजा। नहीं बहुत दूर मारा तूने भाई। वही ज्यादा मोमेंटम हो गया है। आई सी। ले बेंजा। अरे मैं आपकी बार मोदी सरकार बोल के मारने वाला था बॉल को, बट नेवर माइंड। हेलो, नो पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स ऑन माय फुटबॉल गेम। ओके सर। टच कर बॉल को बस। मैंने बंदे ब्लॉक किए हैं। रुक दिया क्या इन लोगों ने? लेट्स गो बेंजा। मेरा बंदे ब्लॉकिंग का आएगा क्या? यार ये बहुत छोटा एंगल दिखाता है, ये ऐसे दिखाना चाहिए जब मैं बंदे ब्लॉक कर रहा हूँ इतनी देर। हाँ वो नहीं करता है वो।
बेंजा गो तो गो क्या भाई टेढ़े शॉट मार रहा है बेंजा यार उसको बंदे का बॉल को लग गया है। ये दोबारा से बेंजा से मैंने जबरदस्ती कुछ काम कराया लेट्स गो तूने देखो गोल कैसे मिला? देख तू अभी अच्छा तूने मुंह के सामने छीना है, ठीक है। मेरे स्क्रीन पे तो मेरे पीछे था। होता है ब्रो होता है पिंग अच्छा नहीं आ रहा होगा although I have the highest ping हाँ टेढ़े शॉट फिर मेरे को बोलता है। भाई ये बंदे ने उन्हें शॉट लगा के दे दिया भाई बिंदा पता है हाउ मच यू हैव टच्ड माइट हैव जस्ट सेव्ड इट हाँ भाई यार कुत्ता भाई how about no you're not gonna get that shot हाँ भाई आने तूने भी चार लोग एक साथ गए। गोविंदा को भाई कितना सारा उड़ के आया बंदा तब भी मिस कर दिया तूने सब मसा सारे मक्खी मच्छर सब आए। गोविंदा भाई कैसे मिस हो गया सेव किया उसने सेव किया। नहीं हाँ फिर उसके बाद भाई गोलू नहीं 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 माने भाई सामने भाई इनके मुंह से पता है छीन के ना बड़ा मजा आता है कुछ भी होता है इतना और फुल बूस्ट मिला फुल बूस्ट। मेरा दोस्त पूछ रहा है when does Rocket League become Aeroplane League? Nice. भाई ये एवेलिनो भाई अच्छा खेलता है भाई बंदा देख रहा हूँ उसके गेम प्ले स्टाइल ना Let's go. तूने रोका था ये नाइस गो 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 गोल ठीक है भाई जा तो रही था ना हार्ड लेफ्ट जा तो भिड़ रही के था जाता भाई, हाँ। उसने तो बूस्ट लगा के पीट दिया। भाई यार दीवार छोड़ जाती ना बॉल बहुत गुस्सा आता है मेरे को नाइस वन। सागर बॉल ने जो बंदे बॉल जो भी मिलता है सागर बीट देता है उसका। ब्रो ये है ना ब्रो करने लेने दो ब्रो को एक कर लेने दो बेचारे को एक और कर लेने तो क्या दिक्कत है। हाँ है ना 3 सेकंड में अच्छा चलो गोल देख रोनाल्डो ने हैट्रिक मार दिया रोनाल्डो खुश है। ये रुकना 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 मैंने यार इसने नहीं छोड़ा यार भाई 10 centered balls Benza 10 centered balls can you get that देख रहा तेरा भाई कितना अच्छा है हाँ हाँ नाइस ओपन गोल एबेलिनो
बेंजा तू ये देख रहा है, खाली एक गोल और एक सेव और पॉइंट देखे एक बारी, पॉइंट देखे एक बारी तू, एक गोल एक सेव में। वही तो देख, मैं जब तू बोला था 10 सेंटर्ड में पॉइंट देख रहा था। कुत्ता नाइस वन। एवलिनो जा नहीं पा रहा था, मैंने जबरदस्ती भेज दिया। भाई गोल जा रहा है। अबाउट नो, बंदे रोक दो, बॉल नहीं तो। भाई लिटरली पता है हम बॉल नहीं छू रहे, हम बंदे बॉल निकालो इधर से। हेलो भाई, बॉल अपना बंदा तू लेके गया क्या पीछे? नहीं। हाँ भाई आने तुमने, मैंने दोबारा से उस बंदे को पकड़ लिया मैं, ठीक है लाइन को ओवर। हेलो गोल जा रहा है, बंदा रोक। बंदा क्या कर रहा? मेरा नाम आएगा पता तेरे को इस पे। तेरा नाम क्यों आएगा? तेरा आएगा। तभी तो मैंने पहले चिल्ला दिया था बंदा रुक, नहीं तो मेरी सिचुएशन अवेयरनेस इतनी अच्छी थोड़ी है। हेलो क्या कर रहा है साहब? हेलो Wrong, that's the wrong direction. क्या बंदा, that's the wrong hole। हेलो That's the wrong direction. तो तेरे को क्या सुनाई दिया? मेरे को लगा wrong exhaust compilation। क्या बंदा यार, you don't get the joke। Nice. क्या बे बुश मारेगा तू? जा बिंदा जा। सेंटर। एक्चुअली मैं गिर गया हूँ trying to catch the ball midair, मैं midair हो लिया हूँ। बॉल छोड़। मैं तो छोड़ ही गया ब्रो। ये करेक्ट टाइम पे आ गया। दोबारा मारी मैंने। भाई मेरे को भी धक्का दे रहा है। अरे उसने गोल चोरी किया मेरा। नहीं उसने गोल नहीं चोरी किया, मैंने देखा है बंदा, उसने गोल नहीं चोरी किया तेरा। You both had equal opportunity, you were too slow। मैंने गेम ही छोड़ दिया सामने वाला ना। यार कि इन सालों का एक गोल कैसे हुआ? मैं तो सोच के आया था 0 गोल पे निकालेंगे ये लोग अपनी जिंदगी। Me had no intentions of doing that। इसको मार देना चाहिए था, क्या बोलता है बंदा, जिसने अभी ब्लॉक किया। यार इतना गोल के बाद अच्छा खेल रहा है। Easy save। डाल दे साबर। ओह बॉय, वापस से सेव किया उसने। मेरे को पहले ही पता था ये वाला तो सेव हो जाएगा। दोनों के बीच में से भाई निकल के मैंने बॉल निकाली भाई। इट वाज कैलकुलेटेड। नहीं धक्का मत मार। बेंजा गोल की तरफ बॉल लगाई मैंने तेरे पे। तू देख। सेव देख। क्या सेव किया उसने? ठीक है भाई। उसने कितने
6 या 5 सेव किया ऑलरेडी अभी तक। 2 सेव लिख के आ रहा है, 6 या 5 सेव करा रहा है उसके नाम पे। मतलब मैं कॉन्टेक्चुअली बोल रहा हूँ, उसको वो पॉइंट एट्रीब्यूट हुआ कि नहीं वो बात अलग है। ये भाई कूजा आने तूने भाई कोसा लेके जा रहा है। नहीं निकाल दिया मैंने लेकिन ऐसा मैंने भी निकाला बट मेरे को सेव नहीं मिला। विंसन व्हाट द फक वाज दैट भाई कौन सी साइड से खेल रहा है भाई बता दे भाई। उधर ब्रेक खींच दिया भाई, मेरे को लगा तेरे से गोल ना होगा मेरे को तो मिलेगा। They don't call you Benza POS ऐसे। सामने वाले भी लाइक ठीक है भाई। भाई इसने फिर रुक गया। गोल है क्या वो? नहीं है ना? अब होएगा अभी। मेरा गोल होएगा क्या? मेरा गोल होएगा क्या? भाई 8 सेंटर्ड बॉल दे इस वाले में भी। देख 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 नीचे देख। आई गॉड सेंटर और ब्रो उठा के सेंटर में रख देता है आजकल में। वो भाई ने खतरनाक खेला बट वो कोजा नु सामने एक्स्ट्रा वाला कोजा। हाँ ब्रो PS4 प्रो है वो। भाग गया ब्रो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके। हंसता फिनाल स्टाइल फिलहाल। चालू हो गया गेम। भाई क्लैन आया क्या? क्लैन आ गया भाई। नहीं तीसरा बंदा उनका नहीं है। तीसरा बंदा उनका नहीं बट उसने गाली रखी हुई है ना। क्लैन का नाम होगा एस वाइब्स। सब मिस कर गए बॉल वही की नहीं पड़ी है। ठीक है भाई जुक ऑफ द ईयर। मैं क्या बॉल ले गया मेरे से वो। बिल्कुल घटिया इमोट लगता है मेरे को। एकदम BM है। देख रहे हो तू क्या स्कैम हुआ है? यार आपने का ओपनिंग गोल चाहिए था। क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? कोई नहीं था। फिर मैं मर गया इससे क्या? भाई गोल गया। वो नहीं गया। गोल गया। यार मैंने सेव किया था। नहीं किया बेंजा तूने। नॉट बाय लॉन्ग शॉट। अच्छा मैंने बंदे को मार दिया। भाई अच्छा खेल रहे हैं बेंजा। इनके साथ नहीं खेल पाएंगे भाई हम। ठीक खेल रहा है। अच्छा खेल रहा है बेंजा। तो एक सेंटर बॉल ले सेंटर्ड। क्या कर लिया तूने? तूने बोला भी नहीं और मैंने बोला ले सेंटर्ड। मैं रेडी नहीं था। पकड़ लिया साले ने हवा में। हवा में पकड़ लिया भाई। About no. ठीक है भाई। बिंदा पूछ लिया ना तूने इतने गलत टाइम पे।
वॉइस चैट कैसा है? इसको गाली सुनाना। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें पहले वॉइस चैट हुआ करता था बट दे रिमूव्ड इट। ओ सॉरी, बूस्ट दे रहा था ब्रो मैं, बूस्ट में लाना मैंने हट सर। रोक दिया ब्रो, डायरेक्ट कोर रोक दिया मैंने ऑन रोका। बोल आने तूने, आने तूने, आने तूने। भाई 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 अब इसको पता चल जाएगा मैं ऐसे फोड़ना चाह रहा था। अच्छा इसको कैमरा नहीं आएगा भाई, इसका कैमरा ही नहीं आएगा। लेट्स गो। ठीक है भाई, कई किनको नहीं पता चला कि उसकी मौत इसके पीछे भाग रही थी। किंग अस्त्रा को पता चल गया ब्रो। शॉट रे भाई वो पकड़ रहा है ना लेकिन ये यार उसने सेव किया। दोबारा। ओ यार पीछे जा रही है भाई। नाइस सेव बाय दिस बॉय। इतना मारते नो बूस्ट। गोल हो रहा है। लेट्स गो वेंसा। फाइनली एक गोल मेरा भाई। देख इसके लिए कितनी मेहनत करी है मैंने। दिख रहा है एग्जिस्टेंस खत्म कर दी मैंने अपनी वेंसा इस गोल के लिए। आना तो भाई कुत्ते का बच्चा ले गया भाई, मुंह के सामने से ले गया। हटा दिया। आई मिस्ड। व्हाट द फक। भाई तू देख उसने क्या पास दिया बंदा, एक बार ही देख। पास दो तो छोड़, फिनिश देख। तूने पहली बार ही देखा क्या? 4 बारी तो यही आया है। नहीं नहीं उसने एंगल से कैसे अंदर लाया। अच्छा मैं तो बोल रहा हूँ वो हाँ वो तो बूस्ट है ब्रो, अंदर प्योर बूस्टिंग। बिंजो जा, बिंजो जा। लेट्स गो, मैंने पूरा किया भाई। सिंगल चोरी। देखना मेरा परफेक्ट एरियल शॉट था। क्या टच किया तूने? टच ही नहीं किया तूने, कुछ नहीं टच किया साले तूने। टच किया होता तो असिस्ट आता। तू आ गया इसलिए मैं छोड़ दिया। बल्ले बल्ले। इसने हवा में लेट्स गो। नो इस भाई, इस बंदे ने चढ़ के मारा है क्या? नहीं नहीं ऑन गोल है। उनको ऊपर चढ़ने की वजह से ना। ज्यादा गिरो बन रहे थे। उन गोली कर डाल। और ओटी के लिए नहीं होएगा, नहीं होएगा, नहीं होएगा, नहीं होएगा।
वो अपने को जो पहला वाला ओपन चांस अगर अपने को मिल जाता ना, कुछ होता अपन मैच जीत जाते हैं। 45 कार्स बम्प्ड। चल लास्ट गेम खेल रहा है मैं ये। हाँ ठीक है। सुबह के 7 बजने वाला हो गए हैं थोड़ी देर में। हाँ मेरे को भी काम ही करना है इसके बाद थोड़ा। यप। Same. इस वाले में आई डिड 4 फर्स्ट टचेस एंड 5 सेंटर्ड बॉल्स। देख रहा है तू? देख रहा है? देख रहा है? मिसो प्रो भाई, ये विस्की को गाली लिखूं क्या? What do you mean? लीव क्यों नहीं कर रहा है? क्या यार कितनी गाली सुनाता है। When the point is it works. ज़्यादा उड़ गए पीछे की तरफ। नाइस कॉल। नहीं हुआ। ये गोल देखना। चोर साला चोर, चोर साला। गोल देखना। तू चोर है बेंजा, तू चोर है। तू देख मैंने कैसे वो किया है। चोर साला सेव किया था। नहीं एल्बर्ट ने कुछ सेव किया था। भाई साइड एल्बर्ट में ने सेव स्लिप किया। होके जा रही थी, स्लिप होके जा रही थी, उससे थोड़ा सा एंगल चेंज होता बट गोल जा रहा था भाई। नहीं नहीं गोल जा ही नहीं रहा था भाई। मेरे ये जो तू ये हंस रहा है ना, जो तू बात करते करते, ये इसीलिए नहीं कंट्रोल हो पा रही है, पता तेरे को? हो जाती है अगर तूने गोल नहीं चुराया। नहीं होती रे, बता रहा हूँ मैं। भरोसा ही नहीं है। ठीक है भाई, नहीं है। चल साले, गोल मारेगा तू? निकलो। वो यार मेरे को पहले बूस्ट करके रखना चाहिए था, मैं ही कर देता कुछ फिर। इंदा को तुमने सेटअप बढ़िया दिया था। चल चल चल। नेवर माइंड। गेम का कलर बदल गया कि मेरा नाइट लाइट चालू हो गया? ये गेम का कलर ऐसा है, ऑरेंज है ज़्यादा। बट आई थिंक इफ यू हैव नाइट लाइट सेटअप विद सनसेट तो वो भी हो गया होगा। हाँ 7 बजे यूजुअली स्टार्ट होता है। ठीक है भाई, चल मिस कर दिया साले ने, हका दिया खुद को। नाइस। वो दो बंदों के बीच में से निकाल के कितना सही लगता है ये। बेचारा भागता हुआ आया एंड आई वेटेड फॉर हिम। तू अच्छा ठीक है, तूने टच किया था मतलब। भाई मैंने मिस कर दिया, मैंने मिस कर दिया, मैंने बहुत गंदा मिस किया एक्चुअली। बता है मेरे ना वो गाड़ी साइड रोल के लाता है ना, वो नहीं हुई। वो तेरे को राइट क्लिक दबा के आई थिंक डी दबाना रहता है सेम टाइम। आई डोंट प्ले ऑन कीबोर्ड। जा रह गया। क्यों छोड़ देता, मैं मार देता। नहीं नहीं वो बंदा आ रहा था पीछे से, नहीं तो मैं थोड़ी करता। बोला व्हाट व्हाट। हाँ हेलो। हाँ मारा होगा ना इसने। वो अच्छा इनके बंदे। ठीक है भाई, मैं फ्री कैंप पे खेलता ना, तो मैं देखा ये बंदा बॉल उसने उस तरफ मार दिया था।
सही जगह गई है वो। बिंदा 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 स्टे रेडी। वो यार ज्यादा डिस्कनेक्ट हो गया वो ऐसा। इसने मेरे को धक तोड़ ही दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था इसका। क्या हुआ भाई? लैग हो रहा है बिंदा, पता नहीं समझा। व्हाट डू यू थिंक? यार मेरे को सेव का पॉइंट। लेट्स गो, लेट्स फकिंग गो। नहीं मिला ना तेरे को सेव का पॉइंट तब भी? नहीं मिला। ये देख साले को गोल देना नहीं है। ये ले मैं देता हूँ। उठा के फेंक दिया मेरे को सीधा। कैसे नहीं जा रहा है? बिंदा कैन यू स्टॉप हिटिंग मी? आई एम योर टीममेट। मैं हूँ ही नहीं उधर। फिर ये मेरे को मार रहे हैं। हाँ भाई, बॉल छुएगा तू। One backwards goal. Let's go. भाई और कुछ नहीं तो backwards goal. भाई पता है क्या होना चाहिए था बिंदा? क्या? कि ना बॉल को ना, ये जब बॉल हवा में उड़ती है ना, तूने ऐसे चील की तरह उड़ना चाहिए था। क्या चील बोलते क्या हैं? होता है अभी? ईगल you know, eagle. Eagle. Okay. Cheer. मैं कह रहा हूँ when ball is like just free, मतलब free gliding ना, once you hit it, it should open its wing and fly further. क्या स्कैम होएगा ना? बंदे दूसरे चैनल पे पोस्ट कर रहे हैं। At what level does Rocket League become flight simulator? ठीक है भाई। किसी ने तो कोई तो क्लिप पोस्ट किया था, मिंत्रा का बंदे नया लोगो ऑलमोस्ट। क्या है? ये क्या डालिए कुत्ते ने 134 पे इमेज? मिंत्रा का लोगो। एक बार जरा मेरे सर्वर के मीम्स देख। ओके। मिंत्रा ने लोगो बदल दिया, बट अरे ऑफेंसिव नहीं क्यों ना, था? नहीं ना, वो ये हग्गू है। कूदना